Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna.
Hare Rama, Rama Rama. Rooftop of one Ultadanga Junction Road, BHAKTIVINODE ASAN. Please come down. We are about to start our program. Your presence will be making things more divine and blissful. हम लोग अनुरोध करेंगे हमरा सबसे कि सब लोग नीचे आ जाएं और आसन ग्रहण करें. Hare Krishna. So we are very happy to announce that today His Grace Padmamukha Nimai Prabhu will be helping us to run the whole program. So may I request Padmamukha Nimai Prabhu to please come and start the program. আর আপনাদের সবাইকে জানাই যে সমস্ত ব্রহ্মচারী ভক্তবৃন্দরা আপনারা যারা যারা 3C অ্যালবার্ট রোড, পানিহাটি, গোশালা এবং মতিঝিল থেকে এসেছেন, আপনাদের সেবায় আপনারা রুমের বিল্ডিং এর ভেতরে আপনারা ছাদে অবস্থান করবেন এবং বাকিদের অনুরোধ করব আপনারা সবাই নিচে এসে আসন গ্রহণ করুন. হরে কৃষ্ণা. পদ্মমুখ নিমাই প্রভু, আপনি যেখানেই থাকুন আপনি প্লিজ পোডিয়ামে চলে আসুন. হরে কৃষ্ণা. We will request all the devotees to please come down and we will start our program. It already been started. Please come down. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare,
Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare,
Hare Rama, Hare Rama, Rama Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Krishna, Hare Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare,
Krishna Krishna Hare 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 Rama 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 Hare Hare Krishna Hare Krishna Hare 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 Rama Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare Rama Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare Hare Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna Krishna Hare Hare Ram Ram Hare Hare Krishna Krishna Hare Hare Ram Krishna Hare 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 Krishna Jaya Prabhupada, Prabhupada, Jaya Prabhupada, Jaya Gurudev, Jaya Gurudev, Jaya Gurudev, Gurudev, Jaya Gurudev, Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol.
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Jai Srila Prabhupada ki Jai. Hare Krishna. First of all, we'd like to wish all of you the happy appearance day of His Divine Grace Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur Srila Prabhupada. We are now at this place, very place. Of course, those who are watching us online, they can't see it directly, but we can show you sometimes. Those who are sitting in front of me, just look behind me, behind you and in front of me. It says the birthplace of ISKCON. The signboard says the birthplace of ISKCON. Yes, we are now at the birthplace of ISKCON, the Hare Krishna movement. We are sitting here 21st February 2022. I'd like you to take all of you just 100 years back in the year 1922. A historical meeting took place in this very place between two historical personalities. His Divine Grace Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur Srila Prabhupada and His Divine Grace Srila Abhaycharan Aravinda Bhaktivedanta Swami Prabhupada. These two personalities sat here, made the blueprint to change the history of the world, which was going towards hellish direction. Yes, the young Abhaycharan, they came here to meet with the sadhu. He just offered his prostrated obeisances to him, and before he could stand up and sit down properly, be settled properly, this sadhu looked at him and said, "You are a young man, educated man, why don't you preach in English? The English preaching world, the message of Sri Chaitanya Mahaprabhu." That was the beginning. That was the startup, the place where it all began. And not only this, as we know in the history, His Divine Grace Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur, he sat in Siddhant Mayapur and he did his chanting of 1 billion holy name. And then he came for preaching here and he started his preaching mission from this very place in 1918 in Ultadanga Junction Road. And this place acted as his preaching base till 1930, and then they shifted to Bagh Bazar Gauriya Math, newly constructed temple there. So Srila Prabhupada came here and he met with his spiritual master Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur in 1922, and that was the beginning of Hare Krishna movement, preaching all over the world. And because of that, we all are here. So after that, ISKCON got this place, and after renovation, reconstruction, we are reopening this temple, this place. This is the pilgrimage for all the devotees all over the world. And as you can see, the structure, the design of the house is kept intact. And today is the reopening. We are going to witness this historical event where it all began. So we would like to thank all the assembled devotees, designated guests, all the senior devotees, all the online viewers, all our supporters, and all the devotees worldwide. Today is the historical event, the birthplace of revolution, Ultadanga Junction Road reopening inauguration. So 21st February today we are opening this just after 100 years of that historical and prophetic meeting. So our schedules will be as follows. In the morning we had wonderful the Holy Name Sankirtan, Mangalacharan prayers, and we'll be soon starting glorifications by senior devotees. Then very soon we'll be starting at 10:30 a.m. felicitation of honorable guests and well-wishers. At 11 a.m. we will be starting offerings by sannyasis, Srila Prabhupada disciples, special invitees. Then we will have we are expecting our honorable chief minister to arrive. So we pray that everything goes on nice and we get the presence of honorable chief minister here in this very place today. Then we will have audio visual of Ultadanga project where it will begin. Then at 12:30 p.m. we will be having the gala inauguration ceremony. Then 12:35 we will be having Pushpanjali and Arati.
of His Divine Grace Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur Srila Prabhupada. At 1 o'clock, we will be having lunch prasadam served here. Then we will have cars leaving for temple. Then again, after a short break, we will be starting our afternoon session at 3 o'clock with Holy Name Sankirtan, and then online program will start on Zoom. Offerings by senior devotees and guests, and words from ISKCON's GVCs, sannyasis, and Srila Prabhupada disciples. Then we will also be having online addresses by ISKCON Kolkata GVCs. Dinner prasadam will begin at Ultadanga Junction Road at 7 p.m. So we welcome all of you on behalf of ISKCON Kolkata on this historical event to be part of it. We offer our respectful obeisances to Honorable Chief Minister Srimati Mamata Banerjee, Dr. Shashi Panja, Honorable Minister, Srimati Shreya Pandey, Srimati Shukla Bhor, Shriman Sahadev Saha. We would like to offer our deepest gratitude and humble obeisances for kindly being present here. His Holiness Bhakti Purushottam Swami Maharaj, His Holiness Bhakti Vijay Bhagavad Swami Maharaj, and we have with us His Grace Jananivas Prabhu, His Grace Sankarshan Prabhu. We have His Grace Pancharatna Prabhu, His Grace Hare Grace Atiguna Mataji, His Grace Hari Shauri Prabhu, Hare Grace Guru Sheva Mataji. We also have amongst us His Grace Devaki Nandan Prabhu, His Grace Gauranga Prabhu, His Grace Sankarshan Nitai Prabhu, His Grace Narugopal Prabhu, His Grace Suvekshana Prabhu, His Grace Hriday Chaitanya Prabhu, His Grace Brajavilas Prabhu. We also have His Grace Nam Krishna Prabhu, His Grace Atul Krishna Prabhu, His Grace Krishnananda Prabhu, His Grace Radha Kunja Prabhu, His Grace Shri Ram Kumar Daitapati Prabhu, His Grace Dharmatma Prabhu. We would like to welcome all the devotees here in this historical event. So, we request His Grace Ananga Mohan Prabhu to come near the stage. So, first of all, we would like to humbly request His Holiness Bhakti Purushottam Swami Maharaj to kindly come here and bless us on this auspicious occasion with the glorification of His Divine Grace, Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur Srila Prabhupada. So we will be having now the glorification of Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur by His Holiness Bhakti Purushottam Swami Maharaj. Hari Bol! हरे कृष्णा नमः ओम विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिने नामिने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे नमः ओम विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी नामिने. So today is very special day.
because on this tithi, Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur Prabhupada, he appeared on this earthly planet. He is known as Varaputra, blessed son of Saraswati. So he came with a to create a revolution, and he achieved that revolution through Srila A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. So this day is a special that he appeared on this planet, and this day has become more special because we are inaugurating this place, which is written here as birthplace of ISKCON. I'll tell it is not only birthplace of ISKCON, actually this is the birthplace of preaching activities of whole Gaudiya Sampradaya. Because Bagbazar temple I heard was built after this place. Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Goswami Thakur Prabhupada, he did his Satakoti Nam Jagya in Mayapur to get empowered to preach. But before he completed that, he was so much empowered he could not control. And first he came here, 14 years. He was staying here. And that is the time Srila A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada, our Param Gurudev and founder of International Society for Krishna Consciousness, he met here and he got this instruction. For a long time, this place was out of our hands. And we had a great desire, dream, ISKCON leaders, how to get this place. So I will not speak more because Srila Prabhupada's disciples are present here. Better we listen from them. But I would like to thank His Grace Radharaman Prabhu. He has put really effort into this. Until he is blessed and he is empowered by Prabhupada, by both Prabhupada. A.C. Bhaktivinoda Prabhupada, Srila Bhaktivinoda Prabhupada. So much struggle he has gone through to get this place for ISKCON and to build this place, to renovate this place. I came here 1 or 2 months before. I saw what was the situation that time. And he has made like a Vaikuntha Dham out of that construction site. So thank you all for coming to this most glorious historical event today happening here. So you are all very fortunate also to be here today. Thank you so much for coming today. Hare Krishna, Hare Bol. We are very much grateful to His Holiness Bhakti Purushottam Swami Maharaj for his wonderful glorification of Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur and this very place. And he brought our attention to this fact that this is not only the birthplace of ISKCON, but the birthplace of preaching activities itself. So we are really grateful to Maharaj. Now we would like to request His Holiness Bhakti Vijay Bhagavad Swami Maharaj to kindly come forward and bless us with the glorification of Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur Srila Prabhupada. Hare Krishna. Namong Vishnupadaya Krishna Prasthaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swaminiti Namine Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Sunyavadi Paschat Desatarine Vancha Kalpatarubhyasya Kripa Sindhu Bhayavacha Patitanang Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namo Jaya Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhar Sivasade Sri Gaur Bhaktavinda Hare Krishna 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 Hare Hare
হরে রাম 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 হরে হরে। সে বলো বাংলা হিন্দি? বাংলা মহারাজ বাংলা বলি, বাংলা। তো হরে কৃষ্ণ। তো আমরা এখানে সমবেত হয়েছি, খুবই আনন্দের বিষয়। এখানে মঞ্চে উপবিষ্ট আছেন আমাদের শ্রীশ্রীমৎ ভক্তি পুরুষোত্তম স্বামী মহারাজ এবং অনেক প্রভুপাদ শিষ্যবৃন্দ, সকলকে প্রণাম জানাই এবং সমবেত ভক্তবৃন্দ সকলকে প্রণাম জানাই। আমি পড়ছিলাম শ্রীল ভক্তি সিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুরের জন্ম। অ্যাকচুয়ালি আমরা দেখা যায় ব্যাসদেব যেরকম ভাগবত রচনা করার পরে তিনি আশা করছিলেন এমন একজন সন্তান আমি প্রাপ্ত হব যাকে ভাগবতমের এই প্রতিপাদ্য বিষয়, এই ভাগবতমের মতো মহামূল্য জিনিস তার হাতে আমি তুলে দেব, সেটাকে বহন করে যাবে। ঠিক সেই রকম ভাগবতমের প্রতিপাদ্য বিষয়গুলো সহজ সরল বাংলা ভাষায় কম্পোজ করেছেন গানের আকারে ছিল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর মহারাজ। তিনিও আশা করছিলেন এইরকম একজন সন্তান আমি প্রাপ্ত হতে চাই যে পরবর্তীকালে এই গৌড়ীয় ধারা চৈতন্য মহাপ্রভুর প্রেম ধর্ম ধীরে তিনি বয়ে নিয়ে যাবেন, সারা বিশ্বে প্রচার করবেন। ঠিক ব্যাসদেব যেরকম সন্তান প্রাপ্ত হয়েছিলেন সুখদেব গোস্বামী, ঠিক ভক্তি বিনোদ ঠাকুর মহাশয়ও এই ধরনের একটা সন্তান প্রাপ্ত হয়েছিলেন আজকের তিথিতে, যার ফলে এই গৌড়ীয় ধারা সারা বিশ্বে প্রবাহিত করেছেন। তা আমরা খুবই ভাগ্যবান ভাগ্যবতী যে সেই ধারাতে আমরা যুক্ত হতে পেরেছি এবং শিল প্রভুপাদ এখানে যে আদেশ প্রাপ্ত হয়েছিলেন কৃষ্ণ ভক্তি প্রচার, সেই শিল প্রভুপাদ যেটা এর আগে বক্তা বললেন শ্রীশ্রীমৎ ভক্তি পুরুষোত্তম স্বামী মহারাজ, যে তিনি যে 100 কোটি নাম জপ করেছিলেন, সারা বিশ্বকে নাম জপের প্রভাবে শুদ্ধ হয়েছিলেন। তো সেটাই হচ্ছে আমাদের অনুভবের বিষয়। আমরা এখন যে ভক্ত হচ্ছি বা আমরা প্রচার করছি, সবকিছু ভক্তি সিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর ভক্তি বিনোদ ঠাকুর করে গেছেন। আমাদের এখানে গর্বের কিছু নেই। আমরা তাদের কাছে প্রার্থনা করতে পারি যে ওনারা যে সমস্ত প্রচার করে গেছেন সেই প্রচারের একজন হাতিয়ার হয়ে আমরা আমাদের জীবনটাকে উৎসর্গ করতে পারি। তো সবার কাছে প্রার্থনা জানাই, ছিল ভক্তি সিদ্ধান্ত ঠাকুর কাছে প্রার্থনা জানাই, তাদের যে উদ্দেশ্য, এই গৌড়ীয় সংস্থার উদ্দেশ্য যে সবাই এই মহাপ্রভুর সান্নিধ্যে এসে মহাপ্রভুর প্রেম ধারাতে যুক্ত হয়ে তাদের জীবনকে শুদ্ধ করতে পারে। তো সেটাই আমরা আমাদের জীবনকে শুদ্ধ করতে পারি এবং তাদের প্রচার ধারার একজন ক্ষুদ্র অংশ হিসাবে আমরা এই প্রচার ধারাকে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারি। হরে কৃষ্ণ 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 হরে হরে, হরে রাম 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 হরে কৃষ্ণ। হরে কৃষ্ণ। অত্যন্ত কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি শ্রী শ্রীমৎ ভক্তি বিজয় ভাগবত স্বামী মহারাজের কাছে। তিনি আজকে এই অতি সুন্দর মহতী এই অনুষ্ঠানে, এই স্থানে শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর, শ্রীল ভক্তি সিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর এবং শ্রীল প্রভুপাদের প্রচার ধারা, তাদের প্রচার মনোভাব এবং উদ্দেশ্যকে আমাদের সামনে ব্যক্ত করলেন। তো আজকে আমরা এই স্থানে অবস্থান করছি কৃষ্ণ ভাবনা অমৃত প্রচার আন্দোলনের জন্মস্থান, যে স্থান থেকে শুরু হয়েছিল কৃষ্ণ ভাবনা অমৃত প্রচার আন্দোলন। আজ থেকে 100 বছর পূর্বে শ্রীল ভক্তি সিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর এবং তার অত্যন্ত সুযোগ্য শিষ্য শ্রীল অভয় চরণ অরবিন্দ ভক্তি বেদান্ত স্বামী প্রভুপাদের মধ্যে সেই ঐতিহাসিক সাক্ষাৎ এবং মিলনস্থল হয়েছিল এই স্থানে, যার সাক্ষী আজও দাঁড়িয়ে আছে ভক্তি বিনোদ আসন, এবং এখান থেকে তিনি শুরু করেছিলেন প্রচার আন্দোলন। So I would like to thank His Holiness Bhakti Vijay Bhagwat Swami Maharaj for kindly focusing on the mood and mission of Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur, Srila Bhakti Vinod Thakur and Srila Prabhupada. So now we would like to request His Grace Jananivas Prabhu to kindly bless us with the significance and historical significance and glorification of this very place and Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur, Srila Prabhupada.
Om Vishnu Padaya Krishna Prasthaya Bhutale Smati Bhakti Vedanta Swami Nityanam. Nama Om Vishnu Padaya Krishna Prasthaya Bhutale Smati Bhakti Siddhanta Saraswati Nityanam. Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur. Srila Prabhupada. It's the Vyasa Puja, 100th Vyasa Puja of Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur. So thank you very much for inviting me to speak something about our great grandfather, Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur. As we all know, a famous saying of Srila Prabhupada when he was asked, can you say something about your Guru Maharaj, Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur? He said, what can I say? He is a Vaikuntha man. I cannot say. So, uh, he was a Vaikuntha man and he could give Vaikuntha. When we first moved to Sridham Mayapur, we purchased some land after quite a long search, and there were two Muslim farmers owned the land there. That was Chaku Shekhar and Fakir Malik. It was their land, and they sold it to Prabhupada. And he told us, this Fakir Sheikh, he told us when we were small boys, because they were from the Mayapur village, and they had seen Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur, because that was the same village, and they were small boys. And he told us that we were playing in the village, just little kids, and we were playing, the kids were playing, everyone was doing their duties, the Mataji's were washing their cloth down at the water hole, looking after the goats, and all the humdrum of village life was going on. The whole village was active. And then all of a sudden, he said we became aware, because we were absorbed in playing, but suddenly we became aware of something. And then we looked over to the house where Bhaktisiddhanta was playing. He's just come out and he was standing on the veranda. And just by his being there, his presence became so strong that the whole village stopped. First the elderly people stopped and put their glance on Bhaktisiddhanta. Then little kids, they felt something is happening here. So he said, we stopped our playing and everybody's attention was on Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur. The whole village became absorbed by his presence. So this is the Vaikuntha presence he was putting on. So we're very fortunate that we have a connection with Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur through the parampara, the bona fide process of the parampara is a direct access to Vaikuntha, and Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur, he could give that access, and he is giving that access, through Prabhupada,
but we can take a great advantage of his magnanimity. Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur Prabhupada ki jai. Nitai Gaur Premanandi. Thank you. Hare Krishna. Thank you very much, Prabhuji. We would like to thank His Grace Jananivas Prabhu for wonderfully glorifying Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur and building up the connection with Sri Mayapur Dham and this historical place. तो हम ऐसे स्थान में खड़े हैं अभी जो कृष्ण भवनामृत प्रचार के जन्म स्थान है. हाँ, इसी स्थान में आज से 100 वत्सर पूर्व 1922 में श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर और श्रील अभय चरण अरविंद भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद, ये दो महान व्यक्तित्वों के मुलाकात हुए थे. और पहली मुलाकात में श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर श्रील प्रभुपाद को, भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद को, जो उस समय अभय चरण दे नाम से आए थे, तो उनको ये निर्देश, ये आदेश किए थे कि जाओ प्रचार करो अंग्रेजी भाषा में पूरे विश्व भर. और उसी आदेश के कारण आज हम इसी स्थान में खड़े हैं. अंतरराष्ट्रीय कृष्ण भवनामृत संस्था और कृष्ण भवनामृत प्रचार पूरे विश्व में उसी आदेश के कारण हो रहा है. तो आज ये एक महान उत्सव है, आज ये महान क्षण है जहां ये ऐतिहासिक स्थान का पुनः उद्घाटन हो रहा है कृष्ण भवनामृत प्रचार के लिए. तो हम आप सबको स्वागत करते हैं स्थान में. अब जो जहां से है देख रहे हैं हमें, प्रार्थना कीजिए. ये फेज 1 है, हम जल्दी ही आगे बढ़ेंगे और कृष्ण भवनामृत प्रचार इस स्थान से पूरा विश्व भर और भी फैलाएगा. तो वी आर वेरी मच grateful to His Grace Jananivas Prabhu. Now we would like to request His Grace Pancharatna Prabhu to kindly come forward and bless us with the glories of this wonderful place and His Divine Grace Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur. Hare Krishna. Jai Nama Om Vishnupadaya Krishna Prestaya Bhutale Srimati Bhaktivedanta Swami Iti Namine Namaste Saraswati Devi Gauravani Pracharine Nirvisesha Sunnivari Paschatade Shatarine. Jai Nama Om Vishnupadaya Krishna Prestaya Bhutale Sri Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur Ki Jai. When I was upstairs, seeing the exact spot where Srila Prabhupada came, and I reflected, he was also a young man, just 26 years old. Like many of us who came by his call, Srila Prabhupada's call. And just like we were struck by Srila Prabhupada, our Srila Prabhupada, he was struck. He was injected. He was injected with the mission of Chaitanya Mahaprabhu. Today, we can reflect on how seriously he took that mission. He commented once, Srila Prabhupada commented how in reading Srila Vishwanath Chakravarti Thakur's commentary on Bhagavad Gita, Ekeha Kuru Nandana, how he explained that this one-pointed determination means to accept the order of your spiritual master as your life and soul. And this is exactly
the life of Srila A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. He took the order of Srila Bhakti Siddhanta, that one order, that single order that he received on the very first meeting, that became his entire life. That became his entire life. And it is by that determination. I am now in this year, or past year, I have turned the age that Srila Prabhupada was when he left for America. And I often then start to think, well, you know, what did it feel like? But then I try to imagine any challenge that I could even think about that would compare to the challenge that Srila Prabhupada accepted in leaving Vrindavan with nothing, just his books, going on a steamship, not a 747 or anything like that, but going on a freighter, leaving. I mean, I, by the grace of Srila Prabhupada, have traveled many places now. He had never left. And going to such a land as New York City, and then to go to such a place as the Lower East Side of New York City. All of this required such great determination that under all circumstances, without any, even he would comment that what was the hope? But still the order drove him. So if we can reflect on the power of taking the order of the spiritual master, taking that order, not just the order of the spiritual master, but the order of the entire sampradaya, the order of Sri Chaitanya Mahaprabhu, who ordered Nityananda, go, gore, gore, go from house to house and proclaim Bhajo Krishna, Bhajo Krishna, Bhajo Krishna Naam. So we are simply following in those footsteps. And it is such a great, great pleasure to be here to see again. I mean, I'm just looking here. If you just look at this place, there's only a few pictures, and you'll see them. I think you'll be having some show. This is it. This is the place. It has been restored, and my prayer and my conviction is that the work of the devotees here in Calcutta to restore this Bhaktivinode ASAN will have effect in the entire world of the Gaudiya Vaishnava mission. And something like Srila Prabhupada said, how in the birthplace of Mahaprabhu, sometimes there's a flood, which is an indication that from that place there will be a flood of love of God. So I feel that by this effort to restore this most important place in our mission, that we will find new and increased energy to spread Krishna consciousness all over the world, taking the order of Srila Prabhupada as our life and soul. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Ram, Hare Ram. Thank you. Thank you very much, Prabhuji, for wonderfully glorifying and bringing our attention at this wonderful place. I am a bit nervous, a bit excited, but more overwhelmed by more I am hearing and thinking of this wonderful place, being in front of all of you here. I came in this place just 1 year back, I think in the month of February last year, and with His Grace Ananga Mohan Prabhu, and saw this place, the construction,
the situation of that place 1 year back. The Prabhu was explaining me the significance of this and how, what the future plans. I was seeing and okay, something is there. But then at that time, I couldn't really understand the glories and beauty of this place. But now, after the construction is done, when you can see this, the exact, looks like the exact replica of that type. Of course, I didn't see the exact replica at that time. But now here to see, we get the feeling, we get the mood of Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur, Srila Prabhupada, they being here and preaching the glories of Sri Chaitanya Mahaprabhu all over the world from this place. So we are now excited to start this place, the preaching activities from this place again, from where it will begin. So now I would like to request His Grace Sankarshan Prabhu to kindly come forward and bless us by glorifying Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur, Srila Prabhupada, and this historical event. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Hare Hare. Namo Vishnupadaya Krishna Prasthaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swami Iti Namine Namaste Saraswati Devi Gauravani Pacharine Nirvishesha Shunnavadi Paschatya Deshatarine. তো অনেক আমার গুরু ভাইরা আছেন যারা ইংরেজিতে বলবেন, সুতরাং আমি এখন একটু বাংলাতে কিছু বলার চেষ্টা করছি। কেন আমার অনেক হিতাকাঙ্ক্ষী বন্ধু, অনেক ভক্ত যারা রয়েছেন তারা যেখানে উপস্থিত হয়েছেন। তো প্রথম যখন আমি এই বাড়িটায় আসি 1993 সালে, তমাল কৃষ্ণ মহারাজকে নিয়ে আসি এবং আমরা বাইরে থেকে বাড়িটা দেখাই। তখন তমাল কৃষ্ণ মহারাজ আমার সঙ্গে ছিলেন। বাড়িটা একদম টোটালি ভাঙা চোরা এবং বট গাছ, মানে একদম টোটালি ডিস্ট্রয়েড এরকম বাড়িটা। মহারাজ দূর থেকে দেখলেন, নমস্কার করলাম। আরেকজনকে নিয়েছিলাম শ্রীমৎ ভক্তিচারী স্বামী মহারাজ। যাই হোক, উনিও দেখলেন। মনে মনে ইচ্ছে ছিল সকলেরই যে যদি বাড়িটা আমরা পেতে পারি ইসকনের তরফ থেকে। এর আগে ভক্তিদ্বৈত মাধব গোস্বামী মহারাজও চেষ্টা করেছিলেন, শ্রীধর মহারাজও চেষ্টা করেছিলেন। কেন এটা তো গৌড়ীয় জগতের একটা পীঠস্থান, যেখানে গৌড়ীয় জগতের পতাকা এই বাড়ি থেকে উড্ডীন হয়েছিল 1922 সালে। তো যাই হোক, মনে মনে ইচ্ছে ছিল সকলেরই। এবং একদিন কলকাতা মন্দিরে বোধহয় 1993 সালে যখন আমার গুরু মহারাজ শ্রী প্রভুপাদ এসেছিলেন, তখন একটু আমরা, উনি বললেন যে আমার বার্থ প্লেস হচ্ছে তো টালিগঞ্জ, তুমি দেখো। তারপরে এই কথাটা আমি বললাম যে আমরা তো এই বাড়িটাও দেখেছি। তা উনি মনে মনে ইচ্ছা প্রকাশ করেছিলেন। তো এটা আমি দেখছি আমার ইসকনে 52-53 বছর বয়সে যে প্রভুপাদের ভক্তিবেদান্ত স্বামীর যে সমস্ত ইচ্ছা ছিল, what was the desire of Srila Bhakti Siddhanta, and that has been fulfilled by Supreme Personality of Godhead Sri Krishna. তো আজকের এইখানে সুন্দর জায়গায় 1922 সালে, তখন প্রভুপাদের মানে বয়স 26 বছর মতো হবেন। তো ওনার এক বন্ধু ছিল, বন্ধুর নাম হচ্ছে নরেন মল্লিক। তো নরেন মল্লিক এই হ্যারিসন রোডেই থাকতেন এবং দুজনেই স্কটিশ চার্চ কলেজে পড়তেন। নরেন মল্লিকও পড়তেন আর অভয়চরণ দেবও পড়তেন। তো একদিন নরেন মল্লিক এসে বলছেন আমাকে, এই চল একজন সাধুকে দেখবি। আমি অনেক সাধু দেখেছি, অনেক সাধু আমার বাড়িতে আসে, আমার বাবার কাছে আসে, টাকা পয়সা নেয়, কাপড় চোপড় নেয়, চলে যায়। কোনো সাধুর প্রতি আমার কোনো আকর্ষণ নেই, আমি যাবো না। আবার দ্বিতীয় দিন এসছেন, তৃতীয় দিন এসছেন, তবে চ না একবার চ, আমি তোকে নিয়ে যাই ওই উল্টোডাঙ্গা 1 নম্বর উল্টোডাঙ্গা রোডে, দেখবি কত ভালো একজন সাধু এসছে। যাই হোক, at the request of his friend, so I mean
Naren Mollik. So he first came in this place. তো তখনকার দিনে আমাদের বাইসাইকেল ছিল, দুজনেই নরেন মল্লিক এবং অভয়চরণ দুজনেই বাইসাইকেল নিয়ে এসে এখানে উঠলেন এবং শিবভক্তি সিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুরকে দর্শন করলেন। কিন্তু নরেন মল্লিক দীক্ষা পায়নি। নরেন মল্লিক ইজ এ ফলোয়ার অফ শিবভক্তি সিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর, বাট হি ওয়াজ নট ইনিশিয়েটেড। এই জন্য অনেক সময় আমরা গুরু দর্শন করি, ভাগ্যে না থাকলে দীক্ষা হয় না। এটা মানে চৈতন্য মহাপ্রভু বলেছিলেন, যা কিছু কহিলে তুমি সব সত্য হয়, কৃষ্ণ ভক্তি সেই পায় যার ভাগ্যোদয়। উইথ ফেভার বাই ফরচুন হি অ্যাটেন্ডস কৃষ্ণ ভক্তি, নট এভরিওয়ান। তো যাই হোক, নরেন মল্লিক তখন চলেন। তারপরে বলছে, কিরে কেমন সাধু দেখলি? বলে, আমার জীবনে আমি যা দেখলাম আমি তার কাছেই সমর্পণ করলাম আমার জীবন। তো উনি 22 সালে ওনার জীবন সমর্পণ করেছিলেন শিবভক্তি সিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুরের কাছে। আর 1933 সালে এলাহাবাদে ওনার হরিনাম এবং গায়ত্রী দীক্ষা হয়। তো 11 বছর পরে। তো যাই হোক, আজকে আমরা দেখছি যে ইসকন শুধু আমাদের একটা জিনিস আমাদের চেষ্টা করতে হবে, যেটা হচ্ছে প্রয়াগ ফার্মেসি, যেখানে আমাদের এলাহাবাদে প্রভুপাদ থাকতেন, গৌরমন্দিরে থাকতেন এবং সেখানে আমরা কয়েকবার গেছিলামও। যাই হোক, তো এলাহাবাদে ওনার অ্যাকচুয়ালি মেডিকেল, হি ওয়াজ এ মেডিকেল ম্যান বাই প্রফেশন, হি ওয়াজ এ মেডিকেল ম্যান, কেমিস্ট। অ্যান্ড এলাহাবাদে ছিল প্রয়াগ ফার্মেসি। তো প্রয়াগ ফার্মেসিতে পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু, পণ্ডিত মতিলাল নেহরু এসে বসতেন, কারণ ওখান থেকে বিভিন্ন সমস্ত ওষুধ তারা কিনতেন। এবং কার্তিক বোস ল্যাবরেটরি এই খুব কাছেই আমাদের অনন্দমোহন প্রভু, যে হোয়াট ইজ দ্য নেম অফ দ্যাট বুক, হিডেন ট্রেজার অফ ক্যালকাটা। আমি ওনাকে নিয়ে সমস্ত যতগুলো কলকাতায় জায়গা আছে আমাদের প্রভুপাদের স্মৃতি বিজড়িত জায়গা, আমি ওনাকে নিয়ে যাই এবং ওনাকে বলি যে এর উপরে একটা বই তুমি করো। তো ইউ উইল ফাইন্ড দ্যাট ইন দ্যাট বুক there are so many in details about the ISKCON's pastimes of Srila Prabhupada. তো যাই হোক, তা এলাহাবাদে যখন ছিলেন প্রভুপাদ, তখন আমাদের ভক্তিপদী তীর্থ মহারাজ, যিনি ভক্তি সিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুরের খুব প্রিয় শিষ্য ছিলেন, তো এলাহাবাদ প্রয়াগে গেলেন। তখন উনি গৃহস্থ। অমরবাবু, আমাদের একটু হেল্প করবেন, আমরা এখানে গৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠা করবো। বলে, নিশ্চয় নিশ্চয়, আসুন আসুন। তো প্রভুপাদ তখন নিজেই বিভিন্ন জায়গায় ওই এলাহাবাদে বেরিয়ে সমস্ত টাকা পয়সা কালেকশন করে গৌড়ীয় মঠ করেছিলেন। তো আজকের আমরা দেখছি যে গৌড়ীয় গগনের পতাকা এখানেই প্রথম হয়েছিল এবং এখানেই ইসকনের জন্ম। এই কারণেই বলছি যে শিবভক্তি সিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর ওনাকে বলেছিলেন এই ঘরেতে যে তুমি পাশ্চাত্য দেশে আমার নাম প্রচার করো। তো প্রভুপাদের জন্মস্থান আপনারা সকলে দর্শন করেছেন, টালিগঞ্জ। টালিগঞ্জের পাশেই ছিল শাহনগর বলে একটা জায়গা, এখনো আছে। তো শাহনগরে 1913 সালে শিবভক্তি সিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর ছোটখাটো একটা প্রেস করেন একটা ভাঙা বাড়িতে। এবং ওই শাহনগর থেকে প্রভুপাদের জন্মস্থান বেশি নয়, অনলি 20-25 মিনিটস অন ফুট। তো দেখুন, প্রভুপাদের জন্মভূমি হওয়ার আগেই শিবভক্তি সিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর ওই জায়গায় ঘুরে এসেছে। আর সত্যি কথা বলতে গেলে যে ওই যে প্রেস 1913 সালে হলো, তারপর ওই প্রেস থেকে স্বজন্ত শ্রেণী, গৌড়ীয়, জৈব ধর্ম, এই সমস্ত গ্রন্থ পাবলিশ হলো। তো যাই হোক, বেশি সময় নেব না, অনেক কিছু বলার আছে, কারণ আমার অনেক গুরু ভাইরা আছে, তারা বলবেন এবং প্রভুপাদের শিষ্যরা যারা রয়েছেন তারাও কিছু বলবেন। কারণ তো এখন তো আমরা তো সব যাওয়ার পথে, we are trying to leave this place. Now the ISKCON will be remain in the hand of next generation, the disciples of all my present God brothers. যাই হোক,
এই ভক্তি সিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুরের মনোভীষ্ট, যে ওনারও ইচ্ছে ছিল এই বাড়িটা পাওয়ার, আমার গুরু মহারাজের ইচ্ছে ছিল, এবং ইস্কনের বড় বড় যারা জিবিসি যারা গুরুবর্গ তাদেরও ইচ্ছে ছিল। তো কৃষ্ণের ইচ্ছে আজকের আমরা এখানে উপস্থিত হয়েছি। এবং বিশেষ করে আমি জানি টালিগঞ্জের জন্মস্থান এবং এই মানে গৌরীয় গগনের বার্থ প্লেস, রাধারমন প্রভু, দয়ারাম প্রভু এবং অনঙ্গ মোহন প্রভু তারা অনেক চেষ্টা করে এটা করেছেন। তাদের কাছে আমি ভীষণ কৃতজ্ঞ এবং প্রভুপাদ তাদের কৃপা করুক, এবং তারা যে এই পতাকা বহন করে নিয়ে যেতে পারবে পরবর্তীকালে তার সিগন্যাল তারা দিয়ে দিয়েছেন। হরে কৃষ্ণ 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 হরে হরে, হরে রাম 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 হরে। শ্রীল ভক্তি সিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর কি আজকের 1874 সালে শ্রীল ভক্তি 1874 আবির্ভূত হয়েছিলেন, আর সামনে বছর 150 বছর হচ্ছে তার আবির্ভাব। সুতরাং এক বছর পর, তাই না, 3 বছর বাদে, যাই হোক তখন আমরা আরো বিরাট করে প্রোগ্রাম করব আশা করি। তো থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ ফর গিভিং মি এ চান্স টু স্পিক অ্যাবাউট শ্রী ভক্তি সিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর। হরে কৃষ্ণ। Hare Krishna. Shri Siddhanta Saraswati Shachisuta Priyati Krishna Shevaya Jaratulya Mai. So this is the place from where Shri Siddhanta Saraswati started his Krishna Seva Prachar. So we are really grateful to His Grace Sankarshan Prabhu for kindly connecting us with the history of this wonderful place. Now we would like to request His Grace Harishore Prabhu to kindly bless us with the glorification and significance of this wonderful event. Shall I use that? Hare Krishna. All right, we got it. Srila Prabhupada ki jai. Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Goswami Prabhupada ki jai. Gaudiya Vaishnavas ki jai. So I won't speak for very long. In 1977, Prabhupada was in Vrindavan in mid-year. I happened to be there when he instructed some of his followers that we should try and get all the places where Prabhupada had preached and where he had lived. He had already begun the Radha Damodar rooms. He had already got several of his sannyasis living there, just to lay a claim, if you like, for ISKCON. He said that these, he didn't use the word Tirthastan, but that's Tirthastan means that a place of Leela, a place of pastimes. Prabhupada said that it's very important to keep those places maintained. And let's see. Anyway, so I think it was about June of 1977. When I heard Prabhupada make that comment, a few days later I went to the Bamsi Gopal temple, where Prabhupada had lived for some time in the 1950s. And when I got to the temple, I was met by the Mahant there, and he immediately showed me the original rental document that Prabhupada had for that Bamsi Gopal temple. So
understood, at least from Prabhupada's mood, that these places where the different activities of Krishna and his all the entourage, when he comes, they create spiritual you have to excuse me, my brain's not working well. Anyway, there's different places of pastimes. In Kali Yuga, we're likely to forget things immediately after they've been done. We see that in Lord Chaitanya's time, he personally went to Vrindavan. Afterwards, he sent all of his chief preachers. They all went to Vrindavan to revive and resuscitate all the places of Krishna's pastimes. If we don't do that, if we don't keep the connection, then after a very short time, people forget. When Lord Chaitanya went to Vrindavan, there's so many places that had become hidden by the flow of time. So one of the important works of the six Goswamis was to renovate or to relocate the different Leela stands and pastimes places. So it's, we can take it as a very important task that we should mark, we should maintain, and we should propagate Krishna consciousness from these particular spots, because everywhere where a pure devotee goes, then the place becomes a tirthasthan. It's a place to get purified. So this building has so much historical value in the modern day Hare Krishna movement. Chaitanya Mahaprabhu had his immediate followers establish these places, and we have to follow on from what Bhakti Siddhanta Saraswati, Thakur, then Srila Prabhupada. There are so many places that we should gradually maintain and use for our preaching purposes. So this, I understand this is going to be some kind of a museum, and I hope that there'll be extensive preaching that was done from previously. Bhaktisiddhanta Saraswati came here in 1918. He had just taken sannyas on Gaur Purnima Day. Well, actually, in our Bhaktivedanta Research Center, we have an Indian government map from 1918. And at that time on the map, there's nothing. There's no, it's just open land. Now we see that Mayapur is becoming one of the most important places for pilgrimage because of Bhaktisiddhanta Saraswati taking the time and trouble to establish his main headquarters there. So in the same way he came here in 1918 to begin his preaching work in the cities. He had already been doing his brata for chanting, and after that then he was instructed or inspired to come to Calcutta and begin his preaching work. And within a short period of time, then they had 64 different temples. So this was not owned by the Gaudiya map, but it was rented by them for about 14 years. So after they moved to the Bag Bazaar temple, then this was taken back again by the owners, and it's just been sitting here
for a long time, many years, and practically forgotten. Somehow or another, our couple of devotees, I think from Bombay, and excuse me, I can't remember their names, but they decided to do some investigative work. Eventually, they found this building. It was, I believe, in the hands of a developer. So he had a plan that he was going to demolish this and build flats. So somehow or another, our devotees, Radharaman and others, they persuaded this, well, they persuaded the owner to release the building for our use. It took a struggle. I think it was about 7 years from the time that they found the place to getting legally getting in a position where we could prevent it from being demolished and develop it. So anyway, the history is going to be there. It's in the museum, but it's very wonderful to see the remanifestation of the first and most important of the Gaudiya mats outside of Mayapur. So I'd like to thank all the Calcutta devotees. I'd like to thank all the devotees that have contributed to this resuscitation of one of the most important places in Prabhupada and Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur's preaching. So, Srila Prabhupada ki jai. We thank His Grace Hare Krishna Prabhu on behalf of ISKCON Kolkata. Now, we would like to request His Grace Ananga Mohan Prabhu on stage, the personality who was behind this wonderful event, wonderful place from the very beginning. And he is one of those few devotees out of whose tireless dedication and enthusiasm, this is what we can see now. So now we'll have felicitation of honorable guests and well-wishers, and we request His Grace Ananga Mohan Prabhu to kindly come on stage and take it forward. হরে কৃষ্ণা। বাংলা ভাষায় বলতে গেলে আমার সামনে চাঁদের হাট বসেছে। In Bengali, if I can say that in translation in Bengali is the moons. I can see the moons here, the marketplace of moons sitting here. So my obeisances to all of you, and very happy to be here. Just like as Harishwari Prabhu said, that we need to thank those wonderful souls and devotees who have made this possible and supported us with so much love and affection. So may I request His Holiness Bhakti Purushottam Swami Maharaj and His Grace Devakinandan Prabhu to please come on stage and deliver and give the gifts behalf of Dayaram Prabhu to all the Vaishnavas. I will definitely say they are Vaishnavas, wonderful souls and very kind-hearted. किसी किसी को तो मैं ऐसा बोलता हूँ कि ये सब लोग जनक महाराज के पार्षद रहे और सबने इतना अच्छा से प्रेम से सेवा किया, और इसलिए मैं दयाराम प्रभु की तरफ से आप सबको धन्यवाद देना चाहता हूँ। हम धन्यवाद देना चाहते हैं विशेषतः हमारे जितने भी जीवीसीज हैं, हिज होलिनेस श्री जयप्रकाश स्वामी गुरु महाराज, हिज होलिनेस श्री राधानाथ स्वामी गुरु महाराज, His Holiness Bhakti Charu Swami Maharaj. We are missing him very much. He came many times and he was giving his vision about this place. We are very much missing his physical presence here. Please be seated. Please be seated. And thank you, Bhakti Purushottam Swami Maharaj. He is also one of our GVCs here. Devakinandan Prabhu is representing Dayaram Prabhu actually.
because they are very good friends, and Prabhu's presence is making us little bit relaxed that Dayaram Prabhu, because of physical illness, he is unable to come, but Prabhu's presence making us feel Prabhu is here. Definitely, he has sent his message that we will be showing it to you little bit later. We are also very happy that we have the EIDC representing behalf of EIDC. Our dear chairman is Nadu Gopal Prabhu is here. So we want to thank him also for coming and blessing us. We are very happy to thank Honorable Chief Minister Srimati Mamata Bandyopadhyay. She has announced this as a heritage building. We really seek all the blessings of the Vaishnavas and Gaudi Parampara upon her. We are thankful to Dr. Soshi Panja, the minister who is coming behalf of Mamata Banerjee after some time. Respected Shreya Pandey and Shadhan Sahaji, who, may Krishna bless him. All these personalities, helped us to acquire this place, and we are very thankful towards them. We want to thank ISKCON Mayapur first. ISKCON Mayapur is the first person, who came up and helped all of us to build this beautiful monument. And maybe sometimes we are making a documentary, you can hear about all the glories of all the Vaishnavas who have helped us to make this possible. Suvekshana Prabhu, Madhav Gauranga Prabhu, Hari Lila Prabhu, Hriday Chaitanya Prabhu, Braja Vilas Prabhu. We want to thank heartily from our side for your amazing help, and may Krishna inspire you to help more Calcutta. Hare Krishna. And we also want to thank ISKCON Juhu. ISKCON Juhu is General Dayaram Prabhu directly told me, you must thank all of them. And Juhu is one of the most generous temple in all over world. And we took advantage of it, Hare Krishna. And Juhu is the first person, Juhu, Radha Rasbihari ji, and Brajahari Prabhu, Devakinandan Prabhu, and Bhima Prabhu are the stalwart, wonderful Vaishnavas who helped us at the beginning. And because of their help, we started the whole project. So we really thank three of them, and I know they will be always there with us. Hare Krishna. And we want to also thank ISKCON Chopati, Radha Gopinath Temple. And we want to thank His Holiness Srila Radhanath Swami Maharaj, who was very generous and kind and always inspiring all of us. And personally also inspiring other devotees to help financially. And we want to thank His Grace Gauranga Prabhu as well for inspiring and helping and financially support. We want to also thank Dubai Yatra, all the Yatras who have helped us, Moscow Yatra, Singapore, Malaysia, Abu Dhabi, US, Chennai, Delhi, all the Yatras, they helped us. And one thing I must tell you, those who help, they never want anything in return, any facility, just they wanted blessings. And this was so nice. And there are many other things. Time is less, so that's why I'm limiting myself. But it was a very great experience when we saw that they are all helping and they are coming forward. They're asking us how it is going. It took more than 3.5 years because of COVID, but some or other, all of your presence here making it more beautiful, more successful. And definitely we want to, there are innumerable people who helped. I can tell you one Mataji sold her jewelries. I know mothers are very attached, to, gold, but they sold it and said that, I want to give it for this project of Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur. One vegetable seller, one of our Namata and Bhakti Vriksha devotee, when he came to know, and from her savings, he also served this. So I'm praying to Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur on his appearance day to bless them, and to Prabhupada to bless them, and the deities to bless them. And there are certain wonderful devotees and Vaishnavas and supporters who innumerably helped all of us. And I want to thank them. May I request them to come and their representatives to come here on the podium
and I will request Devakinandan Prabhu to give them garland and Bhakti Purushottam Swami Maharaj to one bouquet and little bit of appreciation what they have done. They have got innumerable blessings, spiritual blessings. However, behalf of ISKCON, behalf of ISKCON, not only Calcutta ISKCON, behalf of ISKCON, because this project belongs to ISKCON, the family of Srila Prabhupada and all Gaudiya Vaishnava Parampara. So we want to thank them as a respect. We want to offer some gifts to them. So may I request the Peerless General Finance Committee to come. Actually, Mr. S.K. Roy and his very able son, Mr. Jayanta Roy, they came up and they were very much supporting all of us. May I request everyone to say little Hari Bol, and they have been represented by wonderful devotees coming. Thank you so much, sir, for coming and helping us. Yes, nice moment. Mahalakshmi is needed. Please remember, this is a phase 1 only. More phases are coming. So, and one certificate also we are giving behalf of ISKCON. Thank you so much. Thank you so much. Yes, there is a certificate. Yes, Hari Bol. This is just recognition from us. And thank you very much. May you be blessed, and you are already blessed. May I request Sri Gopal Chandgodiya Prabhu and their family member, if they are there. They're too humble, I think. Hare Krishna. They also helped us in a wonderful way. So we pray to all of you, please bless them. MS Kanji Pitambar and Co. Company. Huh? Oh, Gauranga Prabhu. Gauranga Prabhu helped us. So maybe Gauranga Prabhu can come on behalf of them take, or maybe someone else. Maybe Radhakund Prabhu can come. Okay. Gauranga Prabhu is there? Okay. ठीक है, आपके हिसाब से हम लोग ले रहे हैं इस गिफ्ट को. हरे कृष्णा. So he arranged this help. Shuman Chaki Prabhu, he is not here. Srimati Bani Chakravarti, please come, Mataji. She was a school teacher and she got in touch. So Bani Mataji has been a very big help for all of us. She is really a mother, আমাদের মা. একবার হরি বল. আর সব সময় বলছেন কিছু কম পড়লো আমাকে বলবেন. So put it in. I think we should really little bit clap or say Hari Bol Vaishnavik way. Yes. Thank you so much, Mataji. আপনি দীর্ঘায়ু হন, আরো সেবা করতে থাকুন। আপনার উপর অনেক আশীর্বাদ শ্রী শ্রী রাধা গোবিন্দ শ্রীমান মহাপ্রভু জগন্নাথ বলদেব সুভদ্রা মহারানীর। अमृत सीमेंट एंड लिमिटेड प्रभु जी को बहुत बहुत धन्यवाद। प्रदीप प्रभु जी प्लीज कम। थैंक यू सो मच। आपको महाराजों के हाथों से आपको आशीर्वाद मिल रहा है। श्री विश्वनाथ चौधरी जी आए हैं। विश्वनाथ जी थैंक यू सो मच। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। श्री विश्वनाथ चौधरी जी, Gopal Chandgodiya Prabhu, you can please come with your wife. Gopal Prabhu, Kaushal, please come. This family and they are born devotees actually, और बहुत सेवा करते हैं। हमने बोला कि आपका नाम लिख दें, मुझे नहीं लिखना है, दिल में लिख दीजिए। तो हम आप प्रार्थना करते हैं भगवान से कि आपका सब मनोकामनाएं भगवान पूर्ण करें। थैंक यू सो मच। लड़का पापा से ज्यादा सेवा करें। हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच। और उनकी पुत्र वधू, ठीक है आ जाइए। श्रुति, द न्यू जनरेशन, पापा और मम्मी का संस्कार से आशीर्वाद रूप धरोहर के स्वरूप में वो लोग पाए हैं।
ये परिवार के ऊपर आशीर्वाद बरसे भगवान का। श्री विश्वनाथ चौधरी जी हैं, ओके। एंड और एक जन व्यक्ति हैं जो बहुत सेवा करते हैं और आप सबको उनका नाम पता भी है, श्री विजय खेमका जी एवं उनके धर्म पत्नी जी ज्योति माता जी। प्रभु जी तो नहीं है लेकिन आप उनको रिप्रेजेंट कर सकती हैं। इन्होंने काफी सहायता किया और करते रह रहे हैं और करते रहेंगे। हरे कृष्णा। मिली कंदोई माता जी, आई थिंक शी इज नॉट हियर, शी इज देयर, ओके। एवं राधा माधव प्रभु और माता जी को हम अनुरोध करेंगे कि कृपया आप थोड़ा सा पधारें। प्रभु ने बहुत सहायता किया, सबने बहुत सहायता किया, दे रियली हेल्प्ड ऑल ऑफ अस। प्लीज कम। हरे कृष्णा। आपसे पुनः विवाह हो गया, हरि बोल, मंच में भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के सामने। हरे कृष्णा। थोड़ा सा उपहार हमारे गुरुजनों के हाथ से आपको। सोम मस्करा प्रभु को भी हम धन्यवाद देना चाहते हैं, लेकिन वो अभी डोनेशन अच्छा से बाद में दे पाए इसलिए अमेरिका सफर में गए हैं। हरे कृष्णा। और मैं अनुरोध करूंगा अंशुल अग्रवाल प्रभु को, प्रभु हैं इधर, अंशुल अग्रवाल प्रभु कभी उनसे सुनना चाहिए। राधा रमन प्रभु, अंशुल अग्रवाल प्रभु, ये लोग, इनका एक बड़ा टीम है जिन्होंने बहुत कुछ चमत्कार किया इस प्रॉपर्टी को पाने के लिए, वो कभी हम आप सबको सुनाएंगे। रामकृष्ण फाउंडेशन, ओके। और जिनको हम सबको ही हम बहुत प्यार करते हैं, लेकिन एक विशेष व्यक्ति हैं, उनको देखने से दिल पिघल जाएगा आप सबका नाम लेने से। पुरुषोत्तम गोयल प्रभु। तो पुरुषोत्तम प्रभु आप कृपा करके थोड़ा सा अगर आए। पुरुषोत्तम प्रभु सिर्फ इस प्रोजेक्ट के लिए नहीं है, वो एकदम पिता है और उनके अंडर में जितने भी कलकत्ता का प्रोजेक्ट है सब उनके छोटे छोटे बच्चे हैं और वो देते रहते हैं। किस बच्चे को दुर्बल हो गया, ठीक है ये ले लो, तुम थोड़ा सा ले लो। तो ऐसे करके पिता के माफी को हम सबको संभाल के रखे हैं। और मैं सब समय बोलता हूं कि बहुत विशेष भक्त हैं। अगर आप म्यूजियम में जाएंगे उधर दिखेगा आपको कि इस जगह को सेवा करने के लिए एक मारवाड़ी, भक्ति सिद्धांत ठाकुर के समय में एक मारवाड़ी सेवक थे जो सब लक्ष्मी दे के भक्ति सिद्धांत ठाकुर को सहायता कर रहे थे। मेरे को लगता है कि रिइंकार्नेशन हो गया है उनका फिर से। तो मैं हार्दिक रूप से आप सबका धन्यवाद देना चाहता हूँ। थैंक यू सो मच प्रभु। और मैं भक्ति पुरुषोत्तम महाराज और देवनंदन को भी धन्यवाद देना चाहता हूँ। अंशुल प्रभु आए हैं, प्लीज। तो आप अकेले भी आ सकते हैं। आप दो, अच्छा वो दोनों बहुत प्रेम से सेवा किए इधर, तो वो माइक में नहीं बोल सकते हैं, अमाइक होके बोलना पड़ेगा। तो हरे कृष्णा। Nobody is clapping. Everybody has to clap. People have sacrificed. Let us show some enthusiasm. हरि बोल। थैंक यू ब्रजविलास प्रभु। तो yes, please, thank you so much, yes, thank you so much. Because our honorable GBCs are watching us online and their representative Bhakti Purushottam Swami Maharaj is here, and regional secretaries are here, Devakinandan Prabhu is here, and the chairman of EIDC is also here. So हम सबके तरफ से, डोनर सबके तरफ से एक अनुरोध रखना चाहते हैं आप सबसे कि सब लोग और इस एरिया के लोग भी चाहते हैं कि जितना जल्दी हो ठाकुर जी आ जाएं। The deities, small Krishna, Radha Krishna deities. So we are requesting that as early as possible, if you can bless us, we are ready to serve, and all the donors and well-wishers are eagerly waiting to have the second phase inaugurated very soon. आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। मैं नाम बहुतों का ले नहीं पा रहा हूं क्योंकि उन लोगों ने मेरे को मना किया है,
और मैं अपना आवेग को भी संयम करके रखा हूँ। मैं जानता हूँ कि आप सबने कितना प्रेम से इस जगह को सहायता किया और हमारे जितने भी जीवी से हैं उन सबके इंस्पिरेशन से ये प्रेम का स्थली बना है। आप सबका आशीर्वाद ऐसे ही बरसता रहे। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा। Hare Krishna. Thanks a lot, Anangamohan Prabhu. So now we will continue, resume our glorification session, and we would like to request Her Grace Atita Guna Mataji to kindly come and glorify Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur. And then we will be requesting His Grace Devaki Nandan Prabhu. We will be hearing from him. So first, Her Grace Atita Guna Mataji, disciple of Srila Prabhupada, she will come and she will glorify this historical event and the significance. Hare Krishna. All glories to Srila Prabhupada. All glories to Bhakti Siddhanta Swami Maharaj. I would like to thank all the organizers for making this inauguration of Ultadanga Road a success. I've heard so many stories of all the obstacles and struggles that had been surmounted to finally to be able to make Ultadanga Road ISKCON's. I was thinking of what a holy place it is. 100 years ago, a fateful encounter took place. Abai did not want to go to meet another sadhu. Most of the sadhus that he met were actually asadhus. But when Abai, later to become A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada, met His Holiness Bhakti Siddhanta Maharaj, he asked him to preach Lord Chaitanya's mercy and Harinam around the world. Without this meeting, there would be no ISKCON. I would perhaps not be a devotee. This was such an incredible meeting, and it's wonderful that we're able to stand in the spot where these two great souls met. Hari Hari Bol. Ami Kubshuki Ekane Habe Shob Kripa Srila Prabhupada Ache Ebon Kripa Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Maharaj Aita Kuboro Din Sabai. Hare Krishna. Thank you very much, Mataji. Now we would like to request His Grace Devaki Nandan Prabhu. Hare Krishna. हिंदी और इंग्लिश हिंदी और इंग्लिश हरे कृष्णा जिसके पास हाथ है एक बार हाथ उठाओ सब लोग हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो सर्वप्रथम मैं कलकत्ता मैनेजमेंट अपने मित्र श्रीमान दयाराम प्रभु, हमारा यूपी वाला राधा रमन प्रभु, अनंग मोहन प्रभु और समस्त भक्तों को तहे दिल से साधुवाद। मेरे पास अवसर था 2 जगह जाने का, इनविटेशन था।
आज इंदौर के पास खरगोन में एक मंदिर का उद्घाटन हो रहा है। समग्र श्री प्रभु हमारे पीछे बहुत दिन से पड़े थे कि मैं वहां आऊं। राधारमण प्रभु का प्यार था कि प्रभु जी आप इधर आ जाओ, अनंग मोहन प्रभु। जब मैं दयाराम प्रभु से मिलने हॉस्पिटल गया तो वे कहे कि मैं तो नहीं जा सकता हूं, आप चले जाना। तो मैं कह सकता हूं कि मुझे यहां पर आना आध्यात्मिक उन्नति के लिए अच्छा हुआ। यह तीर्थस्थली है, इंपावर प्लेस है। लॉर्ड चैतन्य महाप्रभु डिवाइन ग्रेस भक्ति सिद्धांत सरस्वती प्रभुपाद को पावर ऑफ अटॉर्नी दिए कृष्ण कॉन्शसनेस का प्रचार करने के लिए। इस बिल्डिंग का स्थापना 1918 लिखा हुआ है, 18 में हुआ। ठीक 4 साल के बाद डिवाइन ग्रेस ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद अपने गुरुदेव से यहां पर इस बिल्डिंग पर यहां पर मिले। उनके गुरु महाराज प्रभुपाद जी को पावर ऑफ अटॉर्नी दे दिए 1922 में, आज से 100 साल पहले। 1933 में प्रभुपाद जी दीक्षा लिए। 1944 में प्रभुपाद जी भगवत दर्शन पत्रिका का स्थापना किए, बैक टू गॉड एड। 1955 में वे वृंदावन रिटायर हुए प्रिपरेशन करने के लिए। 1966 में प्रभुपाद जी अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावना संघ का स्थापना किए और 1977 में इस धराधाम को छोड़कर के वे चले गए। 11 साल, ये 11 साल बड़ा इंपॉर्टेंट है। कहते हैं लोग 1 और 1 2 नहीं होते हैं, 1 और 1 11 होते हैं। तो ही डिवाइन ग्रेस भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी जो एम्पावर थे, उन्होंने एम्पावर किया श्रील प्रभुपाद जी को। श्रील प्रभुपाद जी ने एम्पावर किया अपने भक्तों को, जो लोग आज पूरे विश्व में कृष्ण भक्ति का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। जब मैं यहां पर आया तो राधारमण प्रभु बोले कि प्रभु जी, मैं अपने दिल से कह रहा हूं, ये जगह कोई ऑर्डिनरी नहीं है। यहां पर साक्षात भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद का कृपा है। वे पावर ऑफ अटॉर्नी दे रहे हैं, बांट रहे हैं। और उन्होंने कहा कि जब हमें ये प्राप्त हुआ, 2 महीने के बाद प्रभुपाद जी का जन्मस्थली प्राप्त हो गया। अब हम लोग यहां पर आ गए हैं और राधारमण प्रभु से आगे का पड़ाव मैं कहना चाहूंगा कि प्रयाग फार्मेसी के लिए प्रयागराज चलो, उसको भी प्राप्त करें। यहां से पावर ऑफ अटॉर्नी लेकर के। तो आज बड़ा ही शुभ दिन है। हमारे परम गुरु महाराज भक्ति सिद्धांत सरस्वती प्रभुपाद का आविर्भाव तिथि है। वे यहां पर आए कृष्ण भक्ति का प्रचार करने के लिए और उनके आदेश के अनुसार हमारे गुरु महाराज पूरे विश्व में प्रचार किए। तो आज का दिन हम लोगों के लिए स्पेशल दिन है। आज प्रार्थना का दिन है। भक्ति सिद्धांत जी से हम प्रार्थना करें कि उनके कृपा बना रहे, जो उन्होंने आशीर्वाद दिया था, इंपावरमेंट किया था प्रभुपाद जी को, हम लोगों को करे कि हम लोग प्रचार प्रसार कर सकें। श्रील प्रभुपाद की जय। थैंक यू वेरी मच।
Srila Bhaktivedanta Swami Prabhupada, he wrote in glorification of his spiritual master, Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur, adore, adore ye all the happy day, blessed than heaven, sweeter than May. When he appeared at Puli, the holy place, my Lord and Master, his divine grace. So we are so happy to inaugurate this place on the very appearance day of his divine grace, Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur. We thank his grace, Devakinandan Prabhu. Now we will be watching the message by his grace, Dayaram Prabhu. So we hope our technical team is ready with the video message. Hare Krishna. Namo Vishnu Padaya Krishna Krishnaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Namaste Saraswati Devi Bhagavani Pachari Nirvishesha Shunyavadi Pashyata Pachari Jai Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Shivasti Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Ram. Today is auspicious occasion of restoration of the place where actually seed of ISKCON was sown. It's unfortunate that I can't be personally present. I'm hospitalized in Mumbai or Bhaktivedanta Hospital, which is like home. First of all, let me thank all of you for all the help, prayers, support you gave, and services you have rendered for me to get better. And definitely this news of restoration of Ultadanga Junction is another cause of me feeling better. Wherever Lord Chaitanya and his associate enacted their pastime, stayed or met each other, are undoubtedly places of pilgrimage. This particular place, where Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur, who was that time sitting like a Babaji in Mayapur, doing his Shatakoti Nam Yagya, was persuaded by his disciples and followers to come to Calcutta and start preaching. And he started his mission from this place. So this is a place of pilgrimage for all Gaudiya Mutt's, ISKCON, all followers of Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur. Here he met Prabhupada, who was young follower of Gandhi, thinking of India's independence. And he was instructed by his Guru Maharaj, Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur, to preach to English-speaking world. And Prabhupada said, my Guru Maharaj defeated me. And put in this his instruction, which became his life mission. It is manifested many years, 45 years later, when Prabhupada started his first ISKCON center in New York, United States of America. So this place is very important, very inspirational for everybody, especially for ISKCON devotees. Restoration of this place, getting this place and restoring it was a long struggle. ISKCON Calcutta devotees worked very hard, especially Radharaman Prabhu and Anangamohan Prabhu and all the other leaders of members of COM and CDC of Calcutta
put in humongous efforts to first get this place and then to restore it like it was almost 100 years back when Prabhupada made Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur. Devotees have tried their best to replicate it as it was, using the same material which was available in the building, and got the material which was used at that time to build up such buildings. Inside works, interiors are still not complete, and few more things need to be done. But external structure is more or less restored to what it was. And for that, a lot of efforts were put in by many devotees, and we thank all of them. Many devotees don't want their names to be taken, so we respect their sentiment and we thank them without mentioning their names. But I can't stop mentioning few names. So special thanks to ISKCON Mayapur, who contributed for its acquisition, and then ISKCON Chowpatty and ISKCON Juhu. ISKCON Juhu, I always say, is the most generous temple in India. Always came forward for any help, for any such important project. Radhanath Maharaj inspired ISKCON Chowpatty also. They also contributed in many ways for this glorious project. Apart from that, Raghunath Maharaj and Devamruta Maharaj also came forward and inspired and contributed for restoration of this place. We thank them. There are so many different Kolkata temple donors who helped. Our special thanks to Peerless Group for their contribution. I pray to Lord Chaitanya Mahaprabhu of Lord and Srila Prabhupada and Bhaktivedanta Swami Thakur that they bless all these devotees whose names we have mentioned and whose names I am not mentioning. And there are countless others who have done as per their yatha-shakti, as per their capacity, put their energy, put their time, put their efforts, and put their Lakshmi to make this thing possible. We pray to Mahaprabhu, Srila Prabhupada and his Guru Maharaj that they shower their blessings upon all of them. We pray to them that this place becomes a place of inspiration to all ISKCON devotees around the world, and also devotees of Gaudiya Maths, and all the followers, disciples, grand disciples, great-grand disciples, great-great-great-grand disciples of Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur. This is place for all of them. Every one of them is most welcome to come here, recite, get inspiration, go back and preach the mission which Prabhupada's Guru Maharaj started, which he wanted in every town and village. Lord Chaitanya's message we preached, he spread. This is a step towards it. So we request all the devotees to bless all the devotees who have put in their efforts, energy and funds to make this happen and who will continue to do it. So they get inspired to restore many such places of pilgrimage where Srila Prabhupada, his Guru Maharaj, and other great Vaishnavas, Lord Chaitanya's associates, have enacted their pastimes. Thank you very much. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare.
সেই জন্য দিদিকে অনেক ধন্যবাদ। আর আমি দেখতাম চন্দন যাত্রার সময় গোবিন্দজনে চন্দন ঘষতেন উনি। এখন মিস করছি আপনাকে, সেই ফটোটা আছে, কিন্তু আপনি এত ব্যস্ত হয়ে পড়েছেন। তো আজকে আপনার উপস্থিতি আমাদের কাছে অত্যন্ত আনন্দের। আমরা প্রার্থনা করি আপনি সুস্থ থাকুন, আনন্দে থাকুন, এবং আপনার হাত থেকে অনেক সুন্দর সুন্দর মানুষের সেবা হোক, ভক্তের সেবা হোক। আজ একটা দুঃখের দিনও, তার কারণ হচ্ছে গতকাল শ্রীমান সাধন পান্ডে মহাশয়ের শরীর শান্ত হয়েছে। তার জন্য আমরা একবার হরে কৃষ্ণ মহামন্ত্র বলবো। হরে কৃষ্ণ 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 হরে হরে, হরে রাম 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 হরে হরে। তো আমরা দিদিকে অনুরোধ করব এখানে আসার জন্য পোডিয়ামে, এবং শ্রুতিকে অনুরোধ করব। শ্রুতি, ক্যান ইউ প্লিজ কাম এন্ড গিভ দিস গিফট টু মাতাজি প্লিজ। খুলে দাও। দিদি বহু বছর ধরে আমাদের সঙ্গে রয়েছেন। ওনার স্নেহ ভালোবাসা কে আমরা সম্মান জানাই, এবং বৃন্দাবন থেকে খুব সুন্দর একটি সম্মানীয় উত্তরী ইসকনের তরফ থেকে, আমাদের সবার তরফ থেকে শ্রুতি ওনার গলায়। হ্যাঁ, দিদির জন্য একটা রইলো, তাহলে দিদিকে দেয়া হবে, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে দেয়া হবে। এটা আপনি নিন, এটা আপনি নিন, আমরা দিদির জন্য পাঠাবো। পুষ্পস্তবকে ওনাকে সম্মানিত করছে। আজকে বিশেষ ভাষা দিবসও সবাইকে অভিনন্দন জানাই। আর একটু প্রসাদ, এটা ভিক্টর নিয়ে নাও, পরে দিদির কাছ থেকে নিয়ে নিও, দিদির হাত থেকে নিয়ে নাও। আমি দিদিকে অনুরোধ করব যে দিদি যদি আমাদের এই আনন্দ অনুষ্ঠান সম্পর্কে দু কথা বলেন। দিদিকে এটাও অনুরোধ করব যে দিদি যেন যে জন্য এসেছেন এই জায়গাটি ঘুরে দেখেন, এবং শিল ভক্তি সিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর প্রভুপাদ মহাশয়ের অনেক আশীর্বাদ আপনি গ্রহণ করুন। হরে কৃষ্ণ। हरे कृष्णा। सभी को बहुत बहुत नमस्ते और प्रणाम। यहाँ आज उपस्थित सन्यासीगण, उपस्थित आचार्यगण, और ये इस नई जगह में, इस मठ की इस नई जगह में उपस्थित छत पे भी बैठे आचार्यगण, और आज ये हाइब्रिड मोड में सारे पृथ्वी में बैठे इस्कॉन के सदस्य, आचार्यगण, सन्यासीगण और गौड़िया मठ के भी सन्यासीगण, सभी कोई इस अनुष्ठान को देख रहे हैं। सभी को मैं नमन करती हूँ, प्रणाम करती हूँ। आज के दिन मेरे लिए गौरव की एक बात है कि मुझे ये मौका मिला, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री श्रीमती ममता बनर्जी को आपने आमंत्रण किया और उन्होंने आपको जानकारी दी कि उनके होते हुए उनकी प्रतिनिधित्व मैं करूंगी। ये मेरे लिए बहुत सम्मान वाली बात है। दूसरी बात यह है कि उनके तरफ से आप सभी को शुभकामनाएं, बहुत बहुत शुभकामनाएं, और उनको भी ये गर्व महसूस होता है कि आज पश्चिम बंगाल में इस शहर कलकत्ता में, अर्थात 1918 साल में ये जो जगह थी, ये पुण्य जगह, ये पुण्य स्थिति को आज इस जगह को एक बड़ी तादाद में रिपेयर रेनोवेशन द्वारा एक बड़ी मठ जो बन गई है, ये कलकत्ता के लिए भी गौरव है। सिर्फ केवल कलकत्ता के लिए नहीं, सारे भारतवर्ष के लिए है, सारे इस्कॉन के भक्तों के लिए है, भारतवर्ष के बाहर इस जगत में सभी भक्तों के लिए। तो अगर जब ये हम लोग देखते हैं कि कलकत्ता में अवस्थित है, ये हम लोग को बहुत सम्मान देता है। पश्चिम बंगाल की सम्मान और बढ़ती है, और हम लोग को कहते हुए भी हर्ष होता है कि गौड़िया मठ की जो हेडक्वार्टर्स है वो यहाँ से ज्यादा दूर नहीं, बाग बाजार में है। तो वो भी मान लीजिए गौड़िया मठ की हेडक्वार्टर्स आज कलकत्ता में है, उत्तर कोलकाता में स्थित है। सारे भारतवर्ष के बाहर से भी और भारतवर्ष के लोग आज ये उनको ये अनुभूति, अर्थात यहाँ इस जगह दो महान गुरु की जो एक उनकी मीटिंग हुई और उस मीटिंग द्वारा स्थापना हुई, और जिस तरीके के गुरु महाराज के आशीर्वाद को लेते हुए कृष्ण कॉन्शियसनेस इसको बढ़ाना है, कृष्ण भक्ति को बढ़ाना है, भगवत गीता की
कथा जो है इसको बढ़ाना है। देखिए मैं तो उतनी महान नहीं हूं या उतनी बड़ी भी नहीं हूं, हम लोग को अभी बहुत समझने के लिए वक्त लगेगा, लेकिन इतना थोड़ी थोड़ी समझ में यह है कि भगवत गीता की जो फिलोसॉफी है, विच टेल्स यू अबाउट प्रवृत्ति एंड निवृत्ति, अर्थात आगे भी बढ़ना है और अपने को सुधार के आगे बढ़ना है। प्रवृत्ति इज द पाथ ऑफ टुगेदरनेस एंड progress, but at the same time you need to progress in your own personality, your own conscious also has to be progress. So we have to reflect inside and we have to work outside. भगवत गीता में ये जगह जो तैयार हुई है, philosophy, the two philosophies, the two ways of human life, the two pathways of human life, there is so much that we can acquire from Krishna consciousness. The universal brotherhood of man, গৌড়ীয় মঠেরও এই কথা। তাই আপনারা সকলেই সুস্থ থাকুন, ভালো থাকুন। আজকে বাংলায় বলি, হিন্দি বলি, ইংরেজি বলি, যাই বলি না কেন, আমাদের মনের ভাষা, what brings us together is our feeling of universal brotherhood. ভালো থাকবেন, সকলকে অনেক অনেক প্রণাম জানাই। হরি বল, হরে কৃষ্ণ 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 হরে হরে, हरे राम 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 हरे हरे। नमस्कार, धन्यवाद। আরেকবার মনে হয় জোরে করতালি দিলে ওনাকে আমরা অনেক সম্মান জানাতে পারবো। দিদিকে অনেক ধন্যবাদ। এবং দিদি এখন ছোট্ট করে একটা অনুষ্ঠান হবে, সবাই একটু হরে কৃষ্ণ মহামন্ত্র আমরা একটু বলবো। সেটা হচ্ছে আজকে ওনার হাত ধরে আমরা ঘরটা খুলছি, সেই জন্য দিদিকে অনুরোধ করব আপনারা যে যেখানে আছেন ওখানে দাঁড়িয়ে পড়তে পারেন, শুধু ইউ ক্যান জাস্ট স্ট্যান্ড আপ, নো নিড টু গো এনিওয়্যার, নো নিড টু গো এনিওয়্যার। She will just open the lock. Officially we will inaugurate this as a token of respect. So thank you Srimati Shashi Paja Mahashaya for coming. ওপরে কীর্তন হচ্ছে, ভক্তরা ওপরে কীর্তন করছেন এবং ওনার হাত ধরে আমাদের চাবি খুলছে এবং অফিশিয়ালি আমরা এখন উদ্বোধন করলাম। আমাদের আগের ভাষায় লেখা আছে উল্টো ডিঙ্গি, আগে ওটা উল্টো ডিঙ্গি নাকি লেখা ছিল, শঙ্খধ্বনির মাধ্যমে প্রমাণিত হলো যে সব শুভ কার্য সুসম্পন্ন হচ্ছে। মায়েরা যদি উলুধ্বনি দিতে চান জোরে দিন উলুধ্বনি, আর প্রভুরা সবাই বলুন হরি বল হরি বল। আমরা ওনার পেছনে কেউ যাব না, we won't go and follow her, let her see the place very nicely. Others can please sit down in your places after she opens the lock. Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram 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 Hare Hare। এটা একটা স্মরণীয় ঘটনা, আনন্দ উৎসব, যে উৎসবে সবাই আমরা একত্রিত হয়েছি, সাক্ষী রইলাম যে 100 বছর আগে যে দেখা হয়েছিল তার ফলস্বরূপ এই নাম যেন সারা বিশ্বে প্রচারিত হয়। মায়াপুর থেকে বৃন্দাবন, যার ভাষা এবং প্রেম নিয়ে যে ব্যক্তি গেছিলেন, তার প্রথম সাক্ষাৎ তার গুরুদেবের সঙ্গে এই বিল্ডিং এ, এই ছাদে হয়। এখানকার বাসিন্দাদেরকেও আপনারা অভিবাদন জানাই যে আপনাদের অনেক সৌভাগ্য যে এমন স্থানে আপনাদের বাড়ি রয়েছে যেখানে কৃষ্ণ আপনার প্রতিবেশী। তো সেই জন্য আরেকবার সবাই মিলে আমরা হরে কৃষ্ণ মহামন্ত্র বলবো, হরে কৃষ্ণ 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 হরে হরে, হরে রাম 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 হরে হরে। উদ্বোধন করছেন শ্রীমতী শশী পাঁজা, শ্রীমতী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রতিনিধি হিসেবে তিনি এসেছেন। দিদি নিজেও এসেছেন আশীর্বাদ নেবার জন্য। আমরা ওনার জন্য প্রার্থনা করব যে ওনার হাতে আরো সুন্দর সুন্দর ভগবতমুখী সুন্দর কার্য সুসম্পন্ন হোক। তালাটি নতুনই, কিন্তু খুলতে একটু দেরি হচ্ছে বোধহয়।
কিন্তু আমরা সবাই আরেকবার হরিধ্বনির মাধ্যমে ধন্যবাদ দেব দিদিকে। হরে কৃষ্ণা কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে, হরে রাম 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 হরে হরে। We won't go inside. We will request all the Vaishnavas, please be seated. We are here to hear a lot of more glorification of Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur and this one Ultadanga Junction Road. May I request all the designated Vaishnavas and Vaishnavis, Prabhupada disciples, sannyasis and Maharajas, please come back. We need your presence. Adjusting yourself and coming and being with us. We have devotees coming from different parts of the world and from Shimayapur, Vrindavan, many other places. আপনাদেরকে সবাইকে অনুরোধ করব যে আপনারা সবাই আবার চলে আসুন। Over to Padmamukha Nimai Prabhu. Thank you. Please be seated. আর ছাদে যাদের সেবা নেই তাদেরকে অনুরোধ করব সামনে চলে আসতে। Hare Krishna. We request all the devotees to kindly be seated. We continue with our glorification session. Absolute is sentient, thou has proved. Impersonal calamity, thou has moved. This gives us life, anew and fresh. Worship thy feet, your divine grace. So this is the place from where his divine grace, Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur, started to prove that absolute is sentient. And this is the very place from where he started his journey to remove impersonal calamity from this planet Earth. So we are very happy to be in this place on this auspicious, memorable event of inaugurating this wonderful place, the birthplace of preaching mission. And now we request His Grace Gauranga Prabhu to kindly come and glorify and elaborate the historical significance of this very event and place. Hare Krishna. We request His Grace Gauranga Prabhu. So we request His Grace Gauranga Prabhu to kindly come forward and bless us. Hare Krishna. So, on the occasion of the opening of this new museum at 1 Ultadanga Junction Road, I am feeling extremely overwhelmed with emotion, feelings of gratitude to the entire team of devotees who were involved for last 3 to 4 years to make this dream come true. So, first of all, I would like to thank His Grace Anangamohan Prabhu and Radharaman Prabhu for leading this under Dayaram Prabhu, and also to His Holiness Radhanath Swami Maharaj and Jayapatak Maharaj and Bhakti Charu Maharaj and Bhakti Purushottam Maharaj as the GBCs who were fully behind this project, because once you see this in such a beautifully finished, condition, it will be difficult for anyone to imagine the challenges which we have gone through in this journey. So, first of all, we have to acknowledge the tireless efforts put by this team of devotees. And let us acknowledge by chanting the Hare Krishna Mahamantra. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Secondly, on behalf of ISKCON Chopati, I would like to acknowledge the contributions of His Grace Krishna Chandra Prabhu, Mr. Rishikesh Mafatlal, and Mr. Kushal Desai, Keshav Prabhu,
who have been very generous in contributing on behalf of ISKCON Chopati, because we requested them, and so they were not able to be present for today's function. So I wish to acknowledge that they are the main contributors on behalf of ISKCON Chopati. His Grace Sundar Gopal Prabhu from BRC, who's sitting right here in front, can stand up. So I would like request Anang Mohan Prabhu to give him a gift. Haribo! He has researched tirelessly and he was trying hard to keep pace with Radha Raman Prabhu's speed in the last 1 month to supply all the information from the history of Gaudiya Math and this particular building. And there is a nice print which has been placed right in the first room, which you will be able to see. And I'm just going to read from that in 1918, the preaching was established first from here, but Srila Saraswati Thakur was trying to search for a good place and he liked this location. And he settled down with Grihasthas in the ground floor, 4 rooms, and on top 2 rooms he was staying. And as soon as he came there, the preaching began in 1918, and the Bhaktivinode ASAN was established at a rent of 50 rupees per month. Then in 1919, following in the footsteps of Srila Jiva Goswami Pad, who wrote in his will the creation of the Vishwa Vaishnava Rajya Sabha, Srila Saraswati Thakur renewed that effort and established the Vishwa Vaishnava Rajya Sabha to bring all the Vaishnava schools together. And this was established here in 1919 on the appearance day of Srimati Vishnupriya Devi. 1920 was a very historic year because that is the year when the Grihasthas moved out from here and all the monks, they moved in. And at that time, Srila Saraswati Thakur in 1920 officially established the Gaudiya Math. Along with that, he also began the first Navadvip Mandal Parikrama in 1920 and also established the deities. And the name of the deities, I believe, is Gandharvika Giridhari deities. They were all established in 1920. And in 1921, very interestingly, electricity came here for the first time. So in 1921, electricity came, and in 1922, the Gaudiya Journal was inaugurated from here. And interestingly, all of us are here to acknowledge the most historic event which happened in 1922 when Srila Saraswati Thakur met Shri Abhay Charan De, later His Divine Grace Srila Prabhupada, and gave the historic instruction. In 1923, a few yards from here, the Gaudiya printing press, the Gaudiya printing works was established, which Saraswati Thakur calls as Brihat Mridanga. So that was just a few yards somewhere in this area only. And in 1924, Srila Saraswati Thakur was 50 years of age, and on his 50th appearance day in February of 1924, the first Vyas Puja of Srila Saraswati Thakur was held right here, and pictures of that are also there in the museum inside. In 1924 also, the Shastric training for the Gaudiya Math monks and the Grihasthas was established here for the Bhakti Shastri, and he called it as the Saraswat Asana, and that also was from here. In 1925, Srila Saraswati Thakur, after having established the Navadvip Mandal Parikrama for a few years, wanted to expand the scope of the Parikrama and established in 1925 the first Gaur Mandal Parikrama, which include all the Shripats of Mahaprabhu. And in April of 1925, the very famous leader and freedom fighter at that time and a great scholar, and also when I visited Vrindavan, I came to know that he has very deep Vrindavan and Braj connections, and I visited a large parcel of land which he owned in Vrindavan at that time, that is Sri Madan Mohan Malviya ji.
And the famous anecdotal story is there when he came to meet Saraswati Thakur and asked him about how to, understand the Vedic literatures. Saraswati Thakur said that I'm busy, but right now you know, assist that devotee who is, washing the deity's paraphernalia. And then when Madan Mohan Malviya went and assisted in that seva, and when he returned back, he said that looks like my doubts are cleared. And Saraswati Thakur quoted one of his most often quoted verses that Sevon Mukhai Jivado Swayameva Spuratyada. So Sri Madan Mohan Malviya visited here. In 1926, he published the book Vaishnavism Real and Apparent from here, this very place. And in 1927, a lecture was organized on Lord Sri Chaitanya Mahaprabhu at Kolkata University. And also in June of 1927, the famous fortnightly magazine or the journal Harmonist was published right from here. Srila Saraswati Thakur was also very, very broad-minded in connecting with various other organizations of other traditions and other religions also. So he reached out to the professor in St. Xavier's College, and Father Jones, who was a professor in philosophy, visited here in 1928. In 1928 September, when Saraswati Thakur was staying here, they could see that the Gaudiya Math is growing, and seeing the expansion of Gaudiya Math, the land for Bagh Bazar Gaudiya Math was purchased. In 1929, 21st April, the construction of the Bagh Bazar Gaudiya Math actually began, and on 5th October 1930, Srila Saraswati Thakur, along with the residents here and the deities, shifted from here to the Bagh Bazar Gaudiya Math. And interestingly, Sundar Gopal Prabhu just shared a very interesting piece of information yesterday evening with me, and he showed the actual advertisement in the Gaudiya magazine about the day of inauguration. The mayor of Kolkata, he was the chief guest for the Bagh Bazar Gaudiya Math on that October 5th, 1930 event. And the mayor of Kolkata at that time was Netaji Subhash Chandra Bose. So he was presiding over the function when the Bagh Bazar Gaudiya Math was established. And this entire journey of 1918 to 1930 has been extremely historic. And for especially devotees of ISKCON, it is the place where the seed or the conception of ISKCON was established in the hearts of His Divine Grace Srila Prabhupada. And we are eternally grateful to our Guru Parampara for giving all of us opportunity. Although we are from India, we have grown up in India, we know about Krishna, we heard about Krishna and all, but we never had any idea about Lord Chaitanya or Mayapur or Navadvip or any of the deeper aspects of Vedic philosophy. If Srila Prabhupada had not gone all over the world and established Krishna consciousness in the English language, it would not have been possible for many, many educated Indians also to connect with our own Vedic tradition. So for us, this place is very, very highly revered and worshipable, and we are grateful to the ISKCON, Kolkata, GBCs, the leaders, and all the donors who have made all of the devotees of all the Gaudiya family and the Vaishnava Parampara come true by creating a brilliant museum here, which will always be a holy place of pilgrimage for us to offer our gratitude and respects. Thank you all very much. Hare Krishna. We really thank His Grace Gauranga Prabhu for wonderfully and brilliantly bring the history in front of us. Srila Prabhupada, Srila Abhay Charanaravinda Bhaktivedanta Swami Prabhupada, তিনি Srila Bhakti Siddhanta Saraswati ঠাকুর তার আবির্ভাব তিথিতে লিখেছিলেন। তিনি ইংরেজিতে লিখেছিলেন, বাংলায় অনুবাদ করা হয়েছে। ভকতির বাণী পৃথিবীতে আনি, জীবে দয়া হলো সারা, সব অবতার সার শিরোমণি,
গৌর প্রভুর ধারা। যে বাণী সবার অজ্ঞাত ছিল, তোমারও আশিসে আজ জগৎ মাঝারে বর্ষিত হলো গুরুদেব মহারাজ। তো এই বাণী অজ্ঞাত ছিল, শ্রীল ভক্তি সিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর সিংহগুরু তার আশিসে এই স্থান থেকে জগৎ মাঝারে বর্ষিত হওয়া শুরু হলো। আজকে আবারও এই ঐতিহাসিক স্মরণীয় উৎসবে এখান থেকে আবারও সেই জগৎ মাঝারে বর্ষিত হওয়ার কার্য শুরু হচ্ছে। So now we would like to request His Grace Sankarshan Nitai Prabhu to kindly come forward and bless us with the glories of this historical place and this event. Hare Krishna. Hare Krishna. Namo Vishnupadaya Krishna Prasthaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swaminiti Namine Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Sunnavadi Paschatya Desatarine Namo Vishnupadaya Krishna Prasthaya Bhutale Srimate Bhakti Siddhanta Saraswati Thakuriti Namine Vancha Kalpatarubhasya Kripa Sindhubhayevasya Patitanang Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. जय श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर श्रील प्रभुपाद की जय। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर आविर्भाव तिथि व्यास पूजा महा महोत्सव की जय। So we are going through a very historical time now. What happened 100 years before, now we are going through another history. So history is repeating, and we feel very proud and grateful to be part of that history. And the history began here and continuing also. So this history started in the year 1922, and I like this to repeat whenever I talk about Srila Prabhupada. And he got the instruction here in 1922 to spread the message of Lord Chaitanya Mahaprabhu all over the world. And that time, Abhay Charan De was very much focused also how to make India politically independent. So he was giving an argument to Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Prabhupada that how the message from India will be taken seriously, because India is under British rule. So it is the first duty for the Indians to make India independent. And it was a brilliant argument, because Abhay Charan De was a brilliant person. And he was from Scottish Church College, educated man, and giving a very wonderful argument, apparently against the idea of spreading the message of Lord Chaitanya all over the world. Then Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur Prabhupada told that Krishna consciousness, spreading the message of Lord Chaitanya Mahaprabhu, cannot depend on any political situation. So political situation is going to change, but principle of devotional service are eternal. So spreading the message of Lord Chaitanya cannot wait for the independence of India. And in that way, Abhay Charan De was defeated. And he said that, I think he said, for the first time I was defeated. And amazing thing that he felt that I was not feeling sad that I was defeated. And I was very happy to be defeated. And I accepted in my heart that this personality is my spiritual master.
So that is the qualification of a disciple, that disciple should feel happy to be defeated by a spiritual master. That is the mood a disciple should cultivate. And Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur, his position is also very unique. His father, Bhaktivinodde Thakur, was a highly educated person, highly accomplished person. He was a deputy magistrate in the British rule, and that was the highest position an Indian can get in the British rule. And Bhaktivinodde Thakur told his son, Bimala Prasad, to take initiation from Gaur-Kishore Das Babaji Maharaj. And Gaur-Kishore Das Babaji Maharaj, from material point of view, was illiterate. This is a very unique combination. And Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur Prabhupada also gave up his study, although he was a brilliant student. Why? Because he thought, if I become very educated, there will be social pressure to get married. So, Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur Prabhupada didn't want to marry. He wanted to be a celibate monk. So that's why he gave up the studies. I am not recommending for present generation to do that, but that was his brilliant idea. He was an extremely brilliant person, but he got initiation from Gaur-Kishore Das Babaji Maharaj. So this unique combination is very, very important. And that personality gave the instruction to Abhay Charande in 1922. So Gaurang Prabhu was telling some time history, so I will give some 11-year slot, although Devakiran Prabhu told, this is my favorite. So in 1922, Abhay Charande got the instruction, but he got initiated in the year 1933, 11 years. Then in 1944, he published Back to Godhead magazine, because Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur Prabhupada told Abhay Charan to preach in English-speaking language to the Western world. That was the instruction. So he published Back to Godhead magazine in 1944. So another 11 years slot. Then he retired from his family life and settled in Vrindavan in 1955. So another 11 years slot. Then he established the International Society for Krishna Consciousness in New York City, America, in the year 1966. That was also another 11 years. And he spread the message of Lord Chaitanya all over the world tirelessly. And he left this world in the year 1977 in Vrindavan Dham. That is also another 11 years time slot. So 11 years is very, very important for us. So he could preach Krishna consciousness in 11 years all over the world. And the message we get from this building is that in order to preach Krishna consciousness, we have to be united. Kali Yuga is a Yuga of disunity. Somehow that unity has to be maintained, but that is the greatest challenge, to have unity. And Srila Prabhupada told us also that if you want to show your love, then please cooperate and stay together. So staying together, I think, is most austere thing. And Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur Prabhupada also gave the same message, that you should stay united. So this building is not a building. This is the place where this Krishna consciousness preaching movement was established. And from this building, it got spread all over the world. But in order to continue the legacy, the greatest challenge we have to face, or we have to take the instruction of Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur Prabhupada and Abhay Charan Aravinda Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada, that we should stay united. I think this building
this historical building, this spiritual building, this spiritual place of pilgrimage can play that significant and important role to unite not only ISKCON, it can unite all the Gauriya mutts and all the devotees, those who are preaching the message of Lord Chaitanya Mahaprabhu all over the world. So from my heart, I like to thank His Grace Anugam Mohan Prabhu, His Grace Adharaman Prabhu, His Grace Dayaram Prabhu, and all the leaders of ISKCON India, ISKCON Kolkata, and also the different Yatra leaders of ISKCON India and ISKCON World, who have helped this project, tirelessly worked for this project, which will be the project for uniting our Gauriya mission, Gauriya movement all over the world. Thank you very much. Hare Krishna. Srila Prabhupada ki jai. Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur Prabhupada ki jai. Gaur Premanande. Hari Hari Bol. Thank you very much, His Grace Sankarshan Nitai Prabhu. Had you not come, who had told the message of Krishna, forceful and bold? That's your right, you have the maze. Save me a fallen, your divine grace. So this is the place, once again from this place, we are receiving that divine maze from His divine grace to forcefully and boldly preach the message of Godhead all over the world. So now we would like to request His Grace Narugopal Prabhu to kindly come forward and bless us and glorify this wonderful historical memorable event. The chairman of EIDC, His Grace Narugopal Prabhu, is coming and going to bless us. Vancha kalpatarubhyascha kripa sindhu bhayavcha patitanam pavanebhyo vaishnavebhyo namo namaha. It's an honor and pilgrim to be here. It's so humbling to enter the same building. It's a place of worship for the entire Gauriya Vaishnavism. So much preparation was done before Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur came here, chanting for almost 4 years, 1 billion names. After Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur established few Gauriya mutts, one very influential person approached Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur. He said that these Gauriya mutts are so nice. You should build temples in all the cities of the world. Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur responded, my real business is to establish temple in the hearts of all the people of this world. In Bombay, Prabhupada said that he wanted thousands and thousands of temples in the Bombay city itself. It meaning that not only externally Prabhupada wanted to establish temples through which Krishna consciousness will be spread. Prabhupada wanted temples in every home. Prabhupada wanted temples in all the members' hearts. And that inspiration, it all began here. And somehow or other I'm seeing a very auspicious beginning. Some historical temples where Mahaprabhu has performed his pastimes, some of the intimate associates that have appeared with Mahaprabhu, those places are now looked after by ISKCON. In Bangladesh and in India. And now we see this place. So we have a great responsibility. But overall, if we really want to offer our respects to Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur and Srila Prabhupada,
we can dedicate our life to fulfilling this mission that Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur and Srila Prabhupada wanted to establish temples in everyone's heart. So we seek blessings from Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur and Srila Prabhupada, so all of us can play some part in their desire. I offer my respects to Radharaman Prabhu, Anangamohan Prabhu, and all the devotees who participated in manifesting this amazing place. Unbelievable that when a ISKCON devotee will walk in here, you'll actually feel so happy that we have this place, something that we could not even think before. So thank you for your wonderful service. Hare Krishna. Thanks a lot to His Grace Narugopal Prabhu. Now we would like to request next His Grace Hridaya Chaitanya Prabhu to kindly come and bless us. Oh my Master, the evangelic angel, give us thy light, lit up thy candle. Struggle for existence, a human race, the only hope, His divine grace. So once again we are going to receive the light, the candle from this very place. So we request His Grace Hridaya Chaitanya Prabhu to kindly bless us. Om Agyanatimarandasya Gnana Salakaya Chakshurunmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha. Srila Bhaktivinoda Thakur was praying to have a son that would spread the mission of Lord Chaitanya Mahaprabhu. And Srila Bhakti Siddhanta Goswami appeared then in 1874 on the 8th of February. So we are now 148 years later. So Srila Bhakti Siddhanta Goswami became the Gaudiya Vaishnava Acharya and Guru, Lion Guru, who would roar if he heard impersonal philosophy. Sri Bhaktisiddhanta Saraswati Goswami was a very outstanding personality who rendered many special services. Before spreading the mission abroad, he empowered himself by chanting 7 years, for 7 years, 194 rounds of Mahamantra. And then after this vrata, then he established the printing press. And then in 1914, Srila Bhaktivinoda Thakur, his father, left this world. And then 1 year later, his spiritual master left this world, Sri Gaurkishore Das Babaji Maharaj. And then 3 years later, he took sannyas. And as soon as he took up sannyas, then he wanted to expand his preaching. And when he was in Kolkata, one day they were walking, and one of his followers pointed out to this building, this Ultadanga building. And Sri Bhaktisiddhanta agreed to rent it for the price of 50 rupees per month. And as we have heard, many important events have been happening here, as mentioned by Gauranga Prabhu and also Sankarsanitai Prabhu. Many events happened here,
his main area of preaching was established here. Many important personalities were received here. And of course, for us ISKCON devotees, 1922 was an outstanding year, where Srila Prabhupada, as soon as he went up the roof, and Srila Bhakti Siddhanta was already giving the class, and he and his friend, because Srila Prabhupada was pushed to come to this place. He didn't want to come by himself, because he was used to hear sadhus and have visits of sadhus in his house. But until now, he had not been impressed. But his friend told him, no, this is a real sadhu. And he pushed him to come to this place in 1922. And then as soon as he gave his obeisances, before he couldn't even come up and sit down, then Srila Bhakti Siddhanta interrupted the class and gave this instruction, which was then the basis of our International Society of Krishna Consciousness. So this is indeed a very important place, besides all the other events, is a place of worship for us. And it is also, besides the history, it is also a place which can bring ISKCON and Gaudiya Math together, because we all have the same grandfather or great-grandfather. So Bhakti Siddhanta is our great-grandfather or our grandfather for all of us, and also for the Gaudiya Math. In this sense, it can bring all of us together at the lotus feet of Srila Bhakti Siddhanta. So, special thanks to all those devotees who have been instrumental. Special thanks to the GBCs, His Holiness Jayapataka Swami, His Holiness Radhana Swami, His Holiness Bhakti Purushottam Swami, and of course, His Holiness Bhakti Charu Swami. Special thanks to them, and especially in this case of the Ultadanga project, special thanks to His Holiness Radhanath Swami, because he has been pushing hard for this, and he has been inspiring Radharaman Prabhu and his team to really make this temple happen and to really restore it in an original place. In my service in ISKCON, I have had a lot to do with buildings, and by seeing this building, I must say that I'm very, very impressed, because it's so well done. The construction is so first class. So thanks to all those devotees and thanks to all the donors for making this happen. Srila Prabhupada ki jai, Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Goswami Maharaj ki jai. Thanks a lot to His Grace Hridaya Chaitanya Prabhu. So I know all of us have been fasting since morning. So it's just 12 o'clock. We have Mahaprasadam there after some time. So we need some energy. So we are going to request His Grace Brajavilas Prabhu to kindly come and glorify His Divine Grace, Srila Saraswati Thakur. नमो ओम विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी निति नामिने नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे अजानुलंबितौ भुजौ खनकावदातु संकीर्तन के पितरो कमलाय दाक्षो विश्वंबरो द्विजबरो युगधर्म पालो वंदे जगत प्रियकरो करुणावतारो करुणावतारो करुणावतारो. Hare Krishna.
First of all, I would like to take the blessings of Bhakti Purushottam Maharaj, Devaki Nandan Prabhu, Hriday Chaitanya Prabhu, Jananivas Prabhu, my good friend Sankarshan Nitai Prabhu, and all the assembled Vaishnavas here, so that I can speak a few words. When I was coming, when I met Bhakti Purushottam Maharaj, he told me that there will be a bomb here when I speak. He is right. The Hare Krishna explosion started from this very place and it spread till now. We have 700 centers all over the world. From this very place that explosion started. It's called Hare Krishna explosion. You can clap a little bit louder also. I wanted to say the dialogue which happened here, but my friend Sankarshan Nitai Prabhu had said it, but anyway I'm going to say it. When Srila Prabhupada met Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur Prabhupada, Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur Prabhupada told our Srila Prabhupada, you are an educated young man. Why don't you take this message of Lord Chaitanya Mahaprabhu and spread it all over the world? Srila Prabhupada said, who will listen? Who will listen? And who will listen to Lord Chaitanya Mahaprabhu's message? When we are a dependent country, we have to first get independent first. Then this Indian culture, how this Indian culture will be spread when we are under British rule? To which Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur Prabhupada said that Krishna consciousness doesn't depend on who is in power or who ruled. Krishna consciousness is exclusively important that it cannot wait. It cannot wait. Then he said, whether one is in power or somebody else ruled, it is a temporary situation. It's a temporary situation. But Krishna consciousness is an eternal reality. An eternal reality. And the real self is the spirit soul. And he said, everyone is the servant of the Supreme Personality of Godhead. And the real welfare which one can do is to help somebody prepare for his next life. And re-establish his relationship with the Supreme Personality of Godhead. The final thing which he says, there has not been and there will not be anyone who is the highest benefactor of the greatest merit like Chaitanya Mahaprabhu and his followers. Whatever benefit which the Chaitanya Mahaprabhu and his follower does, it is an eternal benefit for everybody. Eternal benefit. We are seeing the eternal benefit. Our founder Acharya, His Divine Grace, A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada, took this message, preached all over the world, and he has given us instructions. We have to build the largest temple in Sridham, Mayapur. That would be the greatest explosion in the history of Gaudiya Vaishnavism. Greatest explosion. We wanted to open this temple in 2022. Now I can understand why there was a pandemic.
There was a pandemic because we couldn't open this Moolastan, Adi Peterstan has to be opened. Then we can open the Temple of Vedic Planetarium. Today I've realized this was the reason that we couldn't open. But from this stage, I pray, and I want all of you to pray, so that we can take this sankalpa today. And I pray to Shri His Holiness Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur Prabhupada very sincerely, and from the chairman Ambarish Prabhu also, that to shower his blessings so that we can open this temple in 2024. The next 2 years, we will dedicate and do whatever possible to open this temple in 2024. And I also wanted to take this opportunity to launch a campaign called TOVP Marathon. TOVP Marathon. In this, there is a race to finish this temple. We run, you win. We run, you win. We run, you win. You support us, we run the race, you will win the race. The temple will be built. That is the highest perfection of all the devotees in the International Society for Krishna Consciousness. So, I have bought a medallion for that race. And now I'm going to call Devakinandan Prabhu on stage and call Radharaman Prabhu, who is instrumental in this race to complete this temple on time. So I wanted to offer this medallion to Radharaman Prabhu. Is here, Radharaman Prabhu is here? I want Radharaman Prabhu to come. This is a very important event of honoring who has sacrificed. Doesn't matter, call him. He has to come here right now. This is the medallion which we have done. It says Pashata Desha Tarine 1922 to 2022. A beautiful medallion which we wanted to offer to Radharaman Prabhu, who has sacrificed to build this place. Devakinandan Prabhu would offer this medallion. Somebody on his behalf, probably he can come. Somebody can I bring him up? Please. And the next one. The next one. Next one. The next medallion. We wanted to offer this medallion to Anandamohan Prabhu, who also equivalent to Radharaman Prabhu in spirits, has dedicated and sacrificed to develop this place. We wanted to call Anandamohan Prabhu on stage, and Devakinandan Prabhu would give this to Anandamohan Prabhu. Looks like nobody wants, only I have to keep it. If nobody wants, I have to honor Devakinandan Prabhu. Please come on stage. Please bring Radharaman Prabhu. It is very important. We honor all these devotees who have sacrificed, appreciation to all those devotees who have given their life. If anything has to be kept alive in our life, is the Sankirtan movement. And these devotees are keeping that alive by renovating this place. Is Radharaman Prabhu coming? We want Radharaman Prabhu to come. Is there any third person who is there, or is now only you two of you? So, yeah, okay, give me one. I have plenty. So,
The third one, who will get on behalf of Dayaram Prabhu? Vallabh Chaitanya Prabhu, where is he? Who will take on behalf of Dayaram Prabhu? Acharya Ratna Prabhu, you can come. अरे जल्दी आओ भैया. हम अच्छा ही बनाते हैं. Yeah. Yes. Then we have to give it to Radharaman Prabhu, then you can. Yeah, we'll go there up then. Is Radharaman Prabhu coming? 2 minutes. Just now coming, 2 minutes. Okay. So we are very, very grateful and thankful to all the devotees who have participated, who have sacrificed, who given their life to keep this mission alive. Radharaman Prabhu. Yeah. Please give a big hands. Let us have a standing ovation. Please give a big hands. Radharaman Prabhu, the man of the day. Please come on stage. We are giving a surprise medal to Radharaman Prabhu. Yeah. Hari Bol. This is a special gift from Ambarish Prabhu and from the Temple of Vedic Planetarium. So glorification and appreciation is a part of our lives, and we are very, very grateful to you, Prabhu, for doing this. Yeah. Hari Bol. So once again, thank you all so very much. Hare Krishna. Hare Krishna. Nobody can sleep when our beloved Brajvilas Prabhu speaks. So you can see the power of serving Krishna, especially fundraising. So nobody can sleep. You have to give something. So really we are very thankful to Brajvilas Prabhu for his kind-heartedness, for engaging everyone in service of Radha Madhavji and Srila Prabhupada. Thank you, Brajvilas Prabhu. May you live 100 years. This is 100 years, be 100 years. Thanks a lot, His Grace Brajavilas Prabhu. So now we would like to request His Grace Atul Krishna Prabhu to kindly come forward and bless us. Atul Krishna Prabhu, please come. Atul Krishna Prabhu being very kind towards Calcutta Yatra, all our ISKCON temples in Calcutta gets his help. And then Krishnananda Prabhu, I will introduce you a little bit later. Vanchakapatruvyascha kripasindhubheva chapaditanam pavaneva vaishnaveva namo namaha. Namo Om Vishnu Padaya Krishna Prasthaya Bhutale Srimati Bhaktivedanta Swami Iti Namane. Namaste Saraswati Deve Gaudavani Pracharine Nirvishesha Shannavari Pashatha Deshatarane. Namo Om Vishnu Padaya Krishna Prasthaya Bhutale Srimati Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur Iti Namane. In the concluding words
to the Sri Chaitanya Charitamrita, His Divine Grace, Srila Prabhupada, he remembers this meeting with Siddhanta Saraswati Thakur in 1922, and he writes about it personally. He's explaining, we have now finished our translation of Srila Krishnadas Kaviraj Goswami's Sri Chaitanya Charitamrita in accordance with the authorized order of His Divine Grace Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur Goswami Maharaj, my beloved eternal spiritual master, guide and friend. And then Prabhupada writes quite elaborately. I'll just share a couple of things that he says about this meeting. He mentions he wasn't exactly sure of the date. He mentioned he was brought here. He mentions, Srila Prabhupada writes, Srila Prabhupada had come to Kolkata from Sridham Mayapur to start the missionary activities of the Gaudiya Math. He was sitting in a house at Ultadanga when, through the inducement of an intimate friend, the late Sriman Narendranath Malik, I had the opportunity to meet His Divine Grace for the first time. Fortunately, even in our first meeting, His Divine Grace advised me to preach the cult of Sri Chaitanya Mahaprabhu in English in the Western countries. It is significant that Prabhupada personally reflected on this meeting with Siddhanta Saraswati Thakur and the order that he received to preach the Gaudavani in English all over the world. And then Srila Prabhupada goes on to write, in his leisure time, in later life, His Divine Grace Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur would simply read Sri Chaitanya Charitamrita. It was his favorite book. He used to say there would be a time when foreigners would learn the Bengali language to read Sri Chaitanya Charitamrita. So on this special occasion, I desire to read some verses from Sri Chaitanya Charitamrita to fulfill the words of the great Acharya Siddhanta Saraswati Thakur. I'll read some verses from the final section of Sri Chaitanya Charitamrita. I'm reading from the Bengali text. Sri Krishna Chaitanya, Sri Juta Nityananda, Sri Advaita Acharya, Sri Gauda Bhakta Vrinda, Sri Sarup, Sri Rup, Sri Sanatan, Sri Guru, Sri Raghunath, Sri Jivacharan, Nija Sharid Dhari, Shabai Charan, Shabai Charan, the Lord, the dust of the feet of all of these great acharyas. Nija Shire Dhari, I take on my head. Jaha hoite hoy shab banchito puran. By taking the dust of the lotus feet of these great acharyas on one's head, all of one's desires are fulfilled. This, as we've heard, place is the seed of the revolution of the Krishna consciousness movement. This meeting, which happened 100 years ago at this place, had such a dramatic effect on my life, is having such a dramatic effect on the whole world. This is just the beginning. Srila Prabhupada ki Hare Krishna. Thank you. So indeed, hearing a Bengali Chaitanya Charitamrita apart from an Australian, so the prediction of Bhakti Siddhanta Thakur, we can see it has come true. May I request Krishnananda Prabhu? Krishnananda Prabhu is the person who first came to this place many years back, and this was about to be sold to some promoter, and he is from Padayatra, who said, and he informed all of us, our authorities, this place we need to take care.
So we are very happy that Prabhu is here. He will be the last person for speaking for this session, morning session. And we are very happy that Prabhu is here. Because of him, I think we should all say a big Haribol for him. He actually informed the ISKCON authorities and our devotees that this place we need to secure. Prabhu, you are here. Thank you so much. Please. हिंदी बोल बिकॉज माई इंग्लिश इज कटेड पुटेड फिर भी थोड़ा बहुत क्योंकि वेस्टर्न ड्यूटी है तो थोड़ा बहुत कुछ बोलना चाहूंगा एक्चुअली आई केम विथ पदयात्रा हियर एंड देन पदयात्रा स्टार्टेड बाय एक्चुअली प्रभुपाद ही बोले थे कि पदयात्रा चालू करो पूरे वर्ल्ड में सो टुडे सॉरी भक्ति सिद्धांत स्वरूप ठाकुर प्रभुपाद की श्रील भक्ति वेदांत स्वामी महाराज प्रभुपाद की गौर प्रेमानंदे। तो पदयात्रा इधर आया था when Padyatra came here, so we are searching in that time, in our searching time that we have Jhansi का जो place था और इलाहाबाद when Prabhupada took initiation, and this was the Ultadanga. So we are searching here where is the Ultadanga place in the Lilamrit. It was written this in Ultadanga, but Ultadanga is somewhere 2 kilometers from here. This is not Ultadanga. Actually, it's called like Gaudi Badi land. So this Gaudi Badi was a Gaudiya Badi. This was a Gaudi, but people now they are calling it a Gaudi Badi. So we asking here just nearby. We went there, Ultadanga, and then that time we are know anything. We don't know that. Just only in the Leelam of the book, and then we are searching where is that. So finally, one sannyasi of the Gaudiya Vaishnava, he told me that the temple is here, the place is here. And then we got that one book where the Bhakti Siddhant has procession in this area. But it's still that, that house was a similar house like that. If you see around here, there are many similar houses. So we are looking at that house and then maybe this, maybe this, maybe this. In this way it takes place maybe many days. And then in the Kolkata temple, nobody knows that time. So then we approached maybe Jayapataka Maharaj, he knows. So when we went, he told, I went this temple, I saw this, but it was 30 years before. In 2003, when we met him, it was 30 years before. He says, I don't know. Then one sannyasi, he showed this is the building when we came here. So this roof was not here. This roof, government ने जो encroachment में तोड़ दिया था ये. So how we know that this place is there? So there was hole. वो जो hole है वहाँ पे. So by hole we understand this is the place. And then one sannyasi told that this is the place. But then again to confirm, there was one lady disciple of Bhakti Siddhant Saraswati Thakur. Her name is Lalita Manjari. She was living here from here 2 kilometers from here. And then we brought her here. So when she came with the car here, so she told, oh, yeah, there is Bhakti Siddhant was living in the second floor. And then again I got, there is no second floor. Then again confused, maybe this is not building. But because from there we cannot see that part. And when she came, then she went with this staircase, and then she thought that this Bhakti Siddhant was staying here. And then we understood that this. And the main thing, many confused was there. But the main thing, when we came with that lady, with the Mataji, that Lalita Manjari, we saw here, although this roof was with the cement everywhere because the tenant was living, there was many tulsi flourishing, 30, 40 tulsi. Then we understand this is the place. And then one quotation I read of Bhakti Siddhant told that every spot where there is a holding of Srimad Bhagavatam or discourses of Krishna Katha or Vishnu Katha is called pilgrimage. So this is our spot where Bhakti Siddhant was giving the lecture. So ये पदयात्रा के थ्रू ही मैं इसको मतलब मेरी तो काबिलियत नहीं थी या मेरी ये नहीं थी, लेकिन Prabhupada himself told in TKG diary, if you read, Prabhupada told that it's a 5-6 line.
Prabhupada told to Tamal Krishna Maharaj, call the Gopal. Of course, the His Holiness Gopal Krishna Maharaj, call the Gopal. Then Tamal Krishna Maharaj told, why? The Prabhupada told, wherever I did my pastime, this place should be taken. ये place लेना चाहिए करके Prabhupada ऐसा बोले, and put my statue there. And then Tamal Krishna Maharaj बोले, your statue or footprint? Prabhupada, yeah, footprint also ऐसा. So it is written in that book. So from that time we are, तो हमारा ये एक बहुत बड़ा उल्टा डांगा का जो ये है प्रोजेक्ट, ये लेकिन ये सीन में जब हम लोग ले रहे थे, हम जब ये जो लेने के लिए आए तो हम लोग केवल देख के बस दर्शन करके जाने वाले थे. वी जस्ट केम एंड टू सी एंड टेक दर्शन इज सपोज टू गो. सो व्हाइल गोइंग हियर दैट लाइट, वहां पर एक बाल्टू प्रभु इधर बाल्टू करके एक लड़का रहता था, बाल्टू नेम इज देयर, मे बी ही हेल्प दैट. तो वहां पर हमने पूछे तो उसने हमको बताया, ही टोल्ड दैट this building is very soon going to demolish because the contractor has taken this building and then 90% was over, all the work was finished. When we heard this thing that ab kaisa karenge, we are that time new guy, no brain, actually no brain. And then he told that if it is belong to ISKCON, and then ISKCON has so much money, but it's all already sold. So we met that person who is the owner of this building. And we told that we want to take this place. What is? So he doesn't want to tell the secret. No, it's already finished. And they were sure that maybe in few days or maybe within a month it was supposed to be demolished. But Prabhupada has desired to take his place. So some or other Prabhupada brought this by Padyatra. And then we came and then we met this Prabhu. And then in those days, Bhakti Das Maharaj was writing on Bhakti Siddhant Saraswati documentary. So he told, when he met that in Kolkata, so he told, oh, you found that place, I want to go there. Because I had to write that place, something about the Ultadanga. Then we told, and then we found also one place of Kedarnath Datta house also here, where the, I think, Kurma Shaligram is there. If you go there in that place, the Kedarnath Datta old house, that place is still there. And in this, we find so many things, and one more thing is unknown while searching this place. Is a very 2-3 devotees know. We have heard that Prabhupada's old name is Abhay Charnarvinda. Abhay Charnar. But there where Prabhupada has given also this, there is a 2 Abhay Charnarvinda. In 1931, he has died. It is written in Siddhant Oshani. So this is, nobody knows that and nobody can believe there was 2 names. But Abhay Charnar, Prabhupada के पहले भी एक व्यक्ति का नाम भक्ति सिद्धांत दिए थे. It is written in Siddhant Oshani. So we have proof also. I will show you. So thank you. मैं सबसे पहले फिर भी इसमें एक ही चीज है कि ये पदयात्रा जो है लोकनाथ महाराज के आशीर्वाद से चल रहा है और मैं उन्हीं की कृपा से, मतलब हालांकि प्रभुपाद ही इसके पीछे सब प्रोग्राम किए हैं, लेकिन फिर भी उनके सहारे हम लोग ये प्लेस ढूंढ पाए हैं. तो मैं गुरुदेव को स्पेशली धन्यवाद देना चाहता हूँ. श्री लोकनाथ स्वामी महाराज की, श्रील प्रभुपाद की, ऑल इंडिया पदयात्रा की, गौर प्रेमानंदे. प्राणाचे यार से हेतु प्रचार. So Prabhuji has found this place, and to show gratitude, Kritagnyata is everything in life. To show gratitude, our Devikinandan Prabhu would offer this medallion to Krishna Prabhu. Please give him a big hands. Thank you so very much. One more thing, actually मैं अकेला नहीं था ये पदयात्रा में, मेरे साथ और एक मेरा एक good friend था. His name is Vrasdham. He's from South India. He's a very intelligent person. He's also Jai Pataka Maharaj disciple. So both of us we came to hear. So Jai Pataka Maharaj ki. So thank you. Just पद्मनेत्र प्रभु एकटू যদি কিছু বলেন. हम लोग we will be ending our session very soon. Just wanted to hear little 2 words from Padmanetra Prabhu.
Padmanatha Prabhu is Namata director and he's always been a great help for Calcutta Yatra. So we'll request him to speak something. প্রভুকে অনুরোধ করব কিছু বলার জন্য। হরে কৃষ্ণ। নমং বিষ্ণুপদায় কৃষ্ণ পৃষ্ঠায় ভূতলে শ্রীমতে জয় পতাকা স্বামিনীতি নামিনে নম আচার্য পদায় নিতাই কৃপা প্রদায়িনে গৌর কথা ধামোদায় নগর গ্রাম তারিণে নমং বিষ্ণুপদায় কৃষ্ণ পৃষ্ঠায় ভূতলে শ্রীমতে ভক্তি বেদান্ত স্বামিনীতি নামিনে নমস্তে সরস্বতী দেবে গৌরবাণী প্রচারিণে নির্বিশেষ শূন্যবাদী পাশ্চাত্য দেশ তারিণে। আজকে খুব সুন্দর দিন, শুভ তিথি বলতে হবে। ভক্তিনাথ ঠাকুর প্রভুপাদের আবির্ভাব তিথি, গৌড়ীয় সম্প্রদায়ের মহান আচার্য ওনার আবির্ভাব তিথি। আর এই জায়গাটাও বিশেষ জায়গা যেখানে দুই মহাজনের মিলন স্থল। আমি একবার গৌরকৃষ্ণ মহারাজের কাছে শুনছিলাম যে মহারাজ বলছিলেন শিবজি একবার পার্বতীকে নিয়ে যখন যাচ্ছেন এক জায়গায় নেমে প্রণাম করেছেন। বলছে প্রভু এখানে প্রণাম করলেন কেন? বলছে এখানে 10,000 বছর আগে একজন মহাত্মা এখানে তপস্যা করেছিলেন, তাই আমি এখানে প্রণাম করছি। তারপরে কিছু দূর যে আবার একটা জায়গায় প্রণাম করছেন। বলছে প্রভু এখানে প্রণাম করছেন কেন? বলছে এখানে 10,000 বছর পরে একজন মহাত্মা তপস্যা করবেন, তাই আমি এখানে প্রণাম করছি। তাই মহাজনের পদ ধুলিতে সিক্ত হচ্ছে এই জায়গা, যে মহাজনের আজ আবির্ভাব তিথি, ভক্তিনাথ ঠাকুর প্রভুপাদের আবির্ভাব তিথি। গৌড়ীয় গগনে যিনি উদয় হয়ে যে কি মহান কার্য করেছেন সেই সম্পর্কে একজন ভক্ত লিখেছেন। আমি জাস্ট দুই কথা বলবো। শুদ্ধ ভক্তি মজ্জাত উপধর্ম কবলিত হেরিয়া লোকের মনে ত্রাস হানি সুসিদ্ধান্তবান উপধর্ম খান খান সজ্জনের বাড়ালো উল্লাস। যেখানে শুদ্ধ ভক্তি যেখানে উপধর্মের দ্বারা আবৃত হয়েছিল, সেখানে ভক্তি সিদ্ধান্ত ঠাকুর এসে কি করলে সুসিদ্ধান্তের বান এনে উপধর্মকে খান খান করে দিলেন। আরেকটা শ্লোকে বলছেন স্মার্তমত জলধর শুদ্ধ ভক্তি রবিকর আচ্ছাদিত ভাবিয়া অন্তরে। স্মার্ত মত, মায়াবাদ মত এগুলো আবির্ভূত হয়ে শুদ্ধ ভক্তির যে রবিকর সূর্যকে আচ্ছাদন করে দিল। আর ভক্তিনাথ ঠাকুর কি করলেন? শাস্ত্র সিন্ধু মন্থনেতে সুসিদ্ধান্ত ঝঞ্ঝাবাতে উড়াইলা দিক দিগন্তে। উনি শাস্ত্র সিন্ধু মন্থন করে যে সুসিদ্ধান্তের একটা ঝড় তুললেন, ঝড় তুলে উপধর্মকে সব খান খান করে দিলেন, তাড়িয়ে দিলেন। স্থানে স্থানে কত মঠ স্থাপিয়া নিষ্কপট প্রেম সেবা শিখাইতে জীবে মঠের বৈষ্ণবগণ করে সদা বিতরণ হরি গুণ কথামৃত ভবে। বিভিন্ন জায়গায় তিনি সন্ন্যাসীকে পাঠিয়ে তিনি এই শুদ্ধ ভক্তি ধর্ম প্রচার করলেন, যার প্রমাণ প্রথমে যিনি ভক্তি বেদান্ত স্বামী প্রভুপাদকেই অর্ডার করলেন তুমি যাও সারা পৃথিবী জুড়ে ভগবানের বাণী প্রচার করো। এটা কথা আমার মনে হচ্ছে যে আমরা বাংলায় একটা কথা আছে, বৃক্ষ তোমার নাম কি ফলনাং পরিচয়তে। তা ফল দেখে বৃক্ষের মাহাত্ম্য বোঝা যায়। তা ভক্তি বেদান্ত স্বামী প্রভুপাদের যে প্রচার, এটা দেখে ভক্তিনাথ ঠাকুরের গুণাবলী সারা পৃথিবী জুড়ে প্রচার হচ্ছে। তাই ভক্তি বেদান্ত স্বামী প্রভুপাদ যখনই প্রচার করতেন, যখন বিদেশি ভক্তরা আসতেন বলতেন, বারবার বলতেন আমার গুরুদেব আপনাদের পাঠিয়েছেন আমাকে সাহায্য করার জন্য। তো এই সেই জায়গা যেখান থেকে সারা পৃথিবী জুড়ে ভগবানের বাণী কি বলে দুর্বার গতিতে প্রচার হয়েছে। সেই জায়গা সবারই আমাদের জন্য নমস্য, আরাধনীয় এবং পরম তীর্থস্বরূপ। হরে কৃষ্ণ। Hare Krishna.
Dhanyavad Padmanabha Prabhu. And we want to thank His Grace Suvikshana Prabhu to coming to our program. Now this is the time we will all go to Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur place where Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur blessed Srila Prabhupada. We will humbly request that the VIP means every one of you are VIPs only, Prabhupada disciples and all other designated devotees should go first and we will wait. There is a very nice book written by His Holiness Bhakti Vikas Swami Maharaj on Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur, Bhakti Siddhanta Vaibhav. This book is available here. So those who want, they will definitely, you can take it. Thank you so much. So here we are ending the morning session of our program, and we will request all the brahmacharis and devotees to wait a bit. All the senior Vaishnavas and Vaishnavis, let them go first up, and then we will have Arati there and Pushpanjali or Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur, and then we will all go up and honor Krishna Prasadam. Thank you very much. And just for all of your information, 3 p.m. onwards again, we are going to start a very beautiful offerings by our GBCs. Yes, Padayatra initiator in ISKCON, His Holiness Srila Loknath Swami Maharaj will be coming live. Then also His Holiness Gopal Krishna Goswami Maharaj will be also coming. And also we have Bodhayan Maharaj is also coming online. And also His Holiness Radhanath Swami Maharaj will be also coming live. And also we have His Holiness Jayapataka Swami Maharaj also will give a speech for all of us. This all will happen in the evening time, 3:30 onwards. So we will humbly request all of you to please come. What a wonderful day to celebrate here at the same place where ISKCON founder Acharya Srila Prabhupada met his eternal spiritual master Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur. Thank you very much. Please proceed towards the terrace, the historical terrace. Gaur Premanande. Thank you very much. आप सबसे अनुरोध है कि आप लोग छत की तरफ बढ़ सकते हैं और वैष्णव जो इनवाइटेड गेस्ट्स हैं उनके अनुरोध करेंगे कि वो पहले जाएं. बुजुर्ग और प्रॉपर डिसाइपल्स को हम लोग पहले चांस देंगे जाने का. शंख ध्वनि बज चुका है, आप कृपया करके ऊपर चलें. थैंक यू वेरी मच. और जो लोग इधर हैं ऑनलाइन पे इधर देख सकते हैं क्या हो रहा है. आई थिंक दैट विल बी नाइस. दोज हु वांट्स टू सी हियर दे कैन बी हियर आल्सो, बिकॉज जगह थोड़ा सा छोटा है. तो हम लोग इधर कुछ कोई चाहते हैं तो इधर भी हम लोग उसका आस्वादन कर सकते हैं. और शाम को हम लोग मिलेंगे फिर से इधर डाउन में 3 बजे से कीर्तन होगा. हरे कृष्णा. थैंक यू वेरी मच. गौर प्रेमानंदे. थैंक यू. कृष्णा पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने. नमो विष्णुपदाय पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति स्वामी इति नामिने. Namaste. Gaurani Pracharine Sesha Sangi Pracharine. नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे. Lalida Janaya Karunya Jana Atam
Aradava nalalida loka Pranaya karunya ghana ghana tvam Aptasyakayana Gunanavasya Vande Guru Shri Charanaravinda Praptasya kalyana gunanavasya Vande Guru Shri Charanarvindam Mahaprabhu Kirtana Nitya Gita Parichamaryan Manasarasena Okay, Tanritya Gita Amadya Manasorasena Romantakam Bhashutarangabhajo Vande Guru Shri Charanaravinda Romanchakampa Ranga Bhajo Vande Guru Shri Charana Shri Vigraharana Nityanana Shingaratan Mandir Majnado Dana Nitya Nana Shingaratan Man Niramajanado Tasya Bhaktam Cha Niyunjatopi Vande Guru Shri Charanaravinda Yuktasya Bhaktam Chaniyunjatopi Vande Guru Sri Charanarvindam Jatavira Shri Bhagavat Prasado Sadhana Chetan Hari Bhakta Sangha Chaturveda Sri Bhagavat Prasado Sadhana Triptan Hari Bhakta Sangha Vishvadaiva Triptim Bhajato Sadaiva Vande Guru Shri Charanaravinda Triptaiva Triptim Bhajata Sadaiva Vande Guru Sri Charanarvindam Shri Radhika Madhaviyorabhara Madhurya Leela Gunarupanana Sri Radhika Madhavayarapara Madhurya Leela Gunarupanamna Pratikshana Svadhana Lolapasya Vande Guru Shri Charanaravinda Adikshana Swadhanalapasya Vande Guru Sri Charanarvindam Nikunjayunarati Kelisirai Yayalivi Yukti Rapekshaniya Tunarapikeli Siddhai Jayale Viryo Tirapekshaniya Bhakti Dakshati Vallabhasya Vande Guru Shri Charanaravinda Vallabhasya Vande Guru Sri Charanarvindam Saksharaitana Samasta Shastre Uttastata Navyareva Sabhi Sakshadarittvena Samasta Shastre Uddhastadabha Yadashadhi Into Prabhuya Priyavetasya Vande Guru
Shri Charanaravinda. Vande Sri Charanaravinda. Yasya Sata Bhagavata Sata Yasara Nagati Sadat Bhagavat Prasada Yasya Prasadan Nagati Kutoki Ahayam Suvam Yasya Yasastri Sandhya Vande Charanaravinda. Vyayam Sotya Yasya Stri Sandhyam Vande Guru Sri Aravinda. Vande Guru Charanaravinda. Vande Guru Shri Charanaravinda. Vande Aravinda. Vande Guru Sri Charanaravinda. Vande Guru Shri Charanaravinda. Vande Guru Shri Charanaravinda. Vande Guru Sri Charanaravinda. Vande Guru Sri Charanaravinda. Namo Vishnu Padaya Krishna Prasaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swami Niti Namine Namo Vishnu Padaya Krishna Prasaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swami Nityananda. Namaste Saraswati Devi Gaurani Pracharine Nirishesha Sunyavadi Paschachudesha Tarine. Namaste Saraswati Devi Nipracharine Nirvishesha Shunyavadi Pashata Deshatarine. Om Vishnu Padaya Krishna Prasthaya Bhutale Srimate Bhakti Siddhanta Saraswati Namine. Om Vishnu Padaya Krishna Prasthaya Bhutale Srimate Bhakti Siddhanta Saraswati Iti Namine. Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadha Shivasari Gaura Bhaktivinoda. Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Srivasadi Aura Bhaktivinoda. Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadha Shivasari Gaura Bhaktivinoda. Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Srivasadi Bhaktivinoda. Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda
Shri Advaita Gadadhar Shivasadi Gaura Bhakta Vrinda. Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhara Srivasadi Gaura Bhakta Vrinda. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Prabhupada, Prabhupada, Jai Jai Prabhupada, Prabhupada, Jai Jai Prabhupada, Prabhupada, Jai Jai Prabhupada, Prabhupada. Prabhupada, Jai Go Bhai Mandi, Srila Prabhupada ki Jai, Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur Prabhupada ki Jai, Jai Om Vishnupada Paramahansa, Parivajika Charishtadara Sata Sri Srimad, Srila Bhakti Vedanta Swami, Srila Prabhupada ki Jai, Jai Om Vishnupada Paramahansa, Parivajika Charishtadara Sata Sri Srimad, Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur, Srila Prabhupada ki Jai. Ananta Koti Vaishnava Vrind ki Jai. ISKCON founder Acharya Srila Prabhupada ki Jai. Ramacharya Srila Haridas Thakur ki Jai. Prem se kaha Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasari Gaur Bhakta Vrinda ki Jai. Shri Shri Radha Krishna Gopinath Shama Kunda Radha Kunda Giri Govardhana ki Jai. Shri Vrindavan Dham ki Jai. Shri Mayapur Dham ki Jai. Shri Kolkata Dham ki Jai. Shri Ultadanga Bhaktivinode ASAN Dham ki Jai. Shri Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur Vyas Puja Mahamahosarati Samaveta Bhakta Vrinda ki Jai. All glories to the assembled devotees, all glories to the assembled devotees, all glories to the assembled devotees, all glories to Shri Guru and Shri
चलूंगा क्या बात है? अरे भालू खबरा से भालू खबरा रजनी को दर्द उठी है। अच्छा इसलिए तो हम लेने आए। अच्छा ठीक है इन कभी चले जाएंगे अपन चलते हैं। ठीक है क्या बात है गौरमोहन बाबू, खुशखबरी है क्या? हाँ महाराज मेरी पत्नी को दर्द उठा है। अच्छा तुम्हारा पुत्र कृष्ण का भक्त होगा, तुम्हारा पुत्र कृष्ण का भक्त होगा। बधाई हो बधाई हो। मैं सोच रहा था गोपाल रखें। आप तो हमारे बुजुर्ग हैं, आप भी मुझे लगता है कि नंदोत्सव के दिन पैदा हुआ है तो इसका नाम नंददुलाल होना चाहिए। वाह 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 दादाजी ये तो बहुत ही अच्छा नाम है दादा। कैसा लगा आपको ये नाम? अच्छा है मगर मैं इसका नाम अभय चरण अभय चरण? अभय चरण बहुत अच्छा नाम है। अभय चरण अभय चरण अभय। क्या बात है पंडित जी? बालक का जन्म समय तो ठीक लिखा है ना? ठीक लिखा है ना? हाँ समय तो बिल्कुल ठीक है पंडित जी। ऐसी जन्म कुंडली तो मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखी। मैंने तो क्या मेरे बाप दादा ने भी नहीं देखी होगी। क्या बात है? आश्चर्य आश्चर्य, ऐसी जन्म कुंडली मैं पहली बार देख रहा। बालक के भाग्य में संन्यास है। संन्यास? किंतु ये बालक इस युग का एक निराला सन्यासी होगा, क्योंकि इस सन्यासी के पास मान सम्मान धन संपत्ति सब कुछ होगा। ये कैसे संभव है पंडित जी? यही बात तो मुझे आश्चर्य में डाल देती है। ये बालक अपनी 7 पुश्तों का नाम रोशन करेगा। हाँ वाह हरिओम हरिओम। 70 साल की आयु में ये 7 समंदर पार जाएगा, अपने धर्म का प्रचार करेगा। धन्य है ये बालक, धन्य है। 11 वर्ष की अवधि में 108 मंदिरों का निर्माण करेगा। 108? अरे अरे क्या हुआ? क्या हुआ? अरे क्या हुआ? बेटा ये रथ इतना भारी है कि तुमसे हिलेगा भी नहीं। इसको खींचने के लिए बहुत सारे लोगों की जरूरत होती है। अब है ये भगवान जी का रथ है, ये यही रहता है। चलो अल्लाह शोला पापा घर चलेंगे। चलो अब है घर चलो, मैं अपने हाथों से तुम्हें ऐसा रथ बना के दूंगा। इसमें अपने
ऐसे लगाते हैं, ऐसे। अब ये यहाँ, ये हो गया तुम लोगों का रथ तैयार। तैयार हो गया, जल्दी आओ। हाँ आ रही हो, अभी आ रही हो। इनको यहाँ रख देते हैं, इनको यहाँ और इनको यहाँ। अब लेके जाओ। जय जगन्नाथ स्वामी, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ स्वामी, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ स्वामी, जय जगन्नाथ। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम महाराज। राम राम हरे हरे। क्यों आए हो? कारण तो आप जानते हैं महाराज। मैं कुछ नहीं जानता। महाराज, अब कृष्ण से आज्ञा लेने वाले थे, क्या कहा कृष्ण ने? हाँ, वो भूल गया। कोई बात नहीं, अब पूछ लीजिए, मैं प्रतीक्षा करूंगा। पूछ लिया। क्या कहा कृष्ण ने? कृष्ण ने कहा, मैं तुम्हारे गुरु बनने योग्य नहीं हूं, जाओ तुम दूसरे गुरु की तलाश करो, जाओ। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। कह दिया ना, जाओ तुम। नहीं महाराज, मैं अपने शव को अपने कंधे पर नहीं ले जा सकता। अब यहां से मेरा जीवित लौटना मुश्किल है बाबा, ऐसा अन्याय मुझ पे मत कीजिए। अगर मैं कृष्ण भक्ति के मार्ग पर नहीं चल सका तो ये मेरा जीवन बेकार है, मिटा दूंगा इस जीवन को, खत्म कर दूंगा बाबा। मेरे मन की पीड़ा को आप भी जानते हैं और कृष्ण भी, फिर भी नहीं जाने क्यों आप मुझे अपना शिष्य नहीं बनाना चाहते। अगर कोई कमी है मुझ में तो बताइए, मैं उस कमी को पूर्ण करने में अपना सारा जीवन लगा दूंगा। आप ही ने कहा है कि मैं वेद शास्त्र का विद्वान हूं, लेकिन बिना गुरु के मेरी विद्या समंदर के पानी की तरह है, जो किसी की प्यास नहीं बुझा सकता। सब कुछ होकर भी अधूरा हूं मैं। कृष्ण भक्ति में लीन होना चाहता हूं, चाहता हूं कि मेरा रोम रोम कृष्ण की महिमा गाए। कृष्णा 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 कृष्णा। उठो विमल प्रसाद, उठो। तुमने अपने हृदय की बची कुची मोह माया को इन आंसुओं से धो डाला है। इन आंसुओं से तुम्हारा हृदय निर्मल हो चुका है। अब श्री कृष्ण भगवान के मार्ग पर चलने से तुम्हें कोई रोक नहीं सकता। स्वयं श्री कृष्ण भगवान तुम्हारे साथ है। जाओ, स्नान करके आओ, जाओ। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम। ओम भूर्भुवः स्वः, ओम भूर्भुवः स्वः, ओम तस्य वितुर्वरेण्यं ओम भर्गो देवस्य धीमहि ओम धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम धियो यो नः प्रचोदयात्। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे,
हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण। आज फिर जला हुआ भात खाना पड़ेगा गुरुदेव को। हरे राम, दोबारा तो वो कभी पकाते नहीं। राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। गुरुदेव, अचानक चुप कैसे हो गए आप तो महीनों से इस मंत्र का लगातार जाप कर रहे थे। मैंने इस महामंत्र का जाप 100 करोड़ बार करने की प्रतिज्ञा की थी, सो आज पूरी हुई। अब मेरा दूसरा महत्वपूर्ण कार्य शुरू करने का समय आ गया है। कौन सा कार्य गुरु महाराज? हरे कृष्ण महामंत्र का प्रचार और भागवत भक्ति का प्रशिक्षण सभी मनुष्यों को देने का कार्य, ताकि हरेक को, चाहे वो किसी भी धर्म, देश, जाति का हो, भगवान नाम संकीर्तन के द्वारा भगवान का प्रेम पात्र बनने का अवसर मिल सके। हरेर नामेव केवलम, कलो नास्तेव गतिरन्यथा, कलयुग एक ही नाम धारा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम गुरुदेव, क्या बात है विमल प्रसाद, तुम बहुत व्याकुल और चिंतित नजर आ रहे हो। हाँ गुरुदेव, चैतन्य महाप्रभु की वाणी को मैं कैसे पूर्ण कर पाऊंगा? बाबूजी ने इस कार्य का आरंभ किया था, पर वो चले गए, और आप भी मुझे छोड़कर चले गए गुरुदेव। मैं अकेला ये सब कैसे कर पाऊंगा? तुम अकेले नहीं, श्री कृष्ण तुम्हारे साथ है। तुम्हारे बाबूजी भक्ति विनोद ठाकुर तुम्हारे साथ है, हम तुम्हारे साथ है, श्री चैतन्य महाप्रभु तुम्हारे साथ है। फिर तुम अकेले कहाँ हो? परंतु तुम्हें एक कार्य करना होगा। आज्ञा गुरुदेव। तुम्हें संसार को त्यागना होगा, तुम्हें सन्यासी बनना होगा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
गुरुदेव, आप साक्षी हैं संन्यास के, जीवन के सर्वाधिक सुखद क्षण के। आप साक्षी हैं गुरुदेव तपस्या के प्रचार के इस निर्णय के। आपने कृष्ण भक्ति का वरदान दिया, सार्थक किया यह जीवन। आपके चरणों की धूल के सहारे कृष्ण भक्ति का प्रचार प्रसार करता रहूं, बस ये आशीर्वाद दीजिए गुरुदेव। अच्छा चलता हूँ मैं। अरे रुकिए, इतनी जल्दी भी क्या? नहीं नहीं, मुझे जाकर अपने गुरुदेव भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज से जरूरी बातें करनी। भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज? क्यों? कल तक तो तुम भक्ति विनोद ठाकुर के लड़के विमल प्रसाद को गुरु मानते थे, नहीं? तुम्हें पता नहीं है क्या? विमल प्रसाद जी ने संन्यास ले लिया है और अब उनका नाम भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज है। भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज? हाँ। यानी विमल प्रसाद? हाँ। बड़े चर्चे सुने आजकल। कैसे चर्चे? सुना है उन्होंने गुरु की तस्वीर के सामने बैठकर संन्यास ले लिया। ये कौन सा नया तरीका निकाला है उन्होंने? गुरु के किए पर प्रश्न करना हमारी परंपरा नहीं है। चलता हूं मैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। दंडवत गुरुदेव। दासोस्ती। कैसे हो परमानंद? कुछ कहना चाहते हो? हाँ, मुझसे लोगों की बातें सही नहीं जाती। पता नहीं क्या क्या कहते रहते हैं आपके बारे में। यही ना कि विमल प्रसाद ने गुरु की तस्वीर के सामने बैठकर खुद ही संन्यास ले लिया और वो मुझे मान्यता नहीं देते। हाँ, और ये भी कहते हैं कि ऐसा ना कभी सुना न देखा। देखी सुनी बातें ही तो लोगों की समझ में आती है। जो उन्हें दिखता नहीं वो भी समझ आ जाए तो फिर बात ही क्या है। ये क्रोध की नहीं, दया की बात है। पर आप तो परमहंस, आपने व्यर्थ ही संन्यास लिया। आपको तो बाबा जी का वेश धारण करना चाहिए था, उनका बाना अपनाना चाहिए था। बाबा जी के बाने में एकांत भजन से सिर्फ अपना भला हो सकता है, पर मेरी रुचि स्वांत सुखाय में नहीं, जन हिताय में। और उसके लिए इस वेश की क्या आवश्यकता है गुरु महाराज? वेश तो मिशन की जिम्मेदारी के प्रति हर पल सचेत रहने की अनुभूति है, और संन्यास वर्णाश्रम का आखिरी पड़ाव। अपने व्यवहार से ही भक्तों के हृदय में प्रवेश कर सकता है। और बाबा जी का बाना, वो क्या है? बाबा जी का बाना हम जैसे साधारण लोगों के लिए नहीं है, वो तो रूपक गोस्वामी, भक्ति विनोद ठाकुर और मेरे गुरुदेव जैसे परम हंसों के लिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम। कुछ कहना चाहते हो कृष्ण किंकर? जी श्रीला प्रभुपाद। कहो। ढाका से एक अशुभ संदेश आया है। अशुभ संदेश? क्या है? जी, वो गोस्वामी महाराज अस्वस्थ होने के कारण कार्यक्रम में भाग न ले सके। इसी कारण परमेश्वर ब्रह्मचारी को उनके स्थान पर जाना पड़ा। उन्होंने अपने भाषण में वहां के साधुओं के प्रति बुरा भला कह दिया।
और वहां पर बैठे श्रोताओं ने क्रोध में आकर सारे पंडाल को तहस नहस कर दिया। क्यों? परमेश्वर ब्रह्मचारी ने ऐसा क्या कह दिया? उन्होंने वहां के साधु संतों को झूठा और धोखेबाज कह दिया। वहां पर बैठे हुए श्रोताओं से कह दिया कि इन लोगों को कोई आध्यात्मिक ज्ञान नहीं है, ये तो सिर्फ जनता को लूट रहे हैं। लोगों की आध्यात्मिकता बढ़ाने के बजाय वो धन बटोरने में लगे हैं। वाह वाह, परमेश्वर ब्रह्मचारी ने तो मेरे लिए लाखों रुपए का प्रचार कर दिया। ये तो शुभ संदेश है, तुम इसे अशुभ कहते हो। पर श्रीला प्रभुपाद, अब ढाका के लोग इससे क्रोधित हैं। वहां पर प्रचार करना असंभव है। ये तो उनका दुर्भाग्य है, सत्य से मुंह मोड़ रहे हैं। इस सत्य में उन्हीं का लाभ है और प्रसन्न होने के बजाय वे क्रोधित हो रहे हैं। प्रचार करने वाला तो एक डॉक्टर की तरह होता है, वो आध्यात्मिक रोगियों का उपचार करता है। और जब कोई ये देखता है कि रोगी का उपचार करने वाला डॉक्टर है ही नहीं, तो उसका सबसे पहला कर्तव्य है कि वो रोगी को सावधान करे, उसे बता दे कि उसकी दवा ही उसके रोगों का उपचार नहीं है। प्रचार करने वाला कोई अभिनेता नहीं, वो तो आध्यात्मिक शल्यकार है। अरे जब वो काटेगा, पीड़ा तो होगी ही। रोगी को पीड़ा सहन करना आवश्यक है, क्योंकि ये पीड़ा उसी के लाभ के लिए ही है। जाओ, जाकर परमेश्वर को एक पत्र लिखो कि हम उसके प्रचार से अति प्रसन्न हुए। जाओ। नमस्कार मैनेजर बाबू। अरे नरेश, आओ बैठो। तो काम हो गया? काम का क्या है, चलता ही रहता है। कहो क्या बात है? तुम मेरे साथ आ सकते हो? कहाँ? मैं तुम्हें किसी से मिलाना चाहता हूँ। अच्छा, लो। किससे? एक बहुत ही महान हस्ती से। मैं और रूपेन उनसे मिल चुके हैं। कौन है ये? भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज, एक साधु है। ना बाबा ना, मैं क्षमा चाहता हूं। मैं किसी साधु वाधु से मिलना नहीं चाहता। अब है, तुम इस मामले में हमसे ज्यादा जानते हो। मैं जिनकी बात कर रहा हूं वो मामूली साधु नहीं है, बहुत बड़े विद्वान हैं, मायापुर से आए हैं और यही करीब उल्टाडंगा में रहते हैं। चलो ना अभय। अच्छा ठीक है, लेकिन सिर्फ 5 मिनट के लिए। हाँ ठीक है बाबा, 5 मिनट के लिए सही, पर चलो तो। ठीक है चलो। घोष बाबू, हाँ? मैं अभी आता हूं। श्री चैतन्य महाप्रभु और उनके भक्त जैसे सर्वोत्तम हितकारी न थे, न है और न कभी आएंगे। दुनियादारी में मनुष्य को जो लाभ दिखाई देता है वो मनुष्य के लिए हानिकारक भी हो सकता है, परंतु श्री चैतन्य महाप्रभु और उनके भक्तों से जो लाभ हमें प्राप्त हुआ वो मनुष्य के नित्य कल्याण के लिए ही है। और ये लाभ केवल एक देश या एक जाति के लिए ही नहीं है, बल्कि ये सारे जगत के लिए हितकारी है। इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु की वाणी का प्रचार करना हम सबका परम कर्तव्य है। तुम पढ़े लिखे हो, तुम श्री चैतन्य महाप्रभु की वाणी का प्रचार क्यों नहीं करते? जी मैं? हाँ तुम जाओ, दुनिया के कोने कोने में प्रचार करो, यही तुम्हारा परम कर्तव्य है। जी मैं क्षमा चाहता हूं, लेकिन आज के इस वातावरण में हमें सुनेगा कौन? जबकि देश का बच्चा, बूढ़ा, जवान, हर कोई देश को आजाद कराने में लगा हुआ है। तुम ठीक कहते हो, देश को स्वतंत्र कराना भी एक कर्तव्य है, किंतु ये परम कर्तव्य नहीं। तुम क्या समझते हो, अंग्रेजों से स्वतंत्रता पाकर तुम स्वतंत्र हो जाओगे? राज करने वाले बदल जाएंगे, किंतु राजनीति नहीं बदलेगी। मैं जिस स्वतंत्रता की बात कर रहा हूं वो राजनीतिक सीमाओं के बंधन से मुक्त है। इस भौतिक जगत की हर चीज अस्थायी है, केवल कृष्ण भक्ति ही नित्य सत्य है। मनुष्य का बनाया हुआ राजनीतिक नियम कभी भी मनुष्य के लिए लाभकारी नहीं हो सकता। ये वैदिक शास्त्र और गुरु शिष्य परंपरा का अभिनिर्णय है। और जब मनुष्य अपने नाशवान भौतिक शरीर और जन्मभूमि को ही पूज्य समझने लगता है, तब वो मिथ्या धारणा में खो जाता है।
और इस संसार का हर नेता उसे इस मिथ्या धारणा से बाहर आने ही नहीं देता। मनुष्य तो क्या, हर जीव का स्वरूप केवल नित्य कृष्णदास का है। इसलिए मनुष्य का परम कर्तव्य है कि वो इस बात को समझे और औरों को समझाए। कृष्ण भक्ति को भारतीय राजनीतिक परिवर्तन के लिए प्रतीक्षा की आवश्यकता नहीं। कृष्ण भक्ति का प्रचार इतना आवश्यक है कि ये किसी के लिए रुक नहीं सकता। इसलिए तुम्हारे जैसे पढ़े लिखे युवक को इस बात को समझना और औरों को समझाना बहुत ही आवश्यक है। अच्छा, अब इस सभा को हम यही समाप्त करते हैं। हरे कृष्ण। अब आप लोग मेरे साथ बोलिए, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। क्यों अभय, कुछ समझ में आया? हाँ, श्री चैतन्य महाप्रभु की वाणी बिल्कुल सही हाथों में है। हाँ, तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो। अब तो उन्हें जाकर मिलना ही होगा। और मैं तो कहता हूं नरेन कि ये सब अपने ही अपनों को मार रहे हैं। तुम क्या समझते हो, अंग्रेजों से स्वतंत्रता पाकर तुम स्वतंत्र हो जाओगे? राज करने वाले बदल जाएंगे, किंतु राजनीति नहीं बदलेगी। मैं जिस स्वतंत्रता की बात कर रहा हूँ वो राजनीतिक सीमाओं के बंधन से मुक्त है। कृष्ण भक्ति को भारतीय राजनीतिक परिवर्तन के लिए प्रतीक्षा की आवश्यकता नहीं। कृष्ण भक्ति का प्रचार इतना आवश्यक है कि ये किसी के लिए रुक नहीं सकता। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम नमस्कार। राम राम। नमस्कार। कहिए। अब मैं आपके गुरु महाराज से मिलने आया हूँ। क्षमा करना, आप देर से आए। गुरु महाराज तो आज सुबह ही जगन्नाथपुरी को प्रयाण कर चुके हैं। ओह, वो 2 हफ्ते के बाद वापस लौटेंगे। आइए जी। हरे कृष्ण बैठिए। जी, मैं प्रसाद लेकर आता हूँ। जी अच्छा। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 कृष्ण कृष्ण हरे। आप प्रसाद लीजिए। जी। आपके गुरु महाराज बहुत ज्ञानी हैं। कल मैं उनकी बातों से बहुत प्रभावित हुआ, इसलिए आज उनसे मिलने चला आया। हाँ, मेरे गुरु महाराज केवल ज्ञानी ही नहीं, वे नम्र, विशाल हृदय और दयावान भी हैं। और वे श्री चैतन्य महाप्रभु की वाणी के प्रचार के लिए दृढ़ निश्चय हैं। और उन्हीं की प्रार्थना से श्री जगन्नाथ जी ने मेरे गुरु महाराज को उनके घर में पैदा किया ताकि
इस कार्य को आगे बढ़ाया जा सके। मैंने सुना है कि उनके पिताजी डेप्यूटी मैजिस्ट्रेट थे। हाँ हाँ, ठीक सुना है तुमने। और वास्तव में उनका नाम था केदारनाथ दत्त, जो बाद में कृष्ण गुरु से दीक्षा लेकर श्रील भक्ति विनोद ठाकुर बन गए। आजकल ऐसे बहुत ही कम पढ़े लिखे व्यक्ति मिलते हैं जो वैष्णव धारा विचार को अपनाते हैं। इस अंग्रेजी शिक्षा के कारण ही ये लोग अपनी ही संस्कृति से घृणा करने लगे हैं। लेकिन श्रीला भक्ति विनोद ठाकुर केवल वैष्णव ही नहीं बने, परंतु अंधविश्वास से पैदा होने वाले भ्रम को दूर करके वैष्णव विचारधारा को स्थायी करने का प्रयत्न किया। वैदिक विचारधारा के महत्व को स्थापित करने के लिए उन्होंने सारे विरोधियों से एक बहादुर योद्धा की तरह युद्ध किया। इसी कार्य को हमारे गुरुदेव आगे बढ़ा रहे हैं। सन 1911 की बात है। बाबा, आपकी शारीरिक दशा ठीक नहीं है। आप कहाँ जाने की तैयारी कर रहे हैं? शारीरिक दशा ठीक तो नहीं है, लेकिन ब्राह्मण सभा में जाना बड़ा आवश्यक है। नहीं बाबा, मैं आपको कहीं नहीं जाने दूंगा। विमल प्रसाद, ब्राह्मण सभा का ये निमंत्रण सिर्फ एक निमंत्रण नहीं, मेरे लिए एक ललकार भी है, क्योंकि आज निर्णय करना है कि वैष्णव और ब्राह्मणों में सर्वोत्तम कौन है। इसीलिए मेरी पराजय के लिए ब्राह्मणों ने वहां बड़े बड़े विद्वानों को जमा किया है। अगर मैं वहां नहीं गया तो वो लोग समझेंगे कि भक्ति विनोद ठाकुर कायर है, पराजय के भय से नहीं आया। मेरा जाना बहुत आवश्यक है। विमल प्रसाद, मैं जाऊंगा। नहीं बाबा, यदि जाना इतना ही आवश्यक है तो मैं जाऊंगा। तुम? क्यों बाबा, आपको मुझ पर विश्वास नहीं? हाँ बेटा, विश्वास तो है, पर वहां बाबा, गुरु महाराज और आपके आशीर्वाद से मैं श्री चैतन्य महाप्रभु के गॉड वैष्णव संप्रदाय को सर्वोत्तम साबित करने के लिए सारे संसार के विद्वानों का सामना कर सकता हूं। बस केवल आप आशीर्वाद दीजिए। तो जाओ बेटा, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। विजय भव। ब्राह्मणों को ब्राह्मण को श्रेष्ठ सबसे जो गुरु होते हैं नमस्कार। नमस्कार। आप अकेले? भक्ति विनोद ठाकुर कहाँ है? बाबा अस्वस्थ है, उन्होंने मुझे यहाँ भेजा है। अस्वस्थ है? क्यों, क्या हुआ उन्हें? कोई विशेष नहीं, सारे अतिथि आ गए। हाँ, लेकिन ये सुनकर उन्हें बड़ी निराशा होगी विमल बाबू कि भक्ति विनोद ठाकुर नहीं आए। हरी इच्छा, आप आसन ग्रहण कीजिए। कुछ सुना तुमने? भक्ति विनोद ठाकुर नहीं आए हैं, उनके स्थान पर उनका लड़का आया हुआ है। यही एक अड़चन थी जो हट गई। अरे अड़चन कैसी, वे तो भय से नहीं आए हैं। देखो कैसे बड़े बड़े विद्वान लोग बैठे हुए हैं। भक्ति विनोद ठाकुर भी किसी से कम नहीं।
वैदिक शास्त्र का इतना ज्ञान है कि अच्छे अच्छे घुटने टेक देते हैं। भाई वो आते तो बड़ा मजा आता। चलो इन्हीं को सुन लेते हैं। चलो विराजिए। सज्जनों, अब सभा आरंभ हो रही है। माननीय सज्जनों, धन्यवाद। आप लोगों ने जो यहां आने का कष्ट किया है उसके लिए हमारी सभा आप लोगों की आभारी है। सज्जनों, आप तो जानते हैं कि सभा का आयोजन ब्राह्मण और वैष्णवों के बीच मतभेद को दूर करने के लिए किया गया है और इस सभा के मुख्य वक्ता श्री भक्ति विनोद ठाकुर अस्वस्थ होने के कारण नहीं आ सके, परंतु उनके स्थान पर उनके पुत्र श्री विमल प्रसाद पधारे हैं और अब इस सभा का प्रारंभ मैं उन्हीं से करता हूं। विमल बाबू पधारिए। नमस्कार। मेरे पिताजी श्री भक्ति विनोद ठाकुर के अस्वस्थ हो जाने के कारण ही मैं यहाँ उपस्थित हुआ हूँ और आशा करता हूँ कि आप सब लोग मुझे स्वीकार करेंगे। भारतवर्ष की उत्तरी दिशा में हिमालय की चोटी से लेकर दक्षिण की कन्याकुमारी तक जो ये पवित्र भूमि है वो आध्यात्मिक विकास के लिए सर्वोत्तम है और इस आध्यात्मिक विकास के जो मार्गदर्शी हैं वही ब्राह्मण कहलाते हैं। महाभारत में तो लिखा है कि धरती के मनुष्य तो क्या सर्वलोक के देवता भी उन्हें प्रणाम करते हैं। ब्राह्मण तो अग्नि समान होते हैं, उनमें इतनी शक्ति होती है कि अगर वो चाहे तो पृथ्वी को भी जलाकर राख कर सकते हैं। उनके क्रोध के तेज के कारण ही समुद्र का जल नमकीन हो गया जिसे हम पी नहीं सकते। ब्राह्मण हमारे लिए अनुबांधक देवतत्व है। ब्राह्मण की दया से ही देवता स्वर्ग में निवास करते हैं। ब्राह्मण के मुख से निकली बात कभी व्यर्थ नहीं होती। ब्राह्मण की प्रसन्नता से ही देवता प्रसन्न होते हैं। ब्राह्मण की स्थिति भौतिक जगत के परम उच्च स्थान पर है। इसमें कोई शंका नहीं कि ब्राह्मण सत्कर्मी है और भौतिक दृष्टि से मनुष्यों में सर्वश्रेष्ठ है, परंतु उससे भी उच्च श्रेणी वैष्णव की दिव्य स्थिति है, क्योंकि वैष्णव भौतिक जगत की विधि से मुक्त है। वो जीवन मरण के बंधन से स्वतंत्र है और स्वतंत्रता का वास्तविक अर्थ है विष्णु की सेवा में आत्मसमर्पण करना। परंतु जो अपने आप को परमेश्वर के चरण कमलों में समर्पित कर देता है वो भौतिक प्रकृति के प्रभाव से मुक्त हो जाता है, इसलिए उसका स्थान सत्कर्मियों से भी सर्वोच्च है और ऐसी दुर्लभ आत्माएं ही वैष्णव कहलाती है। भौतिक जगत के लोग चाहे सत्कर्मी हो पर इस बात को समझ नहीं सकते, लेकिन यह सत्य है कि मनुष्य चाहे कितना ही सत्कर्मी हो, जब तक अपने आप को परमेश्वर के चरण कमलों में समर्पित नहीं कर देता तब तक वो उस दिव्य स्थान को प्राप्त नहीं कर सकता जिसे एक वैष्णव प्राप्त करता है, क्योंकि वैष्णव तो परमेश्वर के चरण कमलों में ही समर्पित है। ये क्या, आप तो रोने लगे।
मुझे मेरे जीवन का लक्ष्य मिल गया है। आज से श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ही मेरे गुरु महाराज हैं। अब मैं अपने गुरु महाराज के मार्ग पर चलकर अपना सारा जीवन श्री चैतन्य महाप्रभु की वाणी के प्रचार करने में बिता दूंगा। हरे कृष्ण। अपने आने की खबर आपने पहले क्यों नहीं दी? आपको यहाँ लाने के लिए हम किसी को स्टेशन भेज देते। दरअसल मैं दिल्ली जा रहा था, पर जब गाड़ी मथुरा स्टेशन पर रुकी तो मैं उतर गया और यहाँ आ गया। केवल आप ही ऐसा कर सकते हैं अभय बाबू। आइए, मैं आपका कहीं रहने का इंतजाम करता हूँ। नहाने और प्रसाद ग्रहण करने के बाद मैं आपको श्रील प्रभुपाद जी से मिलवाऊंगा। वे आपको देखकर अति प्रसन्न होंगे। ओह, क्या मैं उनसे अभी मिल सकता हूँ? आपकी अधीरता से मैं आपकी विनती मानने के लिए विवश हो रहा हूँ। दासोस्मि, मैं आपका दास हूँ। श्रील प्रभुपाद जी, ये है अभय बाबू, इलाहाबाद से आए हैं। हाँ, मैं इन्हें जानता हूँ। आपको देखकर आनंद हुआ अभय। आप थक गए होंगे। जाइए, आप नहाकर प्रसाद लीजिए, बाद में बातें करेंगे। जब मैंने आपको पहली बार देखा 10 साल पहले, तब आपने मेरा अंधकार दूर कर मेरा हृदय सर्वोच्च ज्ञान से ओतप्रोत कर दिया। तब से मैंने आपको अपना परमार्थ गुरु माना। पूरे विश्व में चैतन्य महाप्रभु को संदेश फैलाने का कार्य आपने मुझे सौंपा, लेकिन 10 अनमोल वर्ष बीत गए, मेरे हाथ से आपका कोई भी कार्य नहीं हुआ। मैं आपके लिए अनुपयोगी रहा। बताइए मैं क्या करूं? आपकी सेवा कैसे करूं? चिंता मत कीजिए अभय चरण। योग्य समय आने पर श्री कृष्ण ही आपसे अपने कार्य सिद्ध करवा लेंगे। ये तो आपकी कृपा का फल है श्री प्रभुपाद जी। आपकी दया से मैं थोड़ा कुछ कर सका। श्री चैतन्य महाप्रभु का संकीर्तन लक्ष्य जब पूरे विश्व भर में हर गांव हर शहर में फैल जाएगा, तब आप उसमें समर्पित हो जाइए। उसे पूर्ण करने के लिए श्री चैतन्य महाप्रभु आपको अपनी कृपा दृष्टि अर्पित करेंगे। ये तो आपकी कृपा का फल है श्री प्रभुपाद जी। इस भौतिक जगत से बाहर निकालकर आप मुझे अपने शिष्य स्वीकार कर मुझ पर दया कीजिए। हाँ, मैंने पहले से निश्चित किया है आपको दीक्षा देने का। आने वाले पूर्णिमा को इलाहाबाद में। अब जाकर विश्राम कीजिए, आप थक गए होंगे। जब आकाश में एक ही पूर्ण चंद्र हो, तो इतने सारे तारों की क्या आवश्यकता? श्री चैतन्य महाप्रभु के संदेश का प्रसार क्यों नहीं करते? मैंने अपने जीवन का अंतिम लक्ष्य पा लिया है। आज से श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर मेरे आध्यात्मिक गुरु हैं। चिंता मत करो अभय चरण। योग्य समय आने पर कृष्ण ही आपसे अपने महत्वपूर्ण कार्य सिद्ध करवा लेंगे। सभी जीवित गण केवल मनुष्य गण ही नहीं, कृष्ण के सेवक हैं। ध्यान से सुनिए, कान खोल दीजिए ताकि आप स्पष्ट रूप से देख सकें। कृष्ण भक्ति का उद्देश्य इतना महत्वपूर्ण है कि वह किसी चीज के लिए रुकेगा नहीं। जाओ, संदेश का प्रसार करो। पूरे विश्व भर में यही अपना मूल कर्तव्य है। हाँ, मैं जानता हूं आपको लेकर आनंद हुआ अभय। हरे राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण। ओम
सं नो मित्रः सं वरुणः सं नो भवत्वर्यमा सं नैन्द्रो बृहस्पतिः सं नो विष्णुरुद्रः नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव ललिता श्री विशाखवितांश्च स्वाहा पंचकल्पतरोभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः स्वाहा नमो ओम विष्णुपदाय कृष्णप्रस्थाय भूतले श्रीमते भक्ति सिद्धांत सरस्वती नामिने स्वाहा। आपका अब से नाम हुआ अभय चरणारविंद दास। इसका अर्थ है जिसने निर्भीकता से परमेश्वर की कृपा प्राप्त करने में परमेश्वर के चरण कमलों में आश्रय लिया है। बच्चों, ये वृंदावन है, धार्मिक स्थानों में सर्वश्रेष्ठ। स्वर्ग लोक का वो भौतिक रूप जिसे तुम स्वयं देख रहे हो। लेकिन बाबा, आपने मुझे कहा था कि ये धरती पारस पत्थर से बनी और यहाँ के सारे वृक्ष कल्प वृक्ष हैं तथा सभी गायें सुरभि हैं। हाँ बाबा बाबा देखो मोर। हाँ, वो श्री कृष्ण को बहुत प्यारे होते हैं, इसीलिए श्री कृष्ण अपने शीश पर मोर के पंख धारण करते हैं। सभी वृक्ष कल्प वृक्ष होते हैं? हाँ। बाबा, क्या मैं इनसे कुछ मांगू तो ये वृक्ष मेरी इच्छा पूर्ण करेंगे? हाँ, लेकिन केवल कृष्ण भक्ति मांगो। ये गोवर्धन पहाड़ी है, हमें इसे आदरांजलि देनी चाहिए। बंसी जो नोरी श्री राधा रानी जय दारू बंसी जो नोरी श्री राधा रानी जय दारू। राधा कुंड पर उनका इकट्ठा होना और हमारा राधा कुंड पर इकट्ठा होना, उसमें बहुत अंतर है। श्रील प्रभुपाद जी, क्या अंतर है? साधारणतः लोग श्री कृष्ण को पूजते हैं क्योंकि वह परम योगेश्वर ऐसा एक व्यक्तित्व है, परंतु हम सब पूजा करते हैं श्रीमती राधा रानी की। हम कृष्ण को चाहते हैं क्योंकि राधा रानी उनसे प्रेम करती है। अभय, अभय चरणारविंद, कब आए तुम? बस अभी। मुझे पता चला कि आप यहाँ पधारे हैं तो आपके दर्शनों के लिए आ गया। इतना लंबा रेल का सफर तय कर आप थक गए होंगे। जाइए स्नान कीजिए, तैयार होकर प्रसाद ग्रहण कीजिए। श्री प्रभुपाद जी, मुझे अपने साथ रहने दीजिए, मुझे कोई थकान नहीं है। अच्छा, यदि आपको ऐसा लगता है तो हाँ, आप हमारे साथ रहिए। और व्यापार कैसे चल रहा है? इस समय अच्छा नहीं चल रहा है। अच्छा, यदि आप व्यापार में अपना ध्यान नहीं लगाएंगे तो ठीक तरह से कैसे चलेगा? आखिर इस जगत में सब लोगों को सिर्फ पैसा प्यारा है। हर कोई उसे छीनकर अधिकार जमाना चाहता है और उसे छोड़ना नहीं चाहता। यदि आप एक सफल व्यापारी बनना चाहते हैं तो आपको सीखना होगा पैसा कैसे छीना जाता है। मैं उस काम में माहिर नहीं हूं श्रील प्रभुपाद जी। ऐसे हो सकता था यदि आप पैसे से प्यार करते, लेकिन आपने कृष्ण की भक्ति की है, इसलिए आपको उसमें लगाव नहीं है।
आप भीतर आइए, मुझे कुछ कहना है। इनके बच्चों की देखभाल करो और उन्हें कुछ प्रसाद दो। जी हाँ प्रभुपाद जी। बैठ जाइए। श्री चैतन्य महाप्रभु चाहते हैं कि संपूर्ण जगत को श्री कृष्ण भक्ति से आलोकित कर दें। जगत पिता ब्रह्मा का एक दिन, जो कलयुग कहलाता है, और इस कलयुग में जहां सभी लोग अपने पतन के मार्ग पर चल रहे हैं, ऐसे काल में उचित समय देखकर स्वर्ग से भगवान श्री कृष्ण राधा रानी को स्वर्गीय खजाना देने आते हैं, जो इस युग में सुनना या जानना किसी को बिल्कुल संभव नहीं है। वे सर्वेश्वर है, सर्वोच्च स्थान है। स्वर्गीय ज्ञान वे उसे ही देते हैं जिसे वे देना चाहते हैं। वे ही जगत नियंता है, इसलिए विश्व का निर्माण भी उनके द्वारा हुआ है। लेकिन भक्तों द्वारा कृष्ण का संदेश प्रसार करना चाहते हैं, क्योंकि उसका श्रेय स्वयं न लेकर अपने भक्तों को देना चाहते हैं। कृष्ण भक्ति के प्रचार की योजना श्री चैतन्य महाप्रभु ने बनाई थी, श्री भक्ति विनोद ठाकुर के कारण उजागर हुई थी। वे चाहते थे कि यह प्रचार मेरे सहयोग से हो, लेकिन मैं अपना अधिक योगदान न दे सका। क्यों स्वामी जी, आपने कितना कुछ पाया है। आपकी ही आस्था के कारण श्री चैतन्य महाप्रभु का संदेश संपूर्ण भारत में फैला है। इस देश में आपने 64 देवालयों की स्थापना की है। आपके ही अथक प्रयास से हजारों लोगों ने कृष्ण भक्ति को अपनाया है। लेकिन मेरा यह कार्य सागर के समक्ष एक क्षुद्र बूंद के समान है। श्री चैतन्य महाप्रभु की कृष्ण भक्ति की गंगा संपूर्ण जगत के हर शहर, हर गांव में पहुंचनी चाहिए। मैं अब यहां और नहीं ठहर सकता। मैं इस प्रचार कार्य के भविष्य के लिए बहुत चिंतित हूं। जिस दिन मैं जाऊंगा, मन में अशांति हो जाएगी। श्री प्रभुपाद जी, कृपया आप ऐसा ना कहें। हम तो ये चाहते कि आप हमारे साथ अधिक से अधिक समय बिताएं। अभय चरण, इस भौतिक संसार में हमेशा रहने के लिए कोई नहीं आया है। आज नहीं तो कल सभी को इसे त्यागना है, और इस धरती पर का मेरे अस्तित्व का अंत समीप आ गया है। इसलिए यह प्रचार कार्य को आपको ही आगे बढ़ाना है। श्री प्रभुपाद जी, कृपया मुझे बताइए कि मैं प्रचार कार्य के लिए क्या कर सकता हूं। श्री चैतन्य महाप्रभु का संदेश जगत के प्रत्येक शहर और प्रत्येक गांव में पहुंचा दो। नाम, यश और पद के प्रलोभन में न भटको। दूसरों के लाभ के लिए कृष्ण भक्ति को साधारण रूप से हमेशा हमेशा फैला दो। अपने पवित्र नाम के साथ वे सर्वेश्वर श्री कृष्ण इस युग में प्रकट हुए हैं, इसे हमेशा याद रखो और सबको याद दिलाओ। इसलिए सर्वस्वी रूप से उसी पवित्र नाम पर निर्भर रहो और हरेक को उसी नाम जाप के लिए प्रेरित करो। हाँ स्वामी जी, आपकी आज्ञा ही मेरा जीवन है, सर्वस्व है। किताबें लिखो और उन्हें वितरित करो। दर्शन का प्रचार करने के लिए किताबें ही सबसे प्रभावी मार्ग है। जब भी तुम्हें पैसे मिले, किताबें मुद्रित करो, किताबें छापो। Absolute sentient thou hast proved. Impersonal calamity thou hast moved. This gives us a life, anew and fresh. Worship thy feet, your divine grace. Had you not come who had told the message of Krishna, forceful and bold? That's your right. You have the mace. Save me a fallen, your divine grace. The line of service as drawn by you is pleasing and healthy like morning dew. The oldest of all but a new dress, miracle done, your divine grace. बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। भक्ति सुधाकर इसे द हार्मोनिस्ट के अगले संस्करण में छाप दो।
भविष्य में जब भी अभय चरणारविंद दास कुछ भी लिखें उसे पत्रिका में छाप देना। श्रील प्रभुपाद, ये बहुत ही उत्तम होगा। वैसे भी हमेशा पत्रिका के लिए अच्छा विषय मिलना कठिन होता है, और ऐसा ज्ञानी मनुष्य हमेशा लिखे, ये हमारे लिए वरदान ही सिद्ध होगा। हाँ, आप उन्हें लिखें और कहें कि मैं हमारी पत्रिका के लिए उनका नियमित सहभाग चाहता हूं। हाँ श्रील प्रभुपाद जी। हमें ऐसा प्रयत्न करना चाहिए कि श्री कृष्ण की अनुभूति सभी को हो, चाहे किसी भी राह से। हम जो भी करें वो सर्वोत्तम हो। हमारे जो ग्रंथ हैं वो भारतीय दर्शन के वाहन है। इस विश्व के लिए हमारे पास महत्वपूर्ण संदेश हैं और यह हमारा कर्तव्य है कि हम उन्हें वो अच्छे ढंग से बताएं। श्री प्रभुपाद जी, आपके विचारों को फैलाने के लिए आपने हमें तैयार किया है। अब ये जिम्मेदारी हम पर है कि आपके विचारों को जगत में फैलाएं। हाँ, जो शिष्य गुरु से प्राप्त ज्ञान को केवल अपने पास न रखकर उसका प्रचार करता है वही धर्म को प्राप्त करता है। ऐसा शिष्य ही अपने गुरु के स्वप्न को पूर्ण करता है। अभय चरण देर से जरूर आए हैं, परंतु वे बहुत कुछ पाएंगे। ये अच्छा होगा यदि वे हमारे मुंबई के केंद्र के अध्यक्ष बन जाएं। नहीं, अभी नहीं, अभी उन्हें रहने दो। उन्हें प्रबंधन के कार्य में यहां मत घसीटो। नियत समय पर वे सभी कार्य कर लेंगे। पूर्णतया उत्साहवर्धक जो आपने सिद्ध किया, विपदाओं से हमें उत्साह से बचाने वाले। मनसा देह गेह जो किछु मोर अर्पिलु द्वापदे नंद किशोर। मेरा शरीर, मेरा मन, मेरे पास जो कुछ है मैंने तुझे अर्पण कर दिया कृष्ण। हे नंद महाराज के पुत्र, इस धरती से विदा लेने का मेरा समय आ गया। जैसा कि मैं हमेशा कहता हूं, तुम्हारा सारा जीवन चैतन्य महाप्रभु के प्रचार कार्य में समर्पित कर दो। अच्छा समय जल्द ही आने वाला है। बहुत जल्द ही सारा संसार कृष्ण प्रेम से आलोकित होने वाला है। इसलिए इस अवसर का लाभ उठाकर उनके प्रचार कार्य में अपने आप को समर्पित कर दो। अपने आप को संगठित करो, सत्य का दामन कभी न छोड़ो। एकत्र होकर, एकता से रहकर, बिना किसी भय से, बिना संकोच से श्री रूप गोस्वामी और श्री रघुनाथ दास गोस्वामी इनके विचार लोगों तक पहुंचाओ। मेरे शिष्य गणों, श्री चैतन्य महाप्रभु के विचारों को बिना किसी भय से संपूर्ण समाज को बताने में पूर्णतया समर्पित हो जाओ। कोई भजन सुनाएगा? শ্রীরূপ মঞ্জরে পদ সে মোর সম্পদ। শ্রীরূপ মঞ্জরে পদ সে মোর সম্পদ। সে মোর ভজন
মোর ভজন পূজন শ্রীরূপ মঞ্জরি কর সেই মোর সম্পদ সেই মোর প্রাণধন সেই মোর আভরণ সেই মোর প্রাণধন সেই মোর আভরণ সেই মোর জীবনে জীবন সেই মোর জীবনে জীবন শ্রীরূপ মঞ্জরি কর সেই মোর সম্পদ শ্রীরূপ মঞ্জরি কর সেই মোর সম্পদ সেই মোর রসনিধি সেই মোর বাঞ্ছা সিদ্ধি সেই মোর রসনিধি সেই মোর বাঞ্ছা সিদ্ধি সেই মোর পেটের সেই মোর পেটের সেই ব্রত সেই তপ সেই মোর মন্ত্র জপ সেই ব্রত সেই তপ সেই মোর মন্ত্র জপ সেই মোর সেই মোর শ্রীরূপ মঞ্জরি কর সেই মোর সম্পদ অনুকূল হবে বিধি সেই পদ হইবে সিদ্ধি অনুকূল হবে বিধি সেই পদ হইবে সিদ্ধি নিরুক্তিব দুই নয়নে নিরুক্তিব দুই নয়নে সেরূপ মাধুরী রাশি প্রাণ কুবলয় শশী সেরূপ মাধুরী রাশি প্রাণ কুবলয় শশী হবে নিশিতে প্রফুল্লিত হবে শ্রীরূপ মঞ্জরি কর সেই মোর সম্পদ দর্শন বদলে চাদল দেহি দর্শন বদলে চাদল দেহি চিরদিন কাপিত জীবন চিরদিন কাপিত জীবন প্রভু কর দয়া দেব মোরে কর ছায়া
महाप्रभु करो दया देव मोरे पद छाया गुरुतम नरोत्तम दयिलो शरण श्रीरूप मंजरी श्री मोर श्रीरूप मंजरी श्री मोर श्री मोर भजन श्री मोर भजन श्रीरूप मंजरी श्री मोर अनादिरादिर्गोविन्द सर्वकारण कारणम् चिन्तामणि प्रकटपद्मसुकल्पवृक्षा लक्षावृतेषु सुरभिरभिपालयन्तम् लक्ष्मी सहस्रशतसम्भ्रमसेव्यमानम् गोविन्दमादिपुरुषाम् तमहं भजामि वेणुपणन्तमरविन्ददलायताक्षम् वरावतं समशिताम्बुदसुन्दराङ्गम् कन्दर्पकोटिकमनीय विशेषशोभम् गोविन्दमादिपुरुषाम् तमहं भजामि आलोलचन्द्रकलसद्वनमाल्यवंशी रत्नाङ्गदं प्रणयकेलिकलाविलासम् श्यामं दिभङ्गललितं नियतं प्रकाशम् गोविन्दमादिपुरुषाम् तमहं भजामि हरे राम हरे राम। आप मेरे बड़े ज्ञानी गुरु बंधु हैं। आप स्वामी श्री प्रभुपाद के भी प्रिय हैं। ये उनकी कृपा ही है कि वे चाहते हैं कि आपको पारिवारिक जिम्मेदारियों से मुक्त करें। अब समय आ गया है संन्यास लेने का और श्री कृष्ण के संदेश का प्रचार करने में खुद को व्यस्त रखने का। उनकी ओर से मैं तुम्हें अभी संन्यास देता हूं। तुम्हारा संन्यास्त नाम होगा श्री अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी। कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा। जो इस स्पष्ट संसार के प्रति गंभीर है, जो भौतिक संसार से पूर्णतः परे है, उसे धार्मिक गुरु के पास जाना चाहिए। एक आध्यात्मिक पात्र गुरु यह शास्त्र सीखने के लिए सीधे रूप से, गूढ़ रूप से, हर किसी को भी इस अधिकारप्रद प्रक्रिया से अपना अंतिम लक्ष्य प्राप्त करने के लिए गुजरना पड़ता है। धार्मिक गुरु नए शिष्य के आदतों को नियंत्रित करता है और इसलिए एक नए शिष्य को
गंभीरता से कृष्ण बोध के शास्त्र को उनके मार्गदर्शन में सीखना है। हर एक मानव का यह कर्तव्य है कि वो समझ जाए यह भौतिक प्रकृति केवल अतीव दुख का कारण है और उसे इससे बाहर निकलने का गंभीरता से मार्ग खोजना है। मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूं कि तुम श्री कृष्ण की तरफ एक कदम बढ़ाओगे तो कृष्ण हजारों कदम आगे बढ़ाएंगे तुम्हें उठाने के लिए। उसे अर्पण करने के लिए सबसे सही रास्ता है हरे कृष्ण महामंत्र का जाप, जो 16 शब्दों से बना हुआ है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे। क्या आप मेरे साथ जपेंगे? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे। स्वामी जी, मैं श्री केशव महाराज का शिष्य हूँ। क्या आप मेरे घर आकर प्रसाद ग्रहण करेंगे? वास्तव में हम यहाँ केवल 2 ही दिन के लिए आए हैं। मेरा आगे का कार्यक्रम बहुत ही व्यस्त है। मैं नहीं समझता कि हम तुम्हारे घर इस समय आकर प्रसाद ग्रहण कर सकेंगे। तुम प्रसाद ग्रहण करने यहाँ चले आओ। जरूर, मैं अनुग्रहित हुआ। आपकी कृपा स्वामी जी। हरे कृष्ण। स्वामी जी, मैं हरे कृष्ण महामंत्र को बहुत सालों से जप रहा हूँ, लेकिन मैं किसी प्रकार की कोई प्रगति अनुभव नहीं कर रहा हूँ। यह अच्छी बात है कि तुम कोई प्रगति नहीं महसूस कर रहे हो। खैर, इसमें कोई चिंता की बात नहीं है। बिना रुके महामंत्र का जाप करते रहो और हमेशा कृष्ण कृपा पर निर्भर रहो। वे तुम्हारी चिंता करेंगे। भगवान का नाम जपने की 10 भूलें तुम जानते हो? जी, मैं जानता हूँ स्वामी जी। ये पवित्र नाम भगवान कृष्ण से पृथक नहीं है, परंतु हम अगर ये नाम स्वार्थ से लेंगे तो हम इस पवित्र नाम की कृपा प्राप्त नहीं कर पाएंगे। स्वामी जी, आज के आपके वक्तव्य से मैंने बहुत कुछ सीखा है। वो बहुत ही ज्ञानवर्धक था। मैं भी अपने लिए धर्म गुरु की खोज में हूँ। मैं अपने धार्मिक जीवन में प्रगति चाहता हूँ और गुरु का मार्गदर्शन भी चाहता हूँ। कृपा करके आप मुझे दीक्षा देंगे? हाँ, अवश्य। लेकिन तुम्हें अपने आप को इसके लिए तैयार होना होगा। जब आप पात्र हो जाओगे तब मैं तुम्हें अवश्य दीक्षा दूंगा। की जाने की बोले তোমার ধামেতে হইনু শরণাগত, কি জানি কি বলে তোমার ধামেতে হইনু শরণাগত। তুমি দয়াময় পতিত পাবন, পতিত কারণে রত। তুমি দয়াময় পতিত পাবন, পতিত কারণে রত। ভরসায় আমার এই মাত্র না, তুমি তো করুণাময়। राधे जय जय माधव दयित गोकुल करुणे मंडल महित। राधे जय जय
माधव दयित गोकुल तरुणी मंडल महित राधे जय जय माधव दयित माधव दयित दामोदर रतिवर्धन वेश दामोदर रतिवर्धन वेश हरि निष्कुट वृंदा विपिनेश दामोदर रतिवर्धन वेश हरि निष्कुट वृंदा विपिनेश राधे जय जय माधव दयित गोकुल करुणे मंडल महित राधे जय जय माधव दयित माधव दयित वृषभानुदधि नव शशिलेख वृषभानुदधि नव शशिलेख ललिता सखी गुण रमित विशाख वृषभानुदधि नव शशिलेख। अरे गुरुचंद स्वामी जी। स्वामी जी, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। हाँ, कहिए। मंदिर में मेरे 2 कमरे हैं, क्या आप वहां रहेंगे? यहाँ श्री राधा दामोदर मंदिर में श्री रूप गोस्वामी की समाधि के सामने? मैं कितना भाग्यवान हूँ। बहुत दिनों से आपकी सेवा करने का मेरा मन कर रहा है। बाद में मुझे लगा कि आपको यहाँ रहने कमरा दूं। ये तो आपकी कृपा है। स्वामी जी, मेरी कोई कृपा नहीं है। ये तो राधा दामोदर और श्रीधर गोस्वामी जिनके पास जाने का मैं आग्रह कर रहा हूँ। आप मेरे साथ आइए। हरे कृष्ण। मैंने श्री जयदयाल दालमिया से बात की थी आपका श्रीमद् भागवतम छापने के लिए, लेकिन स्वामी जी, बुक छापने के लिए वो हमें डायरेक्ट पैसा नहीं दे सकते। मगर स्वामी जी, आप सिर्फ हनुमान प्रसाद पोद्दार से बात कर सकते हैं। हनुमान प्रसाद पोद्दार? वे कहाँ रहते हैं? वे गोरखपुर में रहते हैं। गोरखपुर? हाँ। वो तो यहाँ से 500 मील दूर है। हाँ स्वामी जी, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप उन्हें स्वयं जाकर मिलिए। क्यों? क्या लाभ है? मैं तो उन्हें जानता भी नहीं। इससे क्या सार्थक अर्थ निकलेगा ये भी मैं नहीं जानता। मैं अपना समय और पैसा इस तरह से गवा नहीं सकता। नहीं नहीं स्वामी जी, ऐसा नहीं है। ऐसा मत सोचिए, आप उनसे जरूर मिलिए, क्योंकि हनुमान प्रसाद पोद्दार बहुत ही संत किस्म के आदमी हैं। स्वामी जी, आप उन्हें आपके ग्रंथ जरूर बताइए, और मेरा विश्वास है कि वे आपकी मदद करेंगे। अच्छा। बाबूजी, जो स्वामी जी कल आपसे मिलने आए थे, वे आए हैं। उन्हें आराम से बैठने के लिए कहो। मैं अभी 1 मिनट में आया। जी बाबूजी। नमस्कार स्वामी जी। हरे कृष्ण। आसन ग्रहण कीजिए। मैंने आपके हस्तलिखित देखे हैं, काफी अच्छी रचना है। बहुत बहुत धन्यवाद। चिंता मत कीजिए, मैं इन्हें छापने में आपकी सहायता करूंगा। मेरे लिए ये तो बहुत ही भाग्य की बात होगी। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। एग्जैक्टली। देखिए हमारे यहाँ छपने वाली किताबों की क्वालिटी, हमारी प्रेस पूरी दिल्ली में सबसे अच्छी है। हाँ, मैं जानता हूं श्री शर्मा,
इसलिए हम यहाँ आए हैं। भक्ति वेदांत स्वामी ने अपना श्रीमद् भागवतम का अंग्रेजी में अनुवाद किया है टीका के साथ साथ, और उन्हें छापना है पूरे 12 अध्याय 60 भागों में। ओह, ये तो बहुत बड़ा कार्य है। निश्चित निश्चित मिस्टर शर्मा, और उसका पहला भाग तो अभी तक पूरा हो चुका है। स्वामी जी चाहते हैं कि छपाई का काम शुरू हो जाए। ओह, कोई प्रॉब्लम नहीं है, चिंता मत करो। मैं स्वामी जी के इस कार्य पर प्रथम ध्यान दूंगा। धन्यवाद। अब स्वामी जी आपको 2000 रुपया अग्रिम राशि के रूप में देंगे। जब छपाई और बाइंडिंग का काम पूरा हो जाएगा और उन्हें किताबें मिल जाएगी, वे बाकी रुपए अदा कर देंगे। ठीक है। ठीक है। चली पड़ू बुखारे जग जन मन भारे। हरे कृष्णा। गुरुदेव, बात क्या है? गुरुदेव, भक्त प्रकाश कोई बाहर की अंग्रेजी किताब पढ़ रहे थे। जब मैंने कहा कि ये किताब नहीं पढ़नी चाहिए तो ये नहीं माने और कहने लगे इस किताब को पढ़ने में कोई बुराई नहीं है। प्रकाश, तुम ये सांसारिक पुस्तक पढ़ रहे हो? क्या तुम नहीं जानते कि कोई भी आश्रमवासी इस तरह के हल्के दर्जे की किताब नहीं पढ़ सकते? गुरुदेव, मैं कोई संसारिक साहित्य नहीं पढ़ रहा था, मैं श्रीमद् भागवतम पढ़ रहा था। लेकिन इसका कहना है कि तुम कोई अंग्रेजी साहित्य पढ़ रहे हो। हाँ गुरुदेव, मैं श्रीमद् भागवतम अंग्रेजी में पढ़ रहा था। भागवत अंग्रेजी में? हाँ गुरुदेव। तनिक दिखाओ मुझे। भक्ति वेदांत स्वामी, मुझे पहले पता था कि वे कुछ अप्रतिम करेंगे। क्या आप इस पुस्तक के लेखक को जानते हैं गुरुदेव? हाँ। तो क्या ये सांसारिक किताब नहीं है? नहीं, ये श्रीमद् भागवतम का अंग्रेजी अनुवाद है। क्या लेखक भी सन्यासी है? हाँ, वे महान गौड़िया वैष्णव आचार्य श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती प्रभुपाद के शिष्य हैं। उन्होंने श्रीमद् भागवतम का अंग्रेजी में अनुवाद क्यों किया? कौन पढ़ेगा ये? वास्तव में श्री चैतन्य महाप्रभु ने पहले ही देख लिया कि हमारा सनातन धर्म जरूर पूरी दुनिया में एक दिन फैल जाएगा। मुझे याद है भक्ति वेदांत स्वामी को उस भविष्यवाणी पर पूरा पूरा विश्वास था। मैं आज ये सच होते देख रहा हूँ कि वे महत्वपूर्ण वैदिक ग्रंथों का अंग्रेजी में अनुवाद कर रहे हैं। क्या सनातन धर्म वाकई पूरी दुनिया में फैल सकेगा? हाँ जरूर। श्री चैतन्य महाप्रभु साक्षात ईश्वर हैं और वे जो कुछ भी कहते हैं वो सच होगा। लेकिन क्या यह असंभव नहीं लगता? जब भारतीयों को ही वैदिक साहित्य में कोई आस्था नहीं रही तो हम ये कैसे मान ले कि परदेशी लोग सनातन धर्म को गंभीरता से ले लेंगे? हाँ, सुनने में ये असंभव सा प्रतीत होता है। वास्तव में मुझे भी श्री चैतन्य महाप्रभु की इस भविष्यवाणी पर विश्वास नहीं था, लेकिन भक्ति वेदांत स्वामी की वजह से मैं आज ये मान चुका हूं। मुझे अनुभव है इस अभियान का ये पहला सोपान है। Our business is to take care of your shipping requirements. Stop. We can assure you that your entire shipment will reach Sydney by the end of November. Stop. Thank you. Yours sincerely, Sumati Murarji. Mr. Choksi, ये पत्र आज की डाक से ही रवाना हो जाना चाहिए। यस मैडम। और ये जलदूत कहाँ जाएगा अब? अमेरिका, चाय और कपास के साथ। कलकत्ता से चाय और बॉम्बे से कपास? यस मैडम। ठीक है। ये ऑस्ट्रेलिया को जाने वाली शिपमेंट का क्या हुआ? जलविहार वापस आ रहा है सुएज से 2 दिन में। हम उसे बाद में ऑस्ट्रेलिया भेजेंगे वाया सिंगापुर। गुड। हमें उसके बारे में खबर देते रहना। यस मैडम। थैंक यू मिस्टर चौकसी। ओह स्वामी जी, नमस्ते। हरे कृष्ण चौकसी। आप कभी आए? मैं अभी आया, आप ही की राह देख रहा था। स्वामी जी, मैं अभी तक
मिसेस सुमति मोरारजी से बात नहीं कर पाया। मैं उनको पूछता हूँ अभी। आप कृपया बैठिए। हाँ, ठीक है। मैडम, स्वामी भक्ति वेदांत वृंदावन से आए हैं। वे आपसे मिलना चाहते हैं। उन्होंने आपके चंदे से किताबें प्रकाशित की हैं। अब वे अमेरिका जाना चाहते हैं। वे कहते हैं कि उनके पास निवेशक हैं और वे चाहते हैं कि आप उन्हें हमारे सिंधिया शिप से भेजें। अमेरिका क्यों जाना चाहते हैं? वे वहां कुछ वक्तव्य देना चाहते हैं वहां के लोगों में। अमेरिका? उन्हें पता नहीं अमेरिका कैसा है। वे वहां भूखे मर जाएंगे। वे मछली का तेल दूध में डालते हैं। लेकिन वे वहां जाने के लिए इच्छुक हैं। नहीं नहीं, मैं उन्हें वहां नहीं जाने दूंगी। वे 70 साल के वृद्ध साधु हैं और कमजोर भी। वे वहां भूखे ही नहीं रहेंगे, बल्कि ठंड के मारे मर जाएंगे। ओके, मैं उन्हें ये बोल दूंगा मैडम। स्वामी जी, मैंने आपके बारे में उनसे बात की, पर वे बिल्कुल ही नहीं मानती कि आप वहां जाएं। वे दरअसल आपकी सेहत और उम्र से भी बहुत ही चिंतित है। ओह नहीं, मैं किसी प्रकार की ना नहीं सुन सकता। मुझे जाना ही चाहिए। आप समझ नहीं सकते, ये मेरा मकसद है। मेरे गुरु ने मुझ पर यह जिम्मेदारी सौंपी थी 40 साल पहले। अमूल्य 40 साल वैसे ही चले गए। अब तो मुझे थोड़ा सा प्रयत्न करना चाहिए मेरे मृत्यु से पहले। स्वामी जी, मैं सब समझ सकता हूं, लेकिन आप उन्हें नहीं जानते। यदि वे ना कहती है तो उन्हें बदलना बिल्कुल ही असंभव है। क्या मैं स्वयं उनसे बात कर सकता हूँ? कृपया उनसे विनती कीजिए। तो ठीक है, मैं पूछता हूँ। कृपया कृपया उन्हें समझाने की कोशिश कीजिए। मुझे उनकी मदद की सख्त जरूरत है। आइए स्वामी जी। प्रणाम स्वामी जी। श्री कृष्ण आपकी रक्षा करे। कृपया बैठिए। धन्यवाद। ठीक है स्वामी जी, मैं आपके लिए क्या करूं? मेरे गुरु महाराज की आज्ञा का पालन करने में मेरी मदद कीजिए। स्वामी जी, आप कितने वृद्ध हैं। आप खतरा मोल ले रहे हैं। मैं आपको नहीं जाने दूंगी। चिंता मत कीजिए, मैं ठीक हूँ। नहीं स्वामी जी, मैं आपको जाने नहीं दे सकती। आप 70 वर्षीय हैं और अमेरिका का जीवन सहज नहीं है। आप वहां न सिर्फ अकेले होंगे, बल्कि अजनबी भी होंगे। वहां का मौसम भी काफी ठंडा है। आपको वहां शाकाहारी खाना भी नहीं मिलेगा। मुझे पता है, लेकिन मेरा यह अभियान बहुत ही महत्वपूर्ण है। मुझे भगवान श्री कृष्ण का संदेश पूरे विश्व में फैलाना है। ये जिम्मेदारी मुझ पर मेरे गुरु महाराज ने सौंपी थी जब मेरी मुलाकात उनसे 43 साल पहले हुई थी। लेकिन इतने दिनों के बाद भी मैं असफल रहा। कम से कम अब जीवन के अंतिम दिनों में तो अंतिम बार मुझे प्रयास करने का अवसर दीजिए। आप वृद्ध और अशक्त हैं। आपका वहां कोई सहारा भी नहीं है। वहां आपके सम्मेलन और कार्यक्रम को निवेशक भी नहीं मिलेगा। और आप किन लोगों को धर्म समझाएंगे? आप इसकी चिंता मत कीजिए। मैं तो सिर्फ आपसे अमेरिका का एक टिकट ही तो चाहता हूँ। आपकी अपनी स्टीमशिप कंपनी है। आपके पास बहुत जहाज हैं। क्या आप सिर्फ एक व्यक्ति को जहाज के कोने में बैठकर अमेरिका नहीं जाने दे सकती? स्वामी जी, ऐसा नहीं है। मैं आपको नहीं जाने दूंगी।
क्योंकि जब मैं आपको देखती हूँ तो मुझे अपने पिताजी याद आते हैं और मैं अपने 70 वर्ष के वृद्ध पिता को अकेले अमेरिका कैसे जाने दूं? अच्छी बात है। हरे कृष्ण। आपके पिता आपको एक विनती कर रहे हैं बेटी, उनको अमेरिका का एक टिकट देने की कृपा करो। आप उनकी इतनी भी इच्छा पूरी नहीं कर सकती? ठीक है, तब तो आपकी बेटी को ये करना ही होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। कृष्णा।
कृष्ण, आप, मैं सपना देख रहा हूँ या आप स्वयं है? हाँ प्रिय भक्त, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। जिस तरह तुम एक क्षण के लिए भी मुझे नहीं भूले, उसी तरह मैं भी तुम्हें एक क्षण के लिए नहीं भूला। हे प्रभु, मेरे गुरु ने मुझे आपकी भक्ति हृदय में प्रदान की थी, लेकिन मैं आपकी सेवा ठीक से नहीं कर पाया। मैं उन्होंने दी हुई पहली सूचना का भी पालन नहीं कर पाया। मेरे जीवन का क्या महत्व है? यह शरीर समाप्त हो जाए तो ही ठीक है ना कृष्ण, है ना? नहीं मेरे प्रिय भक्त, अब समय आ गया है। तुम अपने गुरु का स्वप्न साकार करो। अब जीवन के अंतिम समय में जब मेरे हौसले कमजोर हो गए हैं, जब मेरी आत्मा कमजोर हो गई है, तो मैं और क्या प्राप्त कर सकता हूँ? अब मैं ऐसा क्या कर सकता हूँ? जब मैं अपने गुरु से पहली बार मिला था, मैं पश्चिम में जाना चाहता था आपका महत्वपूर्ण संदेश फैलाने के लिए, मगर मैं कामयाब नहीं रहा। अब इस उम्र में तो मैं एक बेकार सा वृद्ध व्यक्ति हूँ। कृष्ण, आप अब मुझे पश्चिम क्यों भेजना चाहते हैं? चिंता मत करो वत्स, मैंने सारा इंतजाम कर रखा है। तुम अमेरिका जाओ और देखो कैसे सारी चीजें अपने आप ठीक हो जाती हैं। तुम्हें वो करने के लिए निश्चित किया है जिसे आज तक किसी ने नहीं किया। अब केवल विश्राम करो। कृष्ण, गुरु कृपा कोइले कृष्णा अधमेर प्रति। गुरु कृपा कोइले कृष्णा अधमेर प्रति। लागिया नीले हेता गुरुए बेगति। गुरु कृपा कोइले कृष्णा। আছে কিছু কার্য তব এই অনুমানে। নাহি কেন ভাঙিবেন এই স্থানে। রজস্তম গুণেরা সবাই আচ্ছন্ন। वासुदेव कथा रुचि नहीं से प्रसन्न। तबे जदि तब कृपा होए यही तुकी। सकली संभव होए তুমি সে কৌতুকে। কিভাবে বুঝালে তার বুঝে সেই রস। এত কৃপা করো প্রভু করি নিজ বস। তোমার ইচ্ছায় সব হয়ে মায়া বাস। তোমার ইচ্ছায় নাশ মায়ার পরশ। তব ইচ্ছা হয়ে যদি তাদের উদ্ধার। বুঝিবি নিশ্চল তবে कथा से तुम्हार। भगवत कथा से तब अवतार। धीर होइया सुने जड़े काने बार बार। शुण्वतां स्वकथा कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तना। हृदयन्तस्थो य भद्राणि विधुनोति सुहृत्सता। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया। भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। तदा रजस्तमो भावा कामलोभादयश्च ये।
चेतयेतयेनावृद्धम् स्थितं सत्त्वे प्रसीदति एवं प्रसन्न मनसो भगवद्भक्ति योगता भगवत्तत्त्वविज्ञानम् मुक्तसङ्गस्य जायते भिद्यते हृदयग्रन्थे छिद्यन्ते सर्वसंशया क्षीयन्ते चास्य कर्माणि दृष्ट एवात्मनीश्वरे रजस्तमो हते काबे पाइबे निस्तार हृदय भद्र सब बुझिबे ताहार भोरे तू जब कथा बरसे चाहे पुत्र आमी दिनहीन कोनो शक्ति नहीं अच्छा এনেছো প্রভু কথা বলিবারে যে তোমার ইচ্ছা প্রভু পুরোইবারে অখিল জগত গুরু বচন সে আমার অলঙ্কৃত করিবার ক্ষমতা তোমার তব কৃপা হলে মোর কথা শুদ্ধ হবে শুনিয়া সবার শোক দুঃখ যে বুঝবে জানিয়াছো যদি প্রভু আমারে নাচতে নাচাও 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 প্রভু নাচাও সে মতে कास्तेर पुतली जथा नाचाओ से मते भक्ति नाई वेदनाई नामे खूब बड़ो भक्ति वेदा नामे बे सार्थक करो भक्ति वेदा नामे बे सार्थक करो गुरु कृपा बोले कृष्णा अधमेर प्रति खिला गिया नीले हेता गुरु गति Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. तो मिस्टर गोल्डस्मिथ, अब आप कुछ कहना चाहेंगे? नमस्कार बंधु। स्वामी भक्ति वेदांत ने मुझसे कहा है कि मैं इनके नए धार्मिक आंदोलन को पंजीबद्ध करूं। ऐसा करने के लिए हमें समावेशन दस्तावेज पर दस्तखत चाहिए होंगे। ये सभी मौजूद हैं। आप इनके हस्ताक्षर ले लीजिए। आप अभी ले सकते हैं? जी हाँ, जरूर ले सकता हूं। मिस्टर रॉय, कृपया हस्ताक्षर कीजिए। मिस्टर हार्वर्ड, आप भी। मिस्टर डॉन, हस्ताक्षर कीजिए। कीत कहाँ है? स्वामी जी, कीत अस्पताल में है। उसे कुछ किडनी की शिकायत है। स्वामी जी, एक बात हमने तय नहीं की थी। आपके इस संस्थान का नाम क्या होगा? ISKCON। इसका मतलब क्या हुआ? इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस। ISKCON। 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 मैं एक बात कहूं, क्या इसे इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर गॉड कॉन्शियसनेस कहना बेहतर नहीं होगा? गॉड ऐसा शब्द है जिसे पश्चिमी लोग समझेंगे, पर कृष्णा शायद वो समझ ना पाए। नहीं, कृष्णा कॉन्शियसनेस। ये शब्द गॉड काफी अस्पष्ट और कमजोर है।
मगर कृष्णा स्पष्ट और वैज्ञानिक है। अगर पश्चिमी समुदाय कृष्ण को नहीं जानता तो इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस उन्हें बताएगी, हर शहर हर गांव में उनकी गरिमा का प्रचार करके। हॉवर्ड, क्या आप ये दस्तावेज पढ़ेंगे? एक, सारे समाज में आत्मिक ज्ञान का प्रचार करना और सभी लोगों को आत्मिक जीवन की शिक्षा देना ताकि दुनिया में अमन और एकता बनी रहे। 2, भागवत गीता और श्रीमद् भागवतम के अनुसार कृष्ण जागरूकता का प्रचार करना। 3, समाज के सारे सदस्यों को एक दूसरे के और कृष्ण के निकट लाना और सभी को बताना कि हर एक आत्मा में परमात्मा का अंश होता है। 4, श्री चैतन्य महाप्रभु के निर्देशानुसार धार्मिक रूप से प्रभु के नाम को जपना और उसका प्रचार करना। 5, सदस्यों और समाज के लिए कृष्ण को अर्पित एक ऐसी पवित्र इमारत खड़ी करना जहां भक्त अपना समय व्यतीत कर सके। 6, सदस्यों को एक सरल और प्राकृतिक जीवन की शिक्षा देने हेतु उन्हें और निकट लाना। 7, ऊपर लिखे गए सभी लक्ष्यों को साधने के लिए नियत कालिक पत्रिकाएं, पुस्तकें और अन्य लेखों को छापना और बांटना। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। जीवन की विधियों को अपनाना, सारी दुनिया को सुंदर शिक्षण है दिलाना। ये है ISKCON, Prabhupada ISKCOन, ये है ISKCOन, Prabhupada ISKCOन। एकता शांति पाने का ये मार्ग दिखाना, लोगों के जीवन का असंतुलन है मिटाना। ये है ISKCOन, मेरा ISKCOन, ये है ISKCOन, मेरा ISKCOन। गीता भागवत शास्त्रों का सार बताना, परम सत्य श्री कृष्ण की शिक्षा दिलाना, आध्यात्मिक जग की सबको झलक दिखाना, कृष्ण के पास जाने की शक्ति दिलाना। वही शास्त्र है वही संस्कृति, उनको सरल बनाना। ये है ISKCOन, हमारा ISKCOन, ये है ISKCOन, हमारा ISKCOन। हरि नाम संकीर्तन में उत्साह बढ़ाना, महाप्रभु चैतन्य का शिक्षण समझाना, कृष्ण लीला भक्ति को आधार बनाकर जगह जगह मंदिरों का निर्माण कराना, सारा जीवन उच्च विचार बने एक सुंदर परिवार। ये है ISKCOन, अपना ISKCOन, ये है ISKCOन, अपना ISKCOन। स्वरूप है कृष्ण दास, ये सत्य का दिलाए सबको विश्वास, 6 तरीकों से भक्तों में प्रीति बढ़ाना, खुद कृष्ण के पास जाना सबको बुलाना,
जीव कृष्ण का संबंध क्या है उसका रहस्य बताना। ये है इस्कॉन, सबका इस्कॉन, ये है इस्कॉन, सबका इस्कॉन। ये लक्ष्य कैसे हम प्राप्त करेंगे, कैसे कृष्ण सेवा में हम आगे बढ़ेंगे। छाप छाप कर किताबों का वितरण करके पूरी दुनिया में आध्यात्मिक क्रांति रचेंगे। इसी जीवन में भूले जीवों को कृष्ण तक पहुंचाना। ये है इस्कॉन, प्रभुपाद इस्कॉन, ये है इस्कॉन, प्रभुपाद इस्कॉन, ये है इस्कॉन, हमारा इस्कॉन, ये है इस्कॉन, हमारा इस्कॉन, ये है इस्कॉन, सबका इस्कॉन, ये है इस्कॉन, सबका इस्कॉन। कल हम दीक्षा सभा का आयोजन कर रहे हैं। जो भी लोग सच्चे निर्मल मन से आध्यात्मिक उन्नति चाहते हैं, उन्हें कृष्ण के एक प्रतिनिधि को अपना आध्यात्मिक मार्गदर्शक मानना होगा। ये मार्गदर्शक आध्यात्मिक गुरु होता है। दीक्षा ग्रहण करने के लिए कुछ नियम हैं। आपके लिए वर्जित है मांस खाना, नशा करना, अनैतिक यौन संबंध और जुआ खेलना। कल की सभा में जो दीक्षा ग्रहण करेंगे वो हैं सैम, मेलेनी, जॉन, रोजर, गैरी, बॉनी, जिम, रॉबर्ट और नैन्सी। हाँ कहिए मैथ्यू साहब। स्वामी जी, क्या मैं भी कल दीक्षा ग्रहण करूं? हाँ क्यों नहीं। यदि आप कृष्ण के प्रति समर्पित होने को तैयार हैं तो मैं अवश्य आपको दीक्षित करूंगा। धन्यवाद स्वामी जी। एक सच्चे आध्यात्मिक गुरु की योग्यता ये होती है कि वो कृष्ण का भक्त होता है। वो कृष्ण को जानता है और इसीलिए कृष्ण का प्रचार कर सकता है। ये अच्छी बात है कि आप में से कुछ ने अपने केश त्याग दिए। ये भी आवश्यक है कि आप वैष्णव तिलक लगाएं। मुकुंद, मेरे कमरे से तिलक तो ले आओ। हमारे 4 मुख्य सिद्धांत क्या हैं? मांस नहीं खाना, जुआ नहीं खेलना, नशा नहीं करना, अनैतिक यौन संबंध नहीं रखना। और आप प्रतिदिन हरे कृष्ण महामंत्र के कितने फेरे जपेंगे? 16 फेरे। आपका नाम है श्याम सुंदर दास। आपका नाम जयानंद दास। और आपका नाम जमुना देवी दासी। आपका नाम है गोविंद दासी। आपका नाम है हरिदास। और आपका नाम है अकिंचन दास। नमो ब्रह्मण्य देवाय गो ब्राह्मण हिताय च
जगत हिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः स्वाहा 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 Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Hare Hare Rama, Hare Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Rama, Hare Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Jagannath Swami, Jagannath Swami, Jagannath Swami, Jagannath Swami. कदाचित कालिंदी तटवतीन संगीत रामो मुरारी नारी बदन कमला शोधन धूप रमा शंभु ब्रह्मामय पति गणेशाचिरपदो जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु में Jagannath Swami, Jagannath Swami, तुझे सब वेणु से हसी सिद्धि पुच्छम कटिपते दुकुलं निक्रांते सहचर कटाक्षं विदधते सदा शिव वृंदावन वसति लीला परिचयो जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे Jagannath Swami, Jagannath Swami. Maham bole stire kalak ruchire neela sikhare vasant sadanta har sahaj bal bhadre na balina subhadra madhyastha sakala sur seva vasardo Jagannath Swami nayan pathgami bhavatu me Jagannath Swami nayan pathgami bhavatu me Jagannath Swami nayan pathgami bhavatu me Jai Jagannath Jai Jagannath Jai Baladeva Jai Subhadra Jai
कृपा बिंदु दुआ সকল সকলে বদলিয়া নিজ মন স্পৃহারি সকল সকলে বদলিয়া নিজ মন স্পৃহারি গুরুদেব সকলে সম্মান করিতে সকলতি গৃহনাথ যথা যত আমার সকলে করিতে সকলতি গৃহনাথ সকলে সম্মান করিতে সকলতি বেহুনাথ যথা যত সকলে সম্মান করুত আমি তবে গাইব হরিনাম সুখে হরিনাম সুখে তবে গাইব হরিনাম সুখে হরিনাম সুখে অপরাধ হবে হত অপরাধ হবে হত গুরুদেব কবে হেন কৃপা লোহিয়ায় কৃতার্থ হইবে কবে হেন কৃপা কবে হেন কৃপা লোহিয়ায় কৃতার্থ হইবে কৃপা শক্তি বুদ্ধি আমি অতি শক্তি শক্তি বুদ্ধি আমি অতি আমি আছি কর্মে সর্বতি আমি আছি যোগ্যতা বিচারে কিছু নাহি পায় তোমার করুণাশা যোগ্যতা বিচারে কিছু নাহি পায় তোমার করুণাশা যোগ্যতা বিচারে কিছু নাহি পায় তোমার করুণাশা কিছু নাহি তোমার করুণাশা
Oh, Krishna,
তুমি দিয়া করো ছায়া শুধু দিয়া ছায়া শুধু তোমার
কৃষ্ণ সে তোমার কৃষ্ণ দিতে পারো তোমার সদ্বুদ্ধি আছে ও কৃষ্ণ সে তোমার কৃষ্ণ দিতে পারো তোমার শক্তি আছে ও কৃষ্ণ সে তোমার কৃষ্ণ দিতে পারো তোমার শক্তি আছে কৃষ্ণ সে তোমার কৃষ্ণ দিতে পারো তোমার শক্তি আছে আমি তো কৃষ্ণ কৃষ্ণ আমি তো কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলি আমি তো কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলি কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলি ভাই তব ভাই তব কাছে ভাই তব ভাই তব কাছে দয়া কৃষ্ণ ঠাকুর দয়াল সাগর দাসে করুণা করু তুমি কি আপন ছায়া সদহে আমাকে আপন ছায়া সদহে আমাকে আপন ছায়া সদহে আমাকে আপন ছায়া সদহে আমাকে তোমাকে করু তোমার চরণ ধরি তোমার চরণ ধরি আমি তোমার চরণ ধরি Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama,
Ram Ram Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama Rama Hare Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Rama
Krishna Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare प्रेम से जोर से गाइए Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare Hare Rama 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 Hare Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare Hare Krishna Krishna Hare 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 Ram Hare Krishna 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 Hare
Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna. তো সবাইকে স্বাগত জানাই। We welcome all of you in the evening session of Ultadanga Junction Road's inauguration, first phase. May I request all the devotees sitting in the terrace, please come down. We are going to start our offerings. May I request Acharya Ratna Prabhu, Palak Parthasarathi Prabhu, Vallabh Chaitanya Prabhu, Radharaman Prabhu. Can you all please come, Navajogendra Prabhu, and be with us? And may I request Padma Mukha Nimai Prabhu to take over the announcements. Thank you. Okay. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna. So we welcome all of you once again in the second session of today's wonderful, memorable event of inauguration and reopening of this birthplace of preaching activities, Krishna consciousness all over the world, the meeting place of His Divine Grace Srila A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada and his spiritual master, His Divine Grace Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur, in this very place just 100 years back, in this very place in the year 1922. So today morning we had wonderful event blessed by designated guests and senior devotees.
So we are starting our second half of this day. We had wonderful kirtan by devotees. We thank them for wonderfully singing the glories of the Lord, the holy name. We are going to start glorification by senior devotees now. We are requesting His Grace Acharya Ratna Prabhu, His Grace Ballabh Chaitanya Prabhu, His Grace Radha Raman Prabhu, His Grace Mohan Govinda Prabhu, His Grace Palak Partha Sarathi Prabhu, His Grace Navayogendra Prabhu, His Grace Radhapad Prabhu, His Grace Balaram Nila Prabhu to kindly come and be with us and kindly bless us in this wonderful afternoon today by glorifying Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur, Srila Bhaktivedanta Swami Prabhupada, and this memorable historical event today. Also, we'll be having the blessings of His Holiness Bhakti Chaitanya Swami Maharaj this afternoon, the chairman of GBC, His Grace Basu Ghosh Prabhu, His Holiness Bhakti Prem Swami Maharaj, His Holiness Bhakti Gaurav Narayan Swami Maharaj, His Grace Radhe Shyam Prabhu, His Holiness Bhakti Prasad Vishnu Swami Maharaj, His Holiness Gopananda Ban Swami Maharaj, and then in the evening we will also have live sessions, live blessings by His Holiness Bodhayan Swami Maharaj, His Holiness Loknath Swami Maharaj, His Grace Ambarish Prabhu, and His Holiness Radhanath Swami Maharaj. And then we will be having Maharati in the evening. So now we would like to request His Grace Acharya Ratna Prabhu to kindly come and bless us by wonderful glorification of Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur, his mood, his mission, and importance of preserving that mood and mission of Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur in preaching Krishna consciousness all over the world, especially in the birthplace of Srila Prabhupada, Kolkata. So may we request His Grace Acharya Ratna Prabhu. So we request His Grace Acharya Ratna Prabhu, His Grace Ballabh Chaitanya Prabhu, His Grace Radharaman Prabhu, His Grace Mohan Govinda Prabhu, His Grace Palak Partha Sarathi Prabhu, His Grace Navayogendra Prabhu, His Grace Radhapad Prabhu, and His Grace Balaram Lila Prabhu to kindly come and be with us. So now may we request His Grace Navayogendra Prabhu to kindly come and bless us. हरे कृष्णा। मैं बांग्ला में बोलूंगा क्योंकि हमारा यहाँ बहुत बंगाली है। नमो विष्णुपादाय कृष्णवेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति सिद्धांत सरस्वती नामिने। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि श्री गौर भक्तबिंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भक्ति सिद्धांत ठाकुर श्रील प्रभुपाद की। तो আপনারা সবাই জানেন যে এই জায়গাটা কত মাহাত্ম্য। কেন আজ থেকে 100 বছর আগে 1922 এখানে প্রভুপাদের সঙ্গে ছিল ভক্তি সিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুরের সাক্ষাৎ হয়েছিল। সেই সাক্ষাৎটা আমরা সাধারণ বলতে পারি না। সেই যে প্রথম সাক্ষাৎ হয়েছিল সেই সাক্ষাতের কারণে আমরা সারা বিশ্বের যারা ভক্তরা এখন ভক্ত হয়েছেন সেই সাক্ষাৎটাই হচ্ছে আমাদের মেইন কারণ। যদি সেই সাক্ষাৎটা না হতো তাহলে আজ আমরা এখানে দাঁড়িয়ে থাকতে পারতাম না। আজ আমরা এই হরে কৃষ্ণ মহামন্ত্র জপ করছি, জপ করতে পারতাম না।
বা আমরা জানতে পারতাম না যে ভগবান কে বা ভক্তদের সঙ্গ প্রভাবে আমাদের কি হবে জানতে পারতাম না। কাজেই এই জায়গাটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ, যেটা কেন ভক্তি সিদ্ধান্ত ঠাকুর হচ্ছেন একজন বিদগ্ধ ব্যক্তি ছিলেন তখনকার দিনে। যখন ভক্তি ঠাকুর আমাদের আগে আমাদের গুরুবর্গগণ আমাদের সিনিয়র ভক্তগণ বলেছেন অনেক, যে উনি সবাই জানে কলি হচ্ছে মানে মানে এটা কি বলে কলি, কলকাতাকে বলে কলি, কলির আশ্রয়, এখানে কলির স্থান। কিন্তু ভক্তি সিদ্ধান্ত ঠাকুর এমন একজন ব্যক্তি, তিনি মায়াপুরে তিনি 100 কোটি নাম জপ করার পর তিনি পুরো পবিত্র হয়ে যাওয়ার পর তিনি কলকাতায় এসেছিলেন এবং এসেই তিনি সারা ভারতব্যাপী 64টা গৌড়ীয় মঠ তিনি তৈরি করেছিলেন। এই যে প্লেসটা, এই প্লেসেই ভক্তি বেদান্ত সাহেব প্রভুপাদের সাক্ষাৎ হয়েছিল, তাই আমরা আসতে পেরেছি। তাই উনি হচ্ছেন সিংহের মতো। তখন যেরকম ছিল আপনার নেড়া নেড়ি সাই দরবেশ বিভিন্ন রকমের অপসম্প্রদায় যে মায়াবাদী তখন ছেয়ে গেছিল গ্রামে গঞ্জে শহরে, কিন্তু সেই রকম তাতে থেকে ডিফেক্ট দেওয়ার মতন তখন কেউ ছিল না। একমাত্র ভক্তি সিদ্ধান্ত ঠাকুর ছিল প্রভুপাদ, তিনি এগুলোকে ডিফেক্ট করেছিলেন। কেন তিনি এমন একজন ব্যক্তি, ওনার বাবা ছিলেন ভক্তিবিনোদ ঠাকুর, তখন তিনি ম্যাজিস্ট্রেট, ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট। ভক্তিবিনোদ ঠাকুর একজন বিদগ্ধ, কেন উনি যেরকম আমরা অনেক কবি যেরকম রবীন্দ্রনাথ, কাজী নজরুল ইসলাম, আমরা রবীন্দ্রনাথকে সবচেয়ে আমরা বেশি করি, কিন্তু ভক্তিবিনোদ ঠাকুর এমন একজন কবি, তিনি আধ্যাত্মিক কবিতার মাধ্যমে সারা বিশ্বকে প্রভাবিত করেছেন। আধ্যাত্মিক, যেমন আমরা ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের যেমন অনেক কিছু অনেক গান আছে কবিতার মাধ্যমে, কত সুন্দর। যেটা আমার গুরু মহারাজ ভক্তিচারু স্বামী গুরু মহারাজ উনি সবসময় বলতেন যে মানস দেহ গেহ যো কিছু মোর ওর পিলু তোহা পদে নন্দ কিশোর। এই যে দেখুন পবিত্র এই যে কবিতা এত সুন্দর মধুর, তার মধ্যে কি অর্থ আছে, সেটা ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের লেখা। এরকম বলতেন যে কি এই কবিতাগুলা এবং কি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে ছেড়ে যেত, কিন্তু যিনি উনাকে জানতে পারতো না কারা, জড়বাদী মানুষেরা। ভক্তিবিনোদ ঠাকুরকে জানতে পারেনি, সেটা কিন্তু ভক্তি ঠাকুর শিল প্রভুপাদ তিনি করেছিলেন। কিন্তু সবচেয়ে বেশি আমাদের ভক্তি বেদান্ত স্বামী প্রভুপাদ তিনি সারা বিশ্বব্যাপী এটাকে ছড়িয়ে দিয়েছিলেন। এবং যে মহাপ্রভু যে বাণী, পৃথিবীতে আছে যত নগরাদি গ্রাম সর্বত্র প্রচার হইবে মোর নাম, এই যে নামটাকে প্রভুপাদ ছড়িয়ে দিয়েছিলেন। কার নির্দেশে? একমাত্র ভক্তি সিদ্ধান্ত ঠাকুর শিল প্রভুপাদের নির্দেশেই। যেটা এখানে সাক্ষাৎ হয়েছিল প্রথম, সেই সাক্ষাতেই উনাকে বলেছিলেন, আপনারা সবাই জানেন যে আপনারা শিক্ষিত যুবক, আপনারা ইংলিশতে কেন বিদেশে গিয়ে প্রচার করছেন না? ওই যে একটা নির্দেশ, একটি উপদেশ, সেই নির্দেশেই আজ সারা বিশ্বব্যাপী সবাই এই মহাপ্রভুর আন্দোলনে সবাই আলোড়িত, সবাই মগ্ন। তাই আজকে এই বিশেষ ভক্তি শিল প্রভুপাদের যে আবির্ভাব তিথি, ওনার কাছে আমি প্রার্থনা করি ওনার কৃপায় যেন আমি যেন সমস্ত ভক্তদের সঙ্গে মিলেমিশে থাকতে পারি, আর এই আন্দোলনে যেন যোগদান করতে পারি, আর ওনার বাণী নির্দেশ আদেশ সেটা পালন করতে পারি। আর সমস্ত ভক্তদের কাছে আমার প্রার্থনা, আপনারা কৃপা করবেন যেন ঠিকভাবে থাকতে পারি। হরে কৃষ্ণ 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 হরে হরে, হরে রাম 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 হরে হরে। শিল ভক্তি সিদ্ধান্ত ঠাকুর শিল প্রভুপাদ কি নিতাই গৌর প্রেমানন্দে। হরে কৃষ্ণ। ধন্যবাদ শ্রীপাদ নবযোগেন্দ্র প্রভু, অত্যন্ত সুন্দর এবং সুমধুর ভাবে আমাদের কাছে শিল ভক্তি সিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর
এবং শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর এবং শ্রীল ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদের প্রচার ধারা এবং তাদের মনোভাব ব্যক্ত করার জন্য। তো আমি অনুরোধ জানাচ্ছি শ্রীপাদ পালক পার্থ সারথী প্রভুকে কৃপা করে আমাদের কাছে শ্রীল ভক্তি সিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুরের মহিমা বর্ণনা করার জন্য। May we request His Grace পালক পার্থ সারথী প্রভু। हरे कृष्णा। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिने नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति सिद्धांत सरस्वती नामिने। शिवार्ष भानुवी देवी द्वैताय कृपाब्धये कृष्ण संबंध विज्ञानदायिने प्रभवे नमः। माधुर्योज्ज्वल प्रेमाढ्य श्री रूपानुग भक्ति श्री गौर करुणा शक्ति विग्रहाय नमस्ते। नमस्ते गौरवाणी श्रीमूर्ते दिनतारिणे रूपानुग विरुद्ध प्रसिद्धांत धांत हारिणे। हरे कृष्ण। तो आपनादेर सकलके स्वागत जानाচ্ছি আজকের এই অনুষ্ঠানে। তো আজকে আমরা বিশেষ দিনে সকলে সমবেত হয়েছি। তো ছিল প্রভুপাদের সাথে ভক্তিবেদান্ত স্বামী ছিল প্রভুপাদের সাথে ছিল ভক্তি সিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুরের এই জায়গাতে মিলন হয় আজ থেকে 100 বছর পূর্বে। তো আমরা জানি যে ছিল প্রভুপাদ তিনি ওনার একজন বন্ধু ছিল। ওনার বন্ধু বলছিল একজন সাধুর সাথে দেখা করতে যাব। तो उन्हें बोले আমি অনেক সাধু দেখেছি কেননা अच्छा हिंदी में भी बोल सकते हैं ना हिंदी में यस। तो उनका जो एक प्रभुपाद के एक दोस्त थे तो उन्होंने बोला एक साधु को हम देखना चाहते हैं, साधु के साथ जो हम मिलने के लिए जाते हैं। तो उन्होंने बोला मैं बहुत सारे साधु को देखा क्योंकि प्रभुपाद के जो पिताजी थे उन्होंने बहुत साधु को सेवा करते थे। हर दिन उनका घर में इनवाइट करके उनको खिलाते थे और उसके बाद उनसे प्रार्थना करते थे जो मेरा जो पुत्र है वो पुत्र राधानी का सेवक बने। तो उन्होंने बोला मैं बहुत सारे साधु को देखा लेकिन उन्होंने उनका जो दोस्त थे उन्होंने बोला नहीं ये जो साधु है स्पेशल है। तो चलिए तो उसके बाद उन्होंने जब आए जब प्रणाम किया इस जगह पर प्रणाम किया ऊपर में छत का ऊपर में तो उन्होंने पहले बोल दिया जो आप ऐसे शिक्षित मतलब युवक है आपको चाहिए चैतन्य महाप्रभु का जो वाणी है पाश्चात्य जगत में प्रचार करने का। तो श्री प्रभुपाद ने कहा जो हम लोग क्या पराजित है अभी हमारा देश को तो स्वाधीन करना चाहिए उसके बाद हम लोग भगवत भक्ति का प्रचार कर सकते हैं। तो उन्होंने कहा भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने जो कृष्ण भावना में तो जो आंदोलन है स्वाधीन पराधीन इसका ऊपर कोई डिपेंड नहीं होता है ये जो आध्यात्मिक है। तो उसके बाद उनके साथ बातचीत हुआ। श्री प्रभुपाद ने पहली बार उन्होंने भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर से मतलब पराजित हो गया और उन्होंने सोचा जो वास्तव में श्री चैतन्य महाप्रभु का जो आंदोलन है एक सही व्यक्ति के हाथ में है, सही व्यक्ति मतलब इनको लीड करे और उन्होंने मन में श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर को उन्होंने अपना गुरु मान लिया। ये जो मतलब जो वाणी है ये वाणी क्या है बीज होता है गुरु का जो वाणी होता है एक बीज रूप में होता है। तो उन्होंने इस बीज को उन्होंने धारण करके रखे थे उनका हृदय में और बाद में धीरे धीरे हम देखते हैं 1965 उन्होंने उनका गुरुदेव का आदेश पालन करते हुए पाश्चात्य जगत में गए और वहाँ पर इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्ण कॉन्शियसनेस उनका स्थापना किया। अर्थात उनका बीज जो था ये जो बीज उनको मिला था उनको उन्होंने वपन किया कहाँ पर पाश्चात्य जगत में और वो जो पेड़ है धीरे धीरे बढ़ते जा रहे और सारे विश्व को मतलब फैल गया सारे विश्व में फैल गया ये कृष्ण भावना आंदोलन। और कितना सारे बद्ध जीव ये जो पेड़ है ये जो चैतन्य महाप्रभु का वृक्ष चैतन्य महाप्रभु वृक्ष का जो वृक्ष है उनका नीचे सब लोग शेल्टर लिया और इसमें क्या है जो प्रेम फल है कृष्ण भावनामृत का जो प्रेम फल है वो आस्वादन कर रहे। तो ये जो बीज यहाँ पर प्राप्त हुआ मैं श्रील प्रभुपाद का एक बांग्ला लेक्चर में सुन रहा था उन्होंने कहा मायापुर में दे रहे थे लेक्चर तो उन्होंने बोल रहे थे साधु संग सर्वशास्त्री कह लव मात्र साधु संगे
सर्वसिद्धि है। मतलब कुछ समय के लिए साधु का संग होगा तो आपको सर्वसिद्धि हो जाएगा। तो उन्होंने इनका इस जगह का एग्जाम्पल दिया। उन्होंने कहा मेरा भी ऐसे साधु का संग हुआ। कहाँ पर हुआ? इस जगह पर। तो प्रभुपाद ने कहा उस साधु का संग, उनका जो वाणी है, उस वाणी के माध्यम से इतना प्रचार हुआ। तो बहुत लोग कहते मुझको मैं वंडरफुल कर दिया, वंडरफुल कर दिया। तो प्रभुपाद ने बोला मैं तो कुछ नहीं किया, मेरा कुछ योग्यता नहीं है। उन्होंने कहते हैं धान नहीं, तलवार नहीं, हृदय नाम सरदार। मतलब कुछ नहीं लेकिन हृदय नाम सरदार। लेकिन है, मतलब आप बोलेंगे मेरा क्वालिफिकेशन ए है, मैं कुछ गजामिल नहीं दिया बाबा, मैं कुछ गजामिल नहीं दिया। उन्होंने बोला मतलब जो एज इट इज मैं गुरु पद्मों से जो सुना है उसको मैं एज इट इज उपस्थापन किया। ये मेरा मतलब क्वालिफिकेशन, मेरा और कुछ क्वालिफिकेशन नहीं है। तो हम देखते हैं जो यहाँ पर ये जो बीज मतलब उन्होंने प्राप्त किया, उसके बाद इस्कॉन का महिरू मतलब बढ़ते जा रहे, उसका बीज यहाँ से प्राप्त हुआ। साधु का संग, थोड़ा कुछ मूवमेंट का साधु का संग में कितना प्रभाव है। तो इसका एक मतलब परफेक्ट एग्जाम्पल है। कुछ समय के लिए साधु का संग करने से क्या होता है, इनका मतलब परफेक्ट एग्जाम्पल ये है। तो हम देखते हैं चैतन्य महाप्रभु जब नवद्वीप में थे, उन्होंने तो विद्या रस में थे, भक्तों के साथ मतलब तर्क करते थे। लेकिन बाद में उन्होंने जब काशी ये गया, क्या नाम है, इलाहाबाद, वो जो विष्णुपाद पद्म गया में जब गया पिंड देने के लिए उनका पिताजी का, तब उनके साथ उनका जो गुरुदेव ईश्वर पुरीपाद का मिलन हुआ और उनसे उन्होंने दीक्षा लिया। दीक्षा लेने के बाद उनका भाव का मतलब परिवर्तन हुआ। और बाद में उन्होंने जब कान्हा नटसला में आया, कान्हा नटसला में तब भगवान को दर्शन किया और भगवान ने उनको आलिंगन दिया और उसके बाद भगवान अप्रकट हो गया। तो उस समय से महाप्रभु का जो भाव है, कृष्ण कहाँ है, कृष्ण कहाँ है, कृष्ण कहाँ है, ये भाव मतलब वहां से शुरू हो गया। तो भाव शुरू हुआ किधर से? शुरू हुआ गया से, जब गुरुदेव का साथ उनका मिलन हुआ, उसके बाद जो कान्हा नटसला में भगवान के साथ दर्शन हुआ, उसके बाद वो जो वीर भाव प्रकाश हुआ। तो उसी प्रकार हम देखते हैं श्रील प्रभुपाद ऐसे हम देखेंगे मतलब एक मतलब भारत का जो स्वाधीनता आंदोलन में उन्होंने योगदान कर रहे थे, उसके बारे में सोच रहे थे। लेकिन भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के साथ जब उनका मिलन हुआ, तब से ये जो कृष्ण भावनामृत आंदोलन में उनका जो प्रचार करने का जो भावना है उन्होंने प्राप्त हुआ और उसके बाद उन्होंने ये प्रचार शुरू किया। तो श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर उन्होंने कभी कभी प्रभुपाद को जो पूछा जाते है आपके गुरुदेव के बारे में कहिए, तो उन्होंने कहते हैं मैं गुरुदेव के बारे में क्या कहूँ, उन्होंने तो वैकुंठ मैन है, उनके बारे में मैं क्या कहूँ। तो श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर भगवान का नित्य पार्षद है। आप देखते हैं एक मंजूरी रूप में सेवा कर रहे हैं, नित्य पार्षद है। तो उन्होंने यहाँ पर आए हम लोग को उद्धार करने के लिए। एक बार उन्होंने सिर्फ इस पृथ्वी पर नहीं, चंद्रमा एक बार देख रहे थे, चंद्र की तरफ देख रहे भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, और जब देख रहे थे तो उन्होंने बहुत टाइम से चंद्रमा को देख रहे थे। तो उनको डिसाइपल पूछ रहे थे आप क्या देख रहे चंद्रमा की तरफ, तो उन्होंने बोला चंद्रमा में वहां पर जो भक्त है, व्यक्ति लोग है, वहां पर कृष्ण विमुख है, तो वहां पर जाकर पिचिंग करना है। तो सिर्फ भक्ति सिद्धांत ठाकुर उन्होंने चंद्र में भी प्रचार करना चाहते, वहां पर क्या चल रहा है वहां पर यहाँ से खड़ा होकर तो उन्होंने वो देख पाए। तो एक है वैकुंठ मैन है, ठीक है ना, भगवान का नित्य पार्षद है। तो श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद गुरुदेव श्रील भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद को उन्होंने कहा आप चैतन्य महाप्रभु का आंदोलन को बढ़ाएंगे तो आपका मंगल होगा, सिर्फ आपका नहीं, आपको जो मदद करेंगे उनको भी मंगल होगा। तो यहाँ पर बहुत सारे भक्त लोग हैं जो मतलब प्रभुपाद को मदद करे। यहाँ पर देख रहे बहुत सारे वैष्णव भक्त लोग है, यहाँ पर अनंगमन प्रभु, राधा रमन प्रभु है, बल्लभ चैतन्य प्रभु है और बहुत सारे लीडर नवजगंत प्रभु। तो सब लोग प्रभुपाद को जो मूवमेंट है उसको मतलब मदद कर रहे हैं। तो मैं भी कोशिश कर रहा हूँ इन लोगों को सबको असिस्ट करने के लिए, उनको सेवा करने के लिए। खुद का तो योग्यता नहीं है,
उन लोग डायरेक्ट प्रभुपाद को सेवा करने के लिए। तो मैं भी प्रार्थना करता हूँ जो आप सारे वैष्णव को मैं सेवा कर पाऊँ और इस मूवमेंट में रह पाऊँ, जैसे प्रभुपाद का और श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर का कृपा हमको प्राप्त हो। जय श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद की, श्रील भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण। Thank you very much, Palak Partha Prabhu. So may we request now His Grace Radharaman Prabhu, the personality who has been very instrumental with his dedication and his sincerity to bring this place, this entire project, the situation what we can see now. So we are excited to hear from him, his journey and his wonderful efforts behind all these things. Hare Krishna. हरे कृष्णा। श्रीला भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज की, श्रीला प्रभुपाद की। So today is very auspicious day, appearance day of His Divine Grace Bhakti Siddhanta Saraswati Maharaj. As we know, in 4.3 billion years, ब्रह्मा जी 12 hours, ब्रह्मा जी के 12 घंटे जो 12 घंटा होता है वो 4.3 बिलियन ईयर्स का होता है। और ब्रह्मा जी के 12 घंटे में जो चतुर्युगी है, यानी सतयुग, त्रेता युग, द्वापर, कलयुग, इन 4 युगों का 1000 साइकिल्स होता है, 1000। और ये कहा गया है हमारे शास्त्रों में कि ब्रह्मा जी के एक दिन में 12 घंटे में स्वयं भगवान कृष्ण सिर्फ एक बार आते हैं, एक द्वापर युग में। तो जो 999 द्वापर युग होता है उसमें जो कृष्ण अवतार होते हैं एक्चुअली वो विष्णु के अवतार होते हैं, नॉट द ओरिजिनल कृष्णा। तो बहुत हम लोग सुनते हैं कि कृष्ण भगवान तो विष्णु के अवतार हैं, तो सही बात है। 999 द्वापर युग में जो कृष्ण भगवान आते हैं वो विष्णु के अवतार होते हैं, लेकिन स्वयं भगवान कृष्ण जो कि महाविष्णु, गर्भोदक्ष विष्णु सबके सोर्स हैं, वो सिर्फ एक द्वापर युग में आते हैं। और वो कौन सा द्वापर युग है? वो द्वापर युग है जिसके कलयुग में चैतन्य महाप्रभु आते हैं, क्योंकि 999 जो कलयुग है उसमें चैतन्य महाप्रभु का जन्म नहीं होता, आविर्भाव होता नहीं है। उसी कलयुग में होता है जिसके पहले द्वापर युग में भगवान कृष्ण स्वयं जो सभी भगवान सभी चीजों का सूत्र है, उस जिस द्वापर युग में आते हैं उसी के नेक्स्ट कलयुग में चैतन्य महाप्रभु आते हैं। हमें पता है कि 500 साल पहले चैतन्य महाप्रभु आए थे, यानी इससे पहले का जो द्वापर युग था उसमें स्वयं भगवान कृष्ण आए थे 5147 जितना भी जो दिन है उससे पहले। और हम जानते हैं कि चैतन्य महाप्रभु ने क्या बेनेडिक्शन दिया है, उसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। जो सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग के लोग अलग अलग सिद्धियों से प्राप्त नहीं कर सकते, चैतन्य महाप्रभु ने ऐसा बेनेडिक्शन दिया है कि सीधा गोलोक में एकदम एंट्री सबको दे रहे हैं, जो डिजर्विंग नहीं है उनको भी दे रहे हैं। तो ये चैतन्य महाप्रभु 500 साल पहले वो बोले थे कि हर एक ग्राम में मेरे नाम का प्रचार होगा। वो इंस्ट्रक्शन 500 साल पहले चैतन्य महाप्रभु ने दिया था। और 500 साल के बाद, लगभग 450 साल के बाद 1922 में वही सेम इंस्ट्रक्शन was planted in the heart of Srila Prabhupada, Abhay Charan Day, young Abhay Charan Day। तो समझ रहे हैं कितना रेयर है। ब्रह्मा जी का 12 घंटा में 4.3 बिलियन ईयर्स होता है, 4.3 बिलियन ईयर्स। और इन 4.3 बिलियन ईयर्स का ये जो चैतन्य महाप्रभु 500 साल पहले बोले, व्हाट ही चैतन्य महाप्रभु told, predicted 500 years back, that message, that seed was planted in the heart of Srila Prabhupada, Abhay Charan, young Abhay Charan Day in 1922, exactly 100 years ago on this rooftop. So this is a very, very rare occasion। और हम सब 100 साल के बाद
उस आदेश के 100 साल के बाद हमें पता है कि 1918-1930 में यहाँ पर गौड़िया मठ था। भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज बाग बाजार में सिर्फ 5 या 6 साल रहे, लेकिन इस स्थान पर वो 12 साल थे। यहीं पर प्रिंटिंग प्रेस से लेके सारे यहाँ से जितने भी गौड़िया मठ के आश्रम थे यहीं से स्थापित हुए। तो 1930 में जाने के बाद में यहाँ पर 3 टेनेंट्स आए और फिर वो लोग शिफ्ट हो गए। ये रेंटेड प्लेस था। ये प्रॉपर्टी एक ट्रस्ट को बिलोंग करता था, श्री श्री राधा जीव ठाकुर। उनका मंदिर है एजीसी बोस रोड में, यहीं पे पास में ही है। तो वो उनका स्टेट था और इससे जो रेंट आता था उनका पूजा चलता था। तो 2001-2002 में एक इस्कॉन के पदयात्रा के डिवोटी हैं कृष्णानंद प्रभु, तो उन्होंने आए भी हुए हैं, यहाँ पर हैं भी वो प्रभु। तो उन्होंने इसको खोजा और हमारे इस्कॉन कोलकाता के मैनेजमेंट को बताया। वरदा कृष्ण प्रभु हमारे वाइस प्रेसिडेंट थे, उनको बताया और इस तरह स्टार्ट हुआ इस बिल्डिंग को एक्वायर करने का प्रोसेस। मैं संक्षिप्त में बता रहा हूँ। 2000 यहाँ पर एक कंट्रैक्टर था, वो इसको तोड़ना चाहता था। तो बहुत सारे फाइट्स हुए, बहुत सारे डिवोटीज ने उसके लिए फाइट किया और अल्टीमेटली 2008 में हम इसको खरीद सके। और इंसिडेंटली उस कंट्रैक्टर का नाम था शिशुपाल सिंह। ये भी बहुत ही हास्यपद है। बहुत लोगों को आश्चर्य लग रहा है कि कोई अपने बच्चों का नाम शिशुपाल या रावण रख सकता है, लेकिन ऐसे भी लोग हैं जो रखते हैं। तो शिशुपाल सिंह जी से थोड़ा कठिन था, लेकिन 7 वर्ष लगे और फिर पैर पड़ना पड़ा, उनका पैर पकड़ना पड़ा मजबूती से और फाइनली उनको समझ में आया कि वो भी कुछ नहीं कर सकते। तो ही एग्रीड और फिर साइन किया। तो जो हमारा डीड है उसमें आनंद मोहन प्रभु साइन कर रहे हैं, शिशुपाल सिंह साइन कर रहे हैं, लाइक दैट 2008 में मिलने के बाद भी यहाँ पर अंदर में 3 टेनेंट्स थे। तो सबसे पहले जो फ्रंट जहाँ पर आप अभी एग्जीबिशन देख रहे हैं, वहां पर एक कारखाना था उनका, यहाँ पर एक छोटा सा 2 रूम्स थे उनके। तो वो बड़े अच्छे लोग थे, उन्होंने तुरंत राजी हो गए। वी पेड हिम, दे मूव। लेकिन अदर हाफ में एक महिला रहती थी और अदर हाफ में एक लॉयर रहते थे। उनसे 10 साल का फाइट चला और अच्छे लोग हैं। एक्चुअली हम लोग बहुत ही ग्रेटफुल हैं उनका, क्योंकि वो कंट्रैक्टर आके उनको डराता था, वो गुंडे लाके उनको धमकी देता था, पैसे का लोभ देता था, लेकिन वो माते जी एकदम टस से मस नहीं हुए। सोचिए अगर वो मान जाते और चले जाते तो ये जो भी ये इतना जो धार्मिक स्थल है वो कहीं किसी कूड़े का ढेर बना रहता, कहाँ लुप्त हो जाता पता भी नहीं चलता। तो हम उनका बहुत ग्रेटफुल है कि वो लोग एक बोलते हैं ना कि अपने फ्रंट में बैठे रहे और टाइम लगा, लेकिन अंशुल प्रभु, हमारे जगदीश गौरांग प्रभु, सोम प्रभु, आनंद मोहन प्रभु, सब लोग आते थे। हम लोग अलग अलग नाट्य करते थे, बोल नहीं सकते डिटेल में, लेकिन उसके अंत में फिर वो लोग राजी हुए, खाली हुआ। फिर 2018 में जब पूरी तरह से खाली हो गया तो हम लोग इसका रिस्टोर करने लगे। रिस्टोरेशन का भी मैं संक्षिप्त में बताता हूँ। हम लोग पाश्चात्य जगत में we are very proud of, West is very proud of organic culture. They are very fond of organic lifestyle. आज जो लोग का एक फैशन स्टेटमेंट होगा, अरे आई एम ईटिंग ऑर्गेनिक फूड, इतना बड़ा प्राउडली बोलते हैं। और उस ऑर्गेनिक फूड को उगाने के लिए पता नहीं क्या क्या होना, दूसरा ऑल दैट इज स्कैम। भारतीय जो कल्चर था, हमारा खाना तो छोड़िए, खाना परिधान, इवन हम लोग जो बिल्डिंग में रहते हैं वो भी पूरा 100% ऑर्गेनिक था। इस बिल्डिंग में जो भी चीज यूज हुआ है उसको हम खा सकते हैं, यस एवरीथिंग। राघव पंडित, हमको पता है कि उनके यही पानीहट्टी में उनका किचन है। तो उनकी जो वाइफ थी, शी यूज्ड टू मेक स्वीट्स फ्रॉम गंगा स्लिट, गंगा मड, जो गंगा, हाँ सिस्टर। तो उनके राघव पंडित की जो सिस्टर थी वो गंगा की मिट्टी से मिठाई बनाती थी। उसमें गंगा का मिट्टी होता है, कैल्शियम युक्त होता है, बहुत अच्छा होता है। पहले बच्चे भी मिट्टी खाते थे और जब अभी हम लोग 1600 या 2000 का बच्चों को इंजेक्शन लगवाते हैं, उस मिट्टी में वो सारा उसका भी निवारण था और प्लस फ्री में कैल्शियम भी मिल जाता था और वो बहुत अच्छा मिठाई होता। चैतन्य महाप्रभु यूज्ड टू लाइक इट वेरी मच और स्पेशली उनके लिए बना के भेजते थे पुरी में। तो उसी मिट्टी के ईंट से बना हुआ है ये मकान।
यानी वो जो मटेरियल है वो खाने युक्त है। दूसरा इसका मेन इंग्रेडिएंट है सुर्खी। जो सुर्खी होता है वो भी उसको ब्रिक डस्ट बोलते हैं, ब्रिक का ही डस्ट होता है, तो दैट मीन्स दैट इज ऑल्सो ईटेबल इन अ सेंस। तीसरा इसका मेन इंग्रेडिएंट है लाइम स्टोन, चूना। चूना भी खाते हैं, पान में खाते हैं। और इसका मसाला में जो मिक्स करने का, जो पहली बार जब हम लोग, ऑल्दो मैं छोटे बचपन से हमारा बैकग्राउंड है कंस्ट्रक्शन का, लेकिन चून सुर्खी का कभी मैं देखा था लेकिन उतना क्लोज से नहीं देखा था। तो जब हम लोग पता किए कि कौन ओल्ड कंस्ट्रक्शन कर सकता है, तो वो व्यक्ति बोला कि हमको बड़ा बाजार जाना है। तो मैं बोला कि बड़ा बाजार में कौन सा कंस्ट्रक्शन का मार्केट है। फिर वो लिस्ट बनाया, हम लोग गए, तो हम लोग मसाला पट्टी में गए। मसाला मतलब स्पाइसेस जहाँ मिलता है, और वो अलग अलग तरह के स्पाइसेस, गुड़ खरीदा, और अलग अलग सब्जियां खरीदा, भतुआ होता है, क्या क्या होता है, और चिट्टी गुड़ होता है, ये सब मेन इंग्रेडिएंट्स हैं। और उसको लेके आया, उसका प्रोसेस है, पानी में उसको सड़ाते हैं और उसको मिक्स करते हैं उसके स्लरी में। और जब बिल्डिंग बन गया तो जब छत है, तो छत में जानते हैं 100 लीटर मस्टर्ड ऑयल डाला हुआ है। 100 लीटर मस्टर्ड ऑयल, उसको ट्रीटमेंट करते हैं वाटरप्रूफ बनाने के लिए। तो जो ऊपर का छत है उसमें 100 लीटर मस्टर्ड ऑयल से हम लोग ने मसाज किया। पहले 1 महीना तक इस छत की पिटाई होती है मार मार के बैठाते हैं उसको। और जो छत का जो ये थिकनेस है, ये ऑलमोस्ट 17 इंच थिकनेस है, 17 इंच। आप बिल्डिंग में देख रहे हैं कि अभी एसी नहीं है, लेकिन बहुत ठंडा है, समर में भी वैसे ही रहेगा। तो ये हमारा भारतीय संस्कृति है। बहुत लोग, अगर आप लोग पहले भी आए होंगे तो देखेंगे कैसा था। तो हमारी जो भारतीय सभ्यता है, इसी तरह के नेग्लेक्ट से एकदम लुप्त हो गई है, हमें दिखाई नहीं दे रहा उसकी सुंदरता। लेकिन जब हम उसको, जो अनवांटेड, जैसे हम लोग जब इसमें आए तो बहुत सारा पार्टीशन था, ये था, जब उसको हटाने लगे तो अपने आप ये बिल्डिंग सुंदर होती गई। इसमें कुछ नया नहीं किया हुआ है, 1918 में जैसा था वैसा बनाया हुआ है। अभी देखिए, पहले जब ये बिल्डिंग का हालत खराब था तो आनंद मोहन प्रभु बता रहे थे कि ये सब बहुत सुंदर लग रहा है। अभी ये बनने के बाद में लग रहा है कि ये बिल्डिंग क्यों है पास पास, वो भी तो भद्दा लग रहा है। एनीवे तो देखिए, ये 1918 का मकान है, कितना सुंदर है। तो भारतीय संस्कृति बहुत सुंदर है। तो हम लोग को प्रयास करना पड़ेगा कि जो भी जो हमारा रूट्स है, रूट्स की तरह हम लोग वापस जाएं, पाश्चात्य देश के लुभावने सपने की तरफ ना जाएं। और जब हम अपने रूट्स की तरफ लौटेंगे तो जैसा आनंद हम इस बिल्डिंग में पा रहे हैं आज, वैसे आनंद हम अपने जीवन में पाएंगे। तो अभी और भी हमारे स्पीकर्स हैं, तो यहीं पर मैं अपना एंड करता हूं। हरि बोल, हरे कृष्णा। Thank you very much, Radharaman Prabhu. What a journey. And we can see the result here today. So may we request His Grace Ballabh Chaitanya Prabhu now to kindly come forward and bless us with his wonderful glorification of Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur. ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। हरे कृष्णा। तो सभी भक्तों का हार्दिक रूप से स्वागत है। और ये ऐतिहासिक स्थान पे हम बैठे हैं, हमारा परम सौभाग्य है। आज सुबह से हम लोग बहुत सारे हमारे प्रभुपाद जी के शिष्यगण यहाँ आए, और बहुत सारे डिवोटीज आए, और बहुत सारे उन्होंने भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर श्रील प्रभुपाद जी के ऊपर चर्चा की। तो मैं सोच रहा था, मुझे एक साक्षात्कार हुआ कि ये मिलन स्थली है, ये मिलन स्थली है गौड़िया वैष्णवों की। और यहाँ पे ये मिलन स्थली है भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद जी और प्रभुपाद जी की, जैसे सब लोग बता रहे हैं। और
ये मिलन स्थल है हम सबों की। हम इस स्थान पे हैं, अभी सभी आज जितने भी मंदिर हैं सब एक साथ यहाँ एकत्रित हुए हैं। अल्बर्ट रोड से, गौशाला से, मोती झील से, पानीहाटी से, गोविंदा से, गुरुसदय, धनबाद, हबीबपुर, मायापुर, वृंदावन, विजयवाड़ा, अच्छा अनंगमोहनपुर याद करा रहे हैं, मगर सभी हमारा परम सौभाग्य है ये। प्रभुपाद जी हमेशा कहते थे कि भक्तों के संग में शक्ति है। तो ये जो जगह है ये मिलन स्थली है हम सबको मिलाने की। मैंने देखा सभी भक्त कोई कहां से भी हो मगर बहुत प्रेम से हम लोग सेवा कर रहे थे आज, और सबको अपनी अपनी सेवा से लगाव था इतना कि वो सेवा अच्छे से हो, अच्छे से कर पाए। मैं देख रहा था कल 2 दिन हम लोग को इस्कॉन दमदम मोतीझील को प्रसाद, आफ्टरनून प्रसादम, कुकिंग, डिस्ट्रीब्यूशन सेवा की सेवा, सारे भक्त लोग ऐसा लग रहा था कि मानो उत्सव हो रहा है इस्कॉन दमदम में। सब लोग सेवा में व्यस्त हैं और कई सारे भक्तों ने माने सोया नहीं, 2 रात 3 रात, इतना वो हर एक चीज को बहुत डिटेल से वो सेवा करने का प्रयास कर रहे थे, बहुत सुंदर ढंग से करने का प्रयास करते हैं। अच्छा, आशा करता हूँ आपको प्रसाद अच्छा लगा होगा। मतलब मगर सुबह के लोग शाम को नहीं है अभी, इसलिए गलत जगह पे पूछना पड़ा। सुबह के लोग खा के जा चुके हैं, शाम के लोग अभी आएंगे। तो वो गौशाला वालों ने बनाया है। तो वो राधा को बोले थे मिल्क प्रोडक्ट्स मिलेगा, पता नहीं घी मिलेगा, खिचड़ी में घी मिल सकता है सर। तो विशेषकर मैं बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा हमारे प्रेसिडेंट श्रीला दयाराम पू जी को, क्योंकि सबसे पहले वो कलकत्ता में आके उन्होंने साहस किया था। ये जो अल्बर्ट रोड मंदिर है हम लोग का, ये बहुत ऐतिहासिक जगह है, वो कोई साधारण जगह नहीं है। प्रभुपाद जी का सबसे पहला भारत में इस्कॉन का एक वो सेंटर है। प्रभुपाद जी जब पाश्चात्य देश से आए तो सबसे पहला सेंटर उनको वहां मिला। पहले हरीश मुखर्जी रोड में थे वो, तब वो फिर शिफ्ट किए, उनके एक शिष्य राधापाद प्रभु, उन्होंने वो जगह दी, वो आए। और प्रभुपाद जी की भजन कुटीर है, सुंदर सा जो रूम देखते हैं, तो वहां आके प्रभुपाद जी ने अंतरराष्ट्रीय कृष्णा भावनामृत संघ जो चालू किया, तो इंडिया में वो बेस सबसे पहले कलकत्ता में बनाया और वहां से वो प्रचार शुरू किए। तो सब लोग बोलते कि कलकत्ता, बाकी सभी बड़े बड़े शहरों में मंदिर है, बाकी सभी प्रचार हो रहा है इतने शहरों में बहुत अच्छे ढंग से, कलकत्ता बहुत पीछे रह गया है। तो उर्दू में कहावत है, देर आए दुरुस्त आए। तो हम देर भले आए हैं मगर हम दुरुस्त आए हैं। और हम लोग देख सकते हैं कि इतना सुंदर अभी कलकत्ता का जो प्रचार है। प्रभुपाद चाहते थे कि कलकत्ता में 10 मंदिर बने, तो मैं सोच रहा था कि 10 मंदिर बने, प्रभुपाद जी ने जिन जिन जगहों पे लीला की है, लीला स्थली, वही एक मंदिर है। तो ये भी एक मंदिर है। और इस मंदिर में आप सबको ऐसा अनुभव, मेरे को ये अनुभव हो रहा है जब हम आए हैं ना, जब हम ऊपर जाके बैठते हैं तो वहां लगता बैठे रहें और वहां बैठ के हम लोग जप करें। मुझे याद है राधा रमन प्रभु थे, अनंग मोहन प्रभु थे, परम पूज्य श्रीला राधानाथ स्वामी महाराज आए थे। हम लोग ऐसे ही चर्चा कर रहे थे एक दिन, तो महाराज इस जगह पे आए थे 2019 18 में यहाँ आए, उन्होंने बहुत प्रेरणा दी। तो उनका भी हम बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं, क्योंकि जो गुरु होते हैं वो प्रेरणा देते हैं, उससे सब कुछ संभव होता है। तो उन्होंने बोला ये जगह को, मतलब इस जगह को अगर तुम लोग लोगे तो सारे इस्कॉन जगत का कल्याण होगा और सब कुछ अच्छा होगा। मायापुर मंदिर भी बनेगा। तो राधारनपुर ने प्रश्न किया था कि महाराज प्रभुपाद जन्म स्थान, बोला वो भी मिल जाएगा।
तो सही बात है, जिस दिन से इसका रेनोवेशन हुआ उसके पहले प्रभुपाद का जन्म स्थान इनॉग्रेट हो गया। हरि बोल। पिछले साल हम लोग प्रभुपाद जी के 125th बर्थ एनिवर्सरी में हमने उस जगह को उद्घाटन कर लिया, पहले मिल गया। और मायापुर 2024 में भी इनॉग्रेट होने वाला है। तो हम समझ सकते इस प्लेस का कनेक्शन कैसा है। और हम लोग का ऐसा सौभाग्य, हम लोग हर एक भक्त, इस्कॉन के भक्त आज इस बात का गौरव मनाते हैं कि हम लोग को ये जगह मिली। एक और भी किसी को मिल सकती थी, बहुत लोगों ने प्रयास भी किया, मगर ये हमें मिली। क्योंकि जो इसको बनाने में सक्षम है, मैं अपने मित्रों को भी बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा, श्रीमान राधा रमन प्रभु को, श्रीमान अनंग मोहन प्रभु को। और ऐसा नहीं है कि उनको ना बटरिंग बोलते हैं ना, बटरिंग करने के लिए मैंने देखा है राधा रमन प्रभु ने लेबर की तरह यहाँ काम किया, लेबर की तरह। वहां बैठ जाते थे, यहाँ उस चबूतरे पे बैठ जाते थे, जब ये गंदा था वहां पे बैठ के वो काम कर इस जगह को जीर्णोद्धार किया है। अनंग मोहनपुर ने घरों घरों में जाके पैसा मांग के लाया, अर्थ लाया। बोला ना, प्राण अर्थ धिया वाचा आचरणम सदा, माने प्राण अर्थ धिया वाचा से सेवा कर सकते हैं। तो प्राण से भी बढ़ के अभी पैसा है, प्राण ले लो, पैसा मत मांगो। हरे कृष्ण। लोग प्राण दे सकते हैं, पैसा मत मांगिए। प्राण पहले, पैसा आ गया है, अभी लक्ष्मी आ गई है। तो इन लोग ने बहुत परिश्रम किया, मैं बहुत ही इनका धन्यवाद इनको देना चाहूंगा, क्योंकि इतनी सुंदर जगह, यह हमारी जगह है। आप विश्वास कर सकते इस बात का। आप आइए, बाद में आइएगा, आप दर्शन करिएगा, ऊपर जाके जब बैठिएगा, जब कीजिएगा, आप देखिएगा आपको कैसा फीलिंग्स आएगा। यू विल फील रियली सो नाइस, you will feel so connected to Prabhupada, you will feel so connected to Gaudiya परंपरा, श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर श्रील प्रभुपाद जी। तो मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, और भी सभी भक्तों का धन्यवाद देना चाहता हूं। सबने अपने अपने अर्थक प्रयास से, अपने अपने सामर्थ्य से ये सुंदर सेवा की। तो मैं हार्दिक रूप से सबका धन्यवाद देना चाहता हूं कि हम लोग ज्यादा से ज्यादा यहाँ से प्रचार बढ़े। आज सुबह से सब भक्त लोग, प्रभुपाद के जो शिष्य, एक ही बात बोले थे कि ज्यादा से ज्यादा प्रचार बढ़े यहाँ से। और सही में अभी सारे विश्व में अभी ये जो पेंडेमिक गया, इसके बाद जो क्रांति आने वाली है, ये स्वर्ण अक्षरों में इस्कॉन का नाम इतिहास में लिखा जाएगा एक दिन। हरे कृष्ण। क्योंकि ये एक अम्ब्रेला ऐसा है जिसमें सारा जगत एक दिन आने वाला है, ये संकीर्तन आंदोलन में। तो इसका बीज यहीं रोपण हुआ था, और यहां से फिर आगे बढ़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर श्रील प्रभुपाद की, श्रील प्रभुपाद की ताई गौर प्रेमानंदे। हरे Hare Krishna. So thank you very much, Ballabh Chaitanya Prabhu. May your words really come true, and may really the preaching mission of Sri Chaitanya Mahaprabhu expand more and more from this very place, the birthplace of preaching activities. So now, may we request His Grace Mohan Govinda Prabhu to kindly come forward and bless us. हरे कृष्णा। ओम अज्ञानातिमिरन्दस्य ज्ञानाञ्जनं शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। हरे कृष्णा। तो मैं हिज डिवाइन ग्रेस भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के बारे में कुछ भी कहने से पहले यहाँ उपस्थित सभी भक्तों का आशीर्वाद चाहता हूँ।
श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर का यहाँ पे आज से 100 साल पहले जो श्री प्रभुपाद के साथ, ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद के साथ मीटिंग हुआ था, उस मीटिंग की मेमोरी में जो ये प्लेस तैयार हुआ है, इसको देख के हम कभी सोच भी नहीं सकते हैं कि पूरे स्थान जो इस्कॉन है उसकी स्थापना इस जगह से हुई थी। जिस इस्कॉन के मंदिर के पूरे विश्व में करीब 700 से 800 मंदिर हैं और लाखों लोग जिस इस्कॉन से शिक्षा ले रहे हैं, उसकी स्थापना एक छोटे से प्लेस से हुई थी जो अभी तक नेग्लेक्टेड था। लेकिन हमारे इस्कॉन के स्पेशली कोलकाता टीम के कुछ भक्तों के अथक प्रयास से, जैसा कि उन भक्तों का नाम लिया गया था, उनके साथ में बैकग्राउंड में और भी काफी भक्त थे और सारे महान आचार्यों की कृपा से आज इस प्लेस को हम इस रूप में देख पा रहे हैं। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के बारे में हम मॉर्निंग से सभी सीनियर भक्तों से और वैष्णव आचार्यों से सुन रहे हैं। इन्हीं भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर को लॉयन गुरु या सिंह गुरु के नाम से जाना जाता है। इनको लिविंग एनसाइक्लोपीडिया भी कहा जाता है। लायन गुरु, सिंह गुरु इसलिए कहा जाता था क्योंकि इनको देखते से, इनकी बातें सुनते से ही सारे जो अप सिद्धांतवादी हैं और जो मायावादी हैं वो दूर भाग जाते थे। और लिविंग एनसाइक्लोपीडिया इसलिए कहा जाता है क्योंकि इन्होंने 9 वर्ष की उम्र में, कई जगह और भी कम लिखा हुआ है, 9 वर्ष की उम्र में इनको भागवत गीता के पूरे 700 श्लोक विथ ट्रांसलेशन याद थे अच्छी तरीके से। और उसके बाद में कुछ समय बाद इन्होंने चैतन्य चरितमृत का भी पूरा एक वाद विवाद सम्मेलन हुआ था, उसमें भाग लिया था, जहां पे इन्हें चैतन्य चरितमृत के बारे में भी जितना भी उससे संबंधित, उस विषय संबंधित जितने थे श्लोक थे वो सुनाए थे। तो आज का दिन बहुत ऐतिहासिक दिन है कि इस जगह पे, जहां पे भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने सबसे पहले इस मठ की स्थापना की थी, आज उसका इनॉग्रेशन हुआ है। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर अपने समय के सबसे बड़े ब्रह्मचारी थे। बताया जाता है कि उस समय ब्रह्मचारियों का एक क्लब बना था जिसमें काफी सारे लोग बड़े उत्साह के साथ ब्रह्मचारी बने थे और सबने ये वाव लिया था, प्रतिज्ञा ली थी कि हम सब आजीवन ब्रह्मचारी रहेंगे। उसके कुछ सालों बाद देखा गया तो अकेले भक्ति सरस्वती ठाकुर बचे थे, बाकी सब ग्रस्त बन गए थे। तो ये आजीवन ब्रह्मचारी थे। हालांकि वो बहुत ज्यादा समय तक इस प्लेनेट में नहीं रहे, 1874 से लेकर 1932 तक, लेकिन उन्होंने उस समय पे वो आए, उस समय पे अपीयर हुए, आविर्भाव हुआ उनका, जब जो चैतन्य महाप्रभु की शिक्षाएं थी वो पूरी तरीके से डेविएट हो चुकी थी और पूरे भारत में सहजिया लोगों की संख्या काफी बढ़ गई थी और करीब करीब 13 जो है ऐसे संप्रदाय बन गए थे जो अप सिद्धांत वाले थे, जो ओरिजिनल मूल सिद्धांत से डेविएट हो गए थे। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने उन सबका डट कर मुकाबला किया और ये सारी प्रेरणा जो इन्होंने अपने पिता
श्री भक्ति विनोद ठाकुर से प्राप्त की। एक्चुअली श्री भक्ति विनोद ठाकुर जब उनकी पोस्टिंग डेप्यूटी मजिस्ट्रेट के रूप में और जगन्नाथ मंदिर के कस्टोडियन के रूप में जगन्नाथपुरी में हुई थी, उस समय उनका सरकारी कार्यभार भी काफी ज्यादा था और साथ में प्रचार का भी था। उस समय उन्होंने चैतन्य महाप्रभु से, कृष्ण से प्रार्थना की थी कि मेरे इस प्रचार कार्य में सहायता के लिए ऐसा कोई शुद्ध भक्त भेजिए जो मुझे प्रचार में पूरी तरह से सहायता कर सके और आगे इस परंपरा को ले जा सके। तो उन्हीं की, उन चैतन्य महाप्रभु की कृपा से उन्हें, जब वो जगन्नाथपुरी में थे उस समय भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, जिनका बाल्यकाल का नाम था विमला प्रसाद, जो विमला देवी की कृपा से उनके प्रसाद ग्रहण करने से हुए थे, इसलिए उनका नाम विमला प्रसाद हुआ था। उन ऐसे पुत्र की प्राप्ति हुई और भक्ति विनोद ठाकुर ने यही सोचा कि भगवान की कृपा है, क्योंकि मैंने ऐसे जो पुत्र प्राप्ति की इच्छा की थी जो इस पूरे आंदोलन को आगे ले जाए। उसके बाद में जब, क्योंकि उनका घर जगन्नाथपुरी का जो मंदिर है, जगन्नाथ जी का जो मंदिर है, उसी रास्ते पे था, वहां पे से एक बार जब जगन्नाथ रथ यात्रा जा रही थी तो उसी जगह पे उनके रेजिडेंस के सामने, घर के सामने, भक्ति विनोद ठाकुर के घर के सामने जो है वो रथ रुक गया और बताते हैं कि 3 दिन तक वो रथ रुका रहा था वहां। तो इस समय का अवसर उठाकर, समय का लाभ उठाकर जो है उनकी माता, जो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, जिनका बचपन का नाम विमला प्रसाद था, उन्होंने जाके विमला प्रसाद को जगन्नाथ जी के चरणों का दर्शन करवाया। तो हालांकि उस समय 6 महीने के भी नहीं थे, लेकिन उस बालक ने अपने हाथ इस तरीके से फैलाए कि जाके जगन्नाथ जी के चरणों का स्पर्श किया। रथ पे जो जगन्नाथ जी बैठे थे, उसके कारण जो है उनके हाथ जगन्नाथ जी के चरण कमलों को टच किया, स्पर्श किया, और उसी समय जगन्नाथ जी के गले में जो माला थी वो गिर के नीचे गिर पड़ी, सीधे जो है विमला प्रसाद दत्ता उनके गले में आ गिरी। तो इसको जो है भक्ति विनोद ठाकुर ने एक और आशीर्वाद का प्रूफ समझा कि अभी प्रूव हो गया कि ये भगवान के द्वारा भेजे गए शुद्ध भक्त हैं। और इस तरीके से भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने एक शुद्ध भक्त के रूप में अलग अलग जो बहुत डिफिकल्ट कार्य थे उनको संभाला, और साथ में जो है भक्ति विनोद ठाकुर ने जो अपने ग्रंथ और जो पत्रिका थी, इंग्लिश में द हार्मोनिस्ट और हिंदी में बंगाली में सज्जन तोषनी, उसके प्रूफ रीडिंग का कार्य संभाला। और इस तरीके से उन्होंने पिता के प्रचार कार्य का संभाला। उसके बाद में भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर को अपने पिता भक्ति विनोद ठाकुर की प्रेरणा से गौर किशोर दास बाबा जी महाराज से दीक्षा पाने का अवसर मिला। इस तरह उन्होंने गौर किशोर दास बाबा से दीक्षा प्राप्त करके और बाद में संन्यास लिया। उन्होंने संन्यास ग्रहण किया, हालांकि तब तक उनके पिता भक्ति विनोद ठाकुर जो है यहाँ पे अपनी लीलाएं, इस श्लोक में अपनी लीलाएं खत्म कर चुके थे, और उनके गुरु गौर किशोर दास बाबा जी महाराज भी अपनी लीलाएं खत्म कर चुके थे। लेकिन उन्होंने उसके बाद संन्यास ग्रहण करके अपने पिता भक्ति विनोद ठाकुर का जो सारा प्रचार कार्य है उसको संभाला और आगे बढ़ाया। और उन्हीं के जो कई शिष्य थे, उन्हीं में से हमारे परम गुरु जो श्रील
एसी भक्तिवेदांत स्वामी स्वरूप प्रभुपाद थे, उन्हीं हमारे परम गुरु ने इसी स्थल पर सबसे पहली जो मीटिंग है श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के साथ पहली मीटिंग जो है इसी स्थल पे हुई, और उसी समय इस्कॉन का जो स्थापना का बीज यहाँ पे बो दिया गया था। तो सभी गौरी वैष्णवों के लिए और इस्कॉन भक्तों के लिए, सारे गौरी वैष्णवों के लिए, इनफैक्ट पूरे विश्व के लिए ये जो बहुत पवित्र स्थान है, पूजनीय स्थान है, केवल गौड़ी वैष्णवों के लिए नहीं, क्योंकि हमें पता नहीं अभी जो साधारण जीव है पूरे विश्व में, वो भी एक न दिन अपने आप को इस गौड़ी वैष्णव परंपरा से कनेक्ट कर लेंगे। तो इस तरीके से पूरे विश्व का कल्याण जो है जो भविष्य में भी होगा, कई हजारों साल तक होता रहेगा, उसका जो बीज है इसी जगह से बोया गया था। तो आज के इस पावन अवसर पर हम हिज डिवाइन ग्रेस भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर की कृपा की अपेक्षा करते हैं कि जिस तरीके से उन्होंने गौड़ी वैष्णव संप्रदाय की जो स्थापना की है और प्रचार प्रसार किया है, तो हमें इसी प्रचार प्रसार कार्य में अपने आप को लगाए रखें और पूरे विश्व का कल्याण करें। हरे कृष्णा। इस डिवाइन ग्रेस इस भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद श्री मोहन गोविंद प्रभु। So now we request His Grace Radhapad Prabhu, His Grace Acharya Ratna Prabhu, we request His Grace Balaram Lila Prabhu. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. So we request His Grace Acharya Ratna Prabhu to kindly bless us. Hare Krishna. So I am feeling extremely happy to see this day, which we are dreaming for many years. Since 2008, I used to come sometimes with Radharam Prabhu, and he used to show that we have to do something, but still it was kind of pending work for many years. I remember in 2018, there was some ICC, ISC bureau meetings in Noida, and we had gone to Noida for the meeting, and it was 4th of November 2018. His Holiness Radhanath Maharaj was scheduled to give Bhagavatam class in Noida near Delhi. So that was the day, according to Tithi, the completion of Sri Chaitanya Charitamrita. So when Maharaj started his class, he said that today is the day when Srila Prabhupada completed the translation and commentary of Sri Chaitanya Charitamrita. So I'd like to read from that concluding remarks of Srila Prabhupada, which are there in Sri
Chaitanya Charitamrita. So he read that. I will also read little bit, 1-2 sentence maybe. And so I'll just open CC. Okay, so this is Srila Prabhupada writing in the conclusion of CC. Today is Sunday. That day was also Sunday. November 10th, 1974, corresponding to the 10th of Kartik, Chaitanya area 488, the 11th day of the dark fortnight, Rama Ekadashi. We have now finished the English translation of Sri Krishnadas Kaviraj Goswami's Sri Chaitanya Charitamrita in accordance with the authorized order of His Divine Grace Bhakti Siddhant Saraswati Thakur Goswami Maharaj, my beloved eternal master, guide, and friend. Although according to material vision, His Divine Grace Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur Prabhupada passed away from this material world on last day of December 1936. I still consider His Divine Grace to be always present with me by His Vani, His words. There are two ways of association, by Vani and by Vapu. Vani means words and Vapu means physical presence. Physical presence is sometimes appreciable and sometimes not, but Vani continues to exist eternally. Therefore, we must take advantage of this Vani, not the physical presence. The Bhagavad Gita, for example, is the Vani of Lord Krishna. Although Krishna was personally present 5,000 years ago and is no longer physically present from materialistic point of view, the Bhagavad Gita continues. In this connection, we may call from our memory the time when I was fortunate enough to meet His Divine Grace Srila Prabhupada, sometimes in the year 1922. Srila Prabhupada had come to Calcutta from Sridham Mayapur to start the missionary activities of the Gaudiya Mutt. He was sitting in a house at Ultadanga. So as soon as he heard this Ultadanga, he stopped. And Radhanath Maharaj in Noida that day, he was saying, all those who are from Calcutta, please hear attentively. And I was wondering, there were thousands of devotees, and only Radharamanpu and myself, we are two people from Calcutta. But Maharaj stopped the class in the sense, and he said, all those who are from Calcutta, please listen attentively, And then Maharaj started telling how glories of Ultananga. And I was just thinking, he's there in IISc meetings, bureau meetings, and so many other leaders are there, and so many other things are going on. But his mind was, focused on Ultadanga, and he was speaking of glories of Ultadanga, and then he was saying how we should get it and renovate it and all that things. And after the class, then myself and Radhanampu went to meet Maharaj. We offered them, and then Maharaj asked, "So, did you hear what I said in the class?" So first of all, he asked, "Were you there in the class?" He said, "Yes, Maharaj." Then he asked, "Did you hear?" Radharamanpu, did you hear? Radharamanpu immediately offered Dhanwadi, "Yes, Maharaj." So, and he said, there was a long concluding words Prabhupada spoke, but I did not comment on anything. I only comment on one thing. Did you hear it properly? Radharamanpu said, "Yes, Maharaj." So we will definitely do. We will definitely get this Ultananga before you next time come to Calcutta. So immediately I remember Radharampu got so excited and so tense also, both, he was immediately he called, he started making phone calls. I immediately took another flight, came to Calcutta, started his service. And after that program, after that Noida program, then I went for Jagannath Puri Yatra with His Holiness Radhanath Swami Maharaj. Again, in the introductory talk, there were thousands of people, but again Maharaj was, started talking about Ultananga. I was sitting in front, and he was so intense looking, and I was feeling so awkward. I was feeling Maharaj is so intense, and he's so much wanting that we should do something here at Ultananga. Then when I came back again, I told Radhanampu, Maharaj is extremely serious. You have to do something before Maharaj comes next time to Calcutta. And I remember then Radhanampu, Anang Mohan Prabhu, and then our Anshul Prabhu, Som Prabhu, so many, they used to come here regularly, and they used to do so many dramas, so many things, to get remaining tenants out. And just the day, one day before Radhan Maharaj came to Calcutta in February 2019, that last tenant was shifted
with a great, amazing, what it was like a big thing. And then Maharaj came and he saw, and he was so excited, so happy, and he was saying how if we develop this project nicely, then how all other wonderful things will start happening. And later on, actually, some devotees were doing research on this Ultadanga, and they found out that actually day Radhanath Maharaj spoke, gave class in Noida, that was exact 100th anniversary of Bhakti Siddhant Saraswati Thakur's coming to this Ultadanga. And that was actually very mystical and amazing. So we could understand that, oh, definitely it is divine will of Lord to make this place memorable tirtha for the whole world to come. And then we are so happy now that on 100th anniversary, this was also, we are not no we are not sure, but by it's really amazing to see that on 100th anniversary of Srila Prabhupada's meeting Bhakti Siddhanta Thakur, that we are inaugurating on this auspicious anniversary of 148th appearance anniversary of Bhakti Siddhanta Thakur. And I am feeling so blessed and fortunate to see this day. And I'm extremely grateful to His Grace Dayaram for inspiring the devotees to take this project to the heart, and also His Grace Radharampu, Anang Mohan Pru, Dauji Kripapu, Vallabhchan Pu, and so many all others who really put their heart in developing this, and therefore we are able to see today this wonderful, beautiful day. I remember when Radhanath Maharaj was there, he was saying that this place is actually birthplace of spiritual birthplace of Srila Prabhupada. So in Calcutta there are two birthplaces. One is biological birthplace, that is at Toliganj, and here it is spiritual birthplace, where he met his eternal spiritual master, His Divine Grace Bhakti Siddhanta Thakur. And then he was saying that actually it is not only spiritual birthplace of Srila Prabhupada, and in that sense spiritual birthplace of ISKCON, but actually it is spiritual birthplace of all Gaudiya Acharyas, the disciples, great disciples of Bhakti Siddhanta Thakur. All the different Gaudiya Mats are there all over world in different this names. Everybody, all those acharyas, they came in Krishna consciousness at this place. So you are saying that this place can be a wonderful place to unite all the Gaudiya Vaishnavas. Similarly, His Holiness Jayapatak Swami Maharaj, when he was sick, one time he got a dream that Prabhupada is telling, and he's saying that you should unite all Gaudiya Vaishnavas uh, uh, under the banner of that Saraswati family, all the disciples of Bhakti Siddhanta Thakur. And I'm feeling so happy that now the day has come, we have got this, and we can really work to fulfill the desires of Bhakti Siddhanta Thakur and Srila Prabhupada to unite all the Gaudiya Vaishnavas. We hope that this place becomes a very place of worship for all the Gaudiya Vaishnavas to come, a place where they can come, pray, and get blessings of Bhakti Siddhanta Thakur. As in the morning, Devakinanda was saying, this is a place for empowerment, So we can come and seek empowerment, seek their blessings, and then go out and spread their mercy. So thank you very much. I'm really feeling so blessed, so happy to see this day. And uh, I hope and pray we can continue to serve Srila Prabhupada and Bhakti Siddhanta Thakur and try to. There are many more things. This is just phase one, and there are many more wonderful things to come. So hope and pray that by blessings of devotees, slowly everything starts manifesting. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. His Divine Grace Bhakti Siddhanta Saraswati Goswami Srila Prabhupada ki jai, Srila Prabhupada ki jai, Ultadanga Junction Road ki jai. Haribo.
So So thank you very much, Acharya Ratna Prabhu, Hare for Krishna amazingly describing devotees. the connection This is and Bhakti Ch- the divine arrangement, the desire of our acharyas behind this memorable place today. So now may we request His Grace Dharmatma Prabhu to kindly come forward and bless us. हरे कृष्णा। श्रील जयपताका स्वामी महाराज ने एक भजन लिखे हैं श्रील प्रभुपाद जी के ऊपर, यदि प्रभुपाद ना होइतो तबे की होइतो। All of you must have heard this bhajan, and with lot of heart Maharaj has written this bhajan. So today, in this auspicious occasion, the most glorious event of ISKCON, where the two Prabhupads, our Srila Prabhupada, Bhaktivedanta Swami Prabhupada, and His Divine Grace Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur Srila Prabhupada, two Prabhupada, they met here. And if they wouldn't have met here, all of we wouldn't be sitting here today. So it's a very, very joyful event for us that both Srila Prabhupada came here, and with that meeting, everything started. The birth of ISKCON, the International Society for Krishna Consciousness, took birth here. So we are very happy that after the tireless effort of the ISKCON Kolkata management, especially Radharaman Prabhu, Ananga Mohan Prabhu, Angshul Prabhu, Jagadish Gauranga Prabhu, and so many devotees, with their effort, we came here and we are enjoying this day today. And you have heard everything from since the morning. We are hearing so many glories of Srila Prabhupada and Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur. And in one lecture, Srila Prabhupada mentioned that although I have received the instruction from my spiritual master in 1922, but I fulfilled that desire at the age of 70. And Prabhupada mentioned, out of his humility and whatever, he mentioned that you can understand that I have wasted so much time. He mentioned in that lecture. And then he said, although externally I can say that I have wasted so much time, but I didn't forgot that instruction. So although instruction came, but Srila Prabhupada was preparing himself by sitting in Radha Damodar temple and writing the first 3 cantos of Srimad Bhagavatam. So he was preparing to preach, how to go to the Western world, meeting Sumati Morarji for a free passage in Jaladuta. So he was preparing himself to preach in the Western world as per the instruction he received from his spiritual master. And then he preached and he established the ISKCON society. And by that preaching, by establishing Krishna consciousness movement in the Western world, which began from here, all of we came by Srila Prabhupada's mercy, by Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur, and our all Guru Parampara. All of their mercy, we came here and trying little bit to serve whatever capacity we have. So all glories to Srila Prabhupada and all glories to Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur. Srila Prabhupada ki jai.
श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर श्रील प्रभुपाद की जय। निताई गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। Thanks a lot to Dharmatma Prabhu for kindly, wonderfully glorifying Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur. So now we are proceeding forward with the blessings and glorifications by senior devotees and ISKCON GBCs. And we will have recorded videos now sent by different senior devotees, sannyasis, Srila Prabhupada disciples, and ISKCON GBCs. So now Hare Krishna devotees, this is Bhakti Chaitanya Swami here. Please accept my humble obeisances. All glories to Srila Prabhupada and all glories to Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Thakura on this very sacred occasion. It's 100 years from the time that Srila Prabhupada met Srila Bhakti Siddhanta. What a sacred, historic occasion. Completely amazing and so significant for all of us. We're Srila Prabhupada's children spiritually and grandchildren spiritually. And if this historic occasion had not occurred, we would all be in different situations. We'd all be in completely different situations. So this occasion has great bearing on our own personal situations as individuals. Srila Prabhupada, when he was talking on the disappearance day of Srila Bhaktisiddhanta, one time, I think it was 1969, Srila Prabhupada said that who would have known? Who would have known? Who would have known that Prabhupada would meet Srila Bhaktisiddhanta and be so deeply influenced? Who would have known that then Prabhupada would have gone to America and started this Krishna consciousness movement? And who would have known that we would have all met him? And for those of you who are his grand disciples, who would have known that you would have met the devotees, disciples of Srila Prabhupada's disciples, and that you would have become dedicated devotees as you are now? Who would have known? Nobody would have known. We'd all just be sort of drifting around the material world, just here and there, and just doing this and that, and just wasting our times pursuing just useless objectives. It's a fact. But because Srila Prabhupada met Srila Bhaktisiddhanta on this day 100 years ago, so the
ripple effect, you could say, has come and touched us and moved us. And even we know Srila Prabhupada said that on that day when his friend Narendranath Malik wanted him to go to that program at Ultadanga Junction Road, we know that Prabhupada initially said he didn't really want to. He'd seen enough sadhus. His father had invited sadhus every day for lunch to his house when Srila Prabhupada was young. So Prabhupada didn't want to go, but he apparently got sort of physically dragged. It's a real leela. It's just an amazing pastime. And we are just unlimitedly fortunate that we have received mercy as a result of that merciful occasion. So let's take it very seriously. Let's practice Krishna consciousness as Prabhupada gave us, not some concocted version, not some westernized version, not some sort of old Vedic style version, but as Prabhupada gave us, as he received it from Srila Bhakti Siddhanta on this occasion. Hare Krishna. Srila Prabhupada ki jai. Express our heartfelt gratitude to His Holiness Bhakti Chaitanya Swami Maharaj, ISKCON GBC Chairman. So now we are going to hear from His Holiness Giriraj Swami Maharaj. Hare Krishna. Krishna. On February 21st, we are celebrating the 148th birth anniversary of Om Vishnupad Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Goswami Maharaj. This is the 100th year since our dear Srila Prabhupada met his Guru Maharaj on the rooftop of the building at 1 Ultadanga Junction Road. The Gaudiya Math was there for 12 years, beginning in 1918, and it is from there, joined by his sannyasi disciples, that Srila Bhakti Siddhanta Saraswati preached. Only 3 people lived there with him. I think Bhakti Pradeep Tirtha Maharaj and Kunja Bihari, later Bhakti Vilas Tirtha Maharaj, and one other.
Srila Bhakti Siddhanta Saraswati's bhajan kutir, where he lived, was on the rooftop, and everybody else lived on the ground floor. That's all there was. Because the house was so small, he would give his main lectures on the rooftop. And that is where our Srila Prabhupada first met him and got the order that changed the world, the seed of our movement. The Gaudiya Math then moved to Bagh Bazar. The building on Ultadanga Junction Road was taken over by 4 or 5 families. But Srila Bhakti Siddhanta stayed there for only 4 years. And he regretted what happened during that time. Quote, "When we were living in a rented house," he said, "if we could collect 200 or 300 rupees, we were living very nicely at Ultadanga. We were happier then. But since we have been given this marble palace at Bagh Bazar, there is friction between our men. Who will occupy this room? Who will occupy that room? Who will be the proprietor of this room? Everyone is planning in different ways. It would be better to take the marble from the walls and secure money. If I could do this and print books, that would be better." In a room conversation on July 26, 1976 in London, our Srila Prabhupada said, quote, "My Guru Maharaj was lamenting that these men did not publish any number of books. They are simply after this stone and bricks." He condemned. He was very, very sorry. So I thought that I must take a risk, and he is pleased. I never stressed on temples. I was engaged in publishing back to Godhead. Whatever I could do, I did it, because I took it very seriously, that he is very sorry that these things were not done. He said that, quote, "There will be fire in this Gaudiya Math," end quote. "Aguna Jwalbe," he said, "Amari Icha Chila Kichu Bai Kari Jaya." If I can, I shall sell the marbles of this temple and convert them into books. That was his ambition. He started a very nice press. A year and a half ago, we got possession of the whole building on Ultadanga Junction Road. We had to seal parts of it, but we got possession. And last year we started renovation. Devotees got as many photos as they could, interviewed people, and worked to make the building exactly the way it was when Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur lived there. It was an effort because the building was totally dilapidated. But now it really is exactly the same as it was originally. And devotees will be able to sit in the very place on the rooftop where Srila Prabhupada sat when he was only 25 years old. It is a glorious, historic occasion. We offer our heartfelt gratitude to His Holiness Giriraj Swami Maharaj. So now we will be hearing from His Grace Basu Ghosh Prabhu. Nama
Nama Om Vishnu Padaya Krishna Preshtaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swaminiti Namane Namaste Saraswati Devi Gauravani Pracharane Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Deshitarane. On the auspicious occasion of ISKCON setting up a center at the #1 Ultadanga address in North Calcutta, I want to send my best wishes to those of you viewing this video. That historical place is significant for the followers of ISKCON founder Acharya Abhay Charanara Vinda Bhaktivedanta Swami Prabhupada, because it was at that place in 1922, 100 years ago, where Srila Bhaktivedanta Swami Prabhupada met his guru, Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur. Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur, the son of Bhaktivinode Thakur, had been in Mayapur chanting 30 million names of Krishna, counting. So he spent some years doing that. And one of Prabhupada's godbrothers encouraged him to come and preach the message of Chaitanya Mahaprabhu in the city, because in Mayapur was a small village at the time and no one was there. And so he began the Prachar Sanstha. First it was called Gaudiya ASAN, and later on that became the Gaudiya Mat, and later on Prabhupada, Bhaktivedanta Swami Prabhupada, founded ISKCON. Of course, there's still Gaudiya Mats, and as Prabhupada noted in his purport in the Bhagavatam, that he and his godbrothers are not working conjointly, but both of them are making many thousands of disciples. And of course, by comparison, Prabhupada spread the movement of Mahaprabhu all over the world. And now the fruit is coming up in Mayapur in the big temple, TOVP. But at the same time, we shouldn't lose track of how Krishna consciousness spread outside of India by the efforts of Bhaktivedanta Swami Prabhupada, who we understand got the mercy of his guru, Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur. So we are a preaching mission, Prachar Sanstha, and the vision of Srila Bhakti Siddhanta Saraswati and Srila Prabhupada, as conveyed in the Bhaktivedanta purports, and also in Prabhupada's lectures and conversations and letters, is a beacon of light for humanity who otherwise are living like animals, because eating, sleeping, mating, and defending is their all in all. And human beings can rise above that. So anyway, congratulations, Abhinandanam to ISKCON Calcutta and the team of Radha Raman Prabhu and the others who worked hard to get this historical property in the name of ISKCON. Hare Krishna. Hare Krishna. So we are really thankful to His Grace Basu Ghosh Prabhu. So now we are going to hear from His Holiness Bhakti Prem Swami Maharaj. हरे कृष्णा। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की
हरे कृष्णा जागृत गुरु श्रील प्रभुपाद की भारत भूमिते मनुष्य जन्म हইল যার জন্ম সার্থক করি কর করে those who have taken birth in Bharatvarsha, they are very fortunate. And Calcutta is especially fortunate. Srila Prabhupada, who was especially chosen by Lord Chaitanya Mahaprabhu, she took birth in Kolkata. Anything happens with this type of transcendental people are not an accidental happening. So those who are getting chance to serve in Calcutta, they are very fortunate in getting special mercy of Srila Prabhupada and Lord Chaitanya Mahaprabhu. In Kolkata, not only Srila Prabhupada has taken birth, his spiritual master's mission, Gaudiya Math, by Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur, started in Calcutta. And fortunately, Prabhupada's first meeting was in also Calcutta in 1822, exactly 100 years ago. 100 years ago, Srila Prabhupada met his spiritual master, Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur. And now, after 100 years, on the auspicious day of divine appearance of Shishmat Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur, by their mercy, we are going to inaugurate that place. I am very thankful to the ISKCON Calcutta authority, those who have taken a glorious role in reviving this place. Naturally, all the previous acharyas, they are shouting their causeless mercy. And we hope in future, this place will be a historical place. People from all over the world will come to see this place to purify themselves. Hare Krishna. Srila Prabhupada. We are very much thankful to His Holiness Bhakti Prem Swami Maharaj. So now we are going to hear from His Holiness Bhakti Gaurav Narayan Swami Maharaj. A matter of great pleasure that this one Ultadanga Junction Road place is being dedicated for the pleasure of Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur, the founder Acharya of Gaudiya Math and the spiritual master of Srila A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Here in this place, Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur stayed and he was preaching to the educated mass. And at that time, Srila Prabhupada, whose name was Abhay and who was a young educated person, he visited Srila Bhakti Siddhanta Thakur with his friend
And this is the place where Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur gave his first instruction to Srila Prabhupada to preach in English language in the foreign countries. So this place is actually the birthplace of ISKCON in the sense that the seed of Krishna consciousness was planted in the heart of Srila Prabhupada here. And later on, Srila Prabhupada, following the instruction of Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur, went out of India and established International Society for Krishna Consciousness at New York in 1966. So that's why this place is very important for us. And I have seen this place, which was in a very dilapidated condition few years back, but by the hard effort of the devotees of Kolkata, headed by Radharaman Prabhu and Anang Mohan Prabhu, has been renovated and being offered to Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur. And at the same time, this place is also a very historic place where the devotees of ISKCON could visit and take the blessings of Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur and Srila Prabhupada to preach Krishna consciousness all over the world. Hare Krishna. Bhakti Gaurav Narayan Swami Maharaj. So now we are going to hear from His Grace Dinabandhu Prabhu from Vrindavan. Hare Krishna. Om Jnana-timirandasya Gyananjana-shalakaya Chaksurunmilitam Jena Tasmai Sri Gurave Namah. Jai Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhar Srivasadi Gaur Bhaktivinoda. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. So this ashram on Ultadanga Road is a very, very historical place. Many, many great personalities also met Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur at this place. We were just reading the other day how one of the greatest freedom fighters, Netaji Subhash Chandra Bose, also came there to ask Bhakti Siddhanta to give me some of your young men, because I need these young men to fight for the freedom of India. And Bhakti Siddhanta said, you know this verse, Yam Yam Vapi Smaram Bhavam, whatever you think of at the time of death, you'll attain that state of being. He said, yes, I know this verse. So you believe in reincarnation? He said, of course, what Hindu doesn't? Huh? Then what would happen, since you're meditating so much on the British, that you come back in England? Will you still fight for India's independence? Or will you fight to dominate the Indians? And Netaji Subhash Chandra Bose was taken aback.
No one had ever challenged him like that. He said, I never thought about it like that. So Bhakti Siddhanta Prabhupada said, please don't put your eyes on these boys. They're training up for the highest welfare. Because I'm not concerned for a certain group of people who in this particular incarnation called themselves Indians. But I'm concerned for every living entity in the whole universe, that they reestablish their lost connection with the Supreme Personality of Godhead. So in that very same place, very historical event took place, was Prabhupada's friends had met Srila Bhakti Siddhanta and were very impressed by him. So they wanted Abai's opinion, because they respected, he was a leader amongst his friends. So they wanted his opinion about this sadhu. But he said, I have seen so many sadhus. My father used to invite all these sadhus. They come and take prasad and go out and smoke bidis and do all kinds of things. He said, no, this one's different. I've seen them all. Anyway, against his will, he went there. His friends dragged him there, as Prabhupada describes it. And Bhaktisiddhanta was describing the importance of preaching the message of Bhagavad Gita. And Srila Prabhupada, just like anyone in India at that time, we couldn't imagine anyone disagreeing with him, said, we're a dominated country. Who will hear our words? Let us change, let us get our freedom, and then people will listen to us. And Bhaktisiddhanta very revolutionarily said, the message of Mahaprabhu is so important, it doesn't depend upon the change of some temporary political system. It is very, very urgent. Right now it needs to be done. And Prabhupada had never been defeated. So he was taken aback. And he had no response, but he realized he'd been defeated. And he realized that, then I realized that the message of Mahaprabhu is in a very wonderful hands. And he told Prabhupada, you're young, intelligent men, you should preach this message of Bhagavad Gita in the English-speaking world. And Prabhupada was shocked. He had never met this fellow, and already he's telling him to go and preach. But that seed was planted there in Ultadanga Road that changed the whole course of the world. So it is very, very wonderful and very, very historical that ISKCON has been able to liberate this place, and now we can develop it very nicely for the pleasure of all the Vaishnavas of the universe. Hare Krishna. Hare Krishna. So we thank His Grace Dinabandhu Prabhu. Now we are going to hear from Her Grace Devi Shakti Mataji. Hare Krishna. This is a most blessed event that will bring together all of the different organizations under the flag of Sri Chaitanya Mahaprabhu's Gaudiya Vaishnavism, because it is from this sacred spot at 1 Ultadanga Junction that Sri Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur, he began the preaching mission with the blessings of his spiritual master and his father, Srila Bhaktivinodde Thakur, from Mayapur, where he chanted for many years, trying to gain inspiration of which direction he should go after his two spiritual masters left this world. His first center was here at Ultadanga Junction. In this beautiful temple of Gandarika Girirhari, he stayed and oversaw the Gaudiya Math mission
in the name of Bhaktivinode ASAN. He began the Brihat Mridanga, the Nagar Sankirtan, and meeting of very great personalities there. And he also began the worldwide preaching of Krishna consciousness. From 1918 up until until the Bagh Bazar temple was ready, 1932, 1933, Srila Bhakti Siddhanta Saraswati stayed on the terrace of this room, of this house. And it was here in 1922 that Srila Prabhupada received the seed of Krishna consciousness to preach all over the world. His friend Narendranath Malak convinced him to come and see one sadhu. Though Srila Prabhupada was reluctant because he had seen many sadhus in the past and wasn't impressed, at the request of his friend, he went that evening in 1922. And because they were all Vaishnavas, they immediately, after coming onto the roof where Srila Bhakti Siddhanta Saraswati was sitting, they offered their dandavats. And before they even got up to sit, Srila Bhakti Siddhanta Saraswati said to them that you are educated young men, you should preach this message of Chaitanya Mahaprabhu all over the world. So that was the seed that was planted in Srila Prabhupada's heart. They spent about 2 hours there listening to Srila Bhakti Siddhanta Saraswati. And Srila Prabhupada at that time, he accepted his spiritual master within his heart, though it took until 1933 for him to take formal initiation. It was in this very place of Ultadanga, at the temple there, that Srila Prabhupada accepted his spiritual master. As Sri Chaitanya Mahaprabhu says in chapter 22 of the Madhya Lila, when he was instructing Sanatana Goswami about the process of devotional service, Sadhu Sang, Sarva Shastra Kai, Lavamatra Sadhu Sang, Sarva Siddhi Hoy. Without the moments, less than a moment, a lava is an 11th of a second. Just by that much association with the pure devotee, a sadhu, one can attain all perfection. And then Chaitanya Mahaprabhu, he goes on to say that without the dust of the Mahatmas on your head from their feet, one cannot attain spiritual perfection. So it just so happens that during this process of attaining the building, which was very old, it was constructed about 200 years ago, when they were reconstructing to preserve it, many people took part in this. From the chief minister, who nominated this building to be a place of heritage site, to the architects, to the advocates, to the tenants, to the hundreds of devotees who helped, to the leaders in Krishna consciousness to help to make this possible. Hundreds and hundreds of devotees and outsiders also were inspired to assist in making this a heritage site. Now coming together as an offering to Srila Bhakti Siddhanta Saraswati on his Vyasa Puja day, 100 years later, today, 2022, we're celebrating that moment when Srila Prabhupada was inspired to take up the mission of Sri Chaitanya Mahaprabhu on the inspiration of his spiritual master to preach Krishna consciousness all over the world. So we're very indebted to all of the devotees who have worked tirelessly since 2018, when the building was, after much drama, acquired, and then the tenants were removed. Finally, they had a very ecstatic kirtan entering into the empty building. Now, over these years, they've been reconstructing, and the whole theme is to preserve that legacy of Srila Bhakti Siddhanta Saraswati when he started this mission of Krishna consciousness, how it was spread by the mercy of our Srila Prabhupada all over the world. And now this will bring all of the Gaudiya Math, ISKCON, and all the members of Gaudiya Vaishnavism together at this place where the seed was planted of Krishna consciousness.
So we really thank Her Grace Devi Shakti Mataji. So now we are very much excited to announce that we are going to get His Holiness Bibi Bodhayan Swami Maharaj. Maharaj is live online and directly live he is going to address us on this auspicious occasion. His preaching mission. Number Ultadanga Junction Road. I remember a few years ago, I can't remember exact the day, exact the year, but that day, mercifully, Radhanath Swami Maharaj was not fully occupied. We just get up just near the building and look in that place. That day I was praying to Srila Prabhupada, please arrange the place as quick as possible under Gaudiya Vaishnava communities. Otherwise, we will lose our heritage. This is a heritage building.
I'm extremely happy that His Holiness Radhanath Maharaj managed to His Holiness Radhanath Maharaj managed to get the place for all of us. Srila Prabhupada Bhakti Siddhant Saraswati Goswami Thakur, actually I know that due to some reason, I don't know what, but follower, they are not using the titles in the name of Srila Prabhupada Bhakti Siddhant Thakur. But actually what he got in 1918, the title by all the Vaishnava scholars for his sannyas initiation. Society, they are not using. I saw them different and actually Saraswati Prabhupada. सपोर्ट नहीं कर रहे आप ऐसा क्यों? सपोर्ट नहीं कर रहे 19, they are in slave. And then he didn't join to his mission. He won. Also, I heard Siddhanta Madhava Goswami Maharaj, Bhakti Siddhanta Goswami Maharaj, everybody joined here. So, really,
Getting there. Very close to Srila. Therefore, we are meditating Srila Prabhupada with such prayer. From other personal they
Hare Krishna. So we're really grateful to His Holiness Bhakti both hands Swami Maharaj. So now we are going to be blessed by His Holiness Gopinath Swami Maharaj. अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाभया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्रीगुरवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर आविर्भाव तिथि महोत्सव की जय। His Divine Grace ISKCON Founder Acharya, His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada ki. Hare Krishna. So, what can I say? Such a exciting occasion, historical event, overwhelming. What is happening today, or it is a reminder of what happened 100 years ago. Hari Srila Prabhupada, well, Abhay Charan, they who was not even willing to go to this particular sadhu son, but Narendra Malik, he managed and brought Srila Prabhupada over to this one Ultadanga Junction road place of Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur. This place was quite a place. Was quite a place. After Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur had done Dasha Koti Nama Jap, 100 crore names of holy names he had chanted and undergone lots of austerities year after year after year in Mayapur. And now he's empowered and inspired to preach. So he comes to Kolkata and he selects this place, Ultadanga Junction Road, 1 in Ultadanga, and starts preaching. Place is also known, that time also it was known as Bhaktivinode ASAN, or seat of Bhaktivinode.
a forum provided by Bhaktivinode to propagate Krishna consciousness, preach Krishna consciousness. I think we have not only restored the building, but we also have restored the name. This place is also getting the name. We continue with the same name, Bhaktivinode ASAN. So then a great meeting between two great souls takes place on the rooftop of this building. We had been hearing about this building and what transpired on this building. Now that building is in ISKCON's possession. And this is ISKCON's building now. It's Prabhupada's building. And we are here to immortalize that event, that dialogue, that instruction given by Srila Bhakti Siddhant Saraswati Thakur to Srila Prabhupada. I would say, I think you would all agree, that Sri Krishna Chaitanya Mahaprabhu spoke through Srila Bhakti Siddhant Saraswati Thakur to then Abhay Charan Day. As if Bhakti Siddhant Saraswati Thakur was being dictated, oh here, more Senapati Bhakta, my Senapati Bhakta is here. He is the one designated and delegated by me to propagate Krishna consciousness all over the world. I'm the one who gave this instruction or predicted the holy name will reach every town and every village of this world. Who will get this done, or who will start this function? And that's the one. Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur, go ahead. As Abhay Charan had come and he had not been set properly. And there come, you preach Krishna consciousness, or whatever you said exactly, Bhagavad Dharma, propagate this in the Western world in English language. So that way, on that day, and at this place, Ultadanga place, ISKCON was conceived, conceived. And then there was a pregnant pause, or the pregnancy period lasted for 44 years, and those 44 years were used by Srila Prabhupada, lifetime preparation. He was preparing, he was shaping it up and preparing his strategy. And finally that ISKCON was delivered. What was conceived here at Ultadanga Road in Kolkata was delivered at 26 2nd Avenue in New York. And this way, ISKCON was, the seeds were planted here at Ultadanga Road, and the transplantation took place in New York, and from there all over the world. So this is where it all started. First time I went to New York in 78. The first place I visited in New York, was 26 2nd Avenue, the very first place I visited. So likewise, I think now that we have this place where it all began, 26 2nd Avenue wasn't exactly the original
This is where the origin is. This is where it all started. So this is going to be the must-visit place for all the preachers of Krishna consciousness. We should all be coming at least once in lifetime. Devotees should make sure they come to this Ultadanga road and get surcharged, inspired to take to preaching or rededicate to the preaching. I'm thinking today like that on the 100th anniversary, birth anniversary of ISKCON, I would say. That we are here and we are celebrating the opening of this place, Ultadanga Road. So devotees, now this way, and now, our ISKCON devotees, ISKCON Kolkata devotees must be thanked for this. They did a great job, especially Radha Raman Prabhu took the leadership under the leadership of Dayaram Prabhu and Anand Mohan assisting, and I think whole temple was behind this project. Building a new building is quite a challenge, but then to restore the old building to look exactly like it was 100 years ago, that's a challenge. And they have faced this challenge and they have met and succeeded and successfully restored this Ultadanga Junction Road place and made that into a memorial. And Mamata Banerjee's West Bengal government has officially accepted this as a heritage place. So all glories to all the devotees who were involved in acquiring this place and fighting out the litigations and fundraising and whatnot. I can't even imagine what they have gone through. So thank you, all the GBCs of Kolkata, and especially here also Radhanath Maharaj, also GBC. I understand how he had been inspiring the team there and assisting in so many ways, including financially and otherwise. Bhakti Charaswami Maharaj had provided lots of vision and input. We unfortunately, he is not here to see the opening of this place today, but I'm sure his soul is getting pleased and delighted on this occasion. And as I see Ambarish Prabhu in front of me, we were expecting that TiVo VP would be open in 2022. Maybe we have to wait, let this Ulta Junction Danga place be opened first, and then we go for TiVo VP Ki Jai. So that is our next project 2 years from now. So again, on this day, we could take a pledge to rededicate ourselves. Of course, this project is not fully completed. There's some more work to be done, but I think we are now a little more free to concentrate on TiVo VP
And for the pleasure of Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur, ISKCON founder Acharya Srila Prabhupada, and especially Lord Nityananda, the original spiritual master, we have to make that as a next target. Our devotee community all over the world should now get into marathon and focus on completion of TOVP project. Key, Joy. I think my time is up, so I would let Ambesh speak. Hare Krishna. So we are really blessed this evening by the presence of Hare Krishna, can you hear me? Huh? Hare Krishna? Okay, Hare Krishna. Jai Namaste Paraya Krishna Bhutale Srimati Bhakti Bharata Samhita Namaste Saraswati Evagravani Vijayane Nivasesa Nivadi Paschetara. Jai Srila Prabhupada, Jai Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur Ki Jai. Thank you very much for inviting me to say a couple of words on this very auspicious day. My congratulations to all the leaders and all the devotees in Calcutta for this wonderful realization of this project. And thank you, Lokanath Swami, for his plug for the TLVP. Calcutta is a gateway to Mayapur. So, we're very, very happy that Calcutta is being developed so nicely. And a couple of devotees, including Daiva Shakti Mataji, have mentioned heritage projects. And these projects are ISKCON heritage projects. Prabhupada's birthplace, Ultadanga Junction, etc., then the TLVP. So there's many, many, many heritage projects around India that are part of the ISKCON heritage. So I'm very, very personally happy to see this taking precedence and seeing these places restored and wonderful tirthas, Prabhupada tirthas that are maintained. And I think Basu Ghosh mentioned also there are so many places in the Western world. And of course, I'm completely committed right now to the TOVP. But once I get permission from Brajavilas Prabhu, I can turn some of my attention to 26 2nd Avenue, which I feel is a very important project. It was Srila Prabhupada's first outpost in the Western world. And we're all benefiting, all of us Westerners are benefiting from Srila Prabhupada's endeavor of coming to the United States and living in New York under very austere circumstances. So we're very, very much indebted to him and indebted to Bhakti Siddhanta on his appearance day for giving Srila Prabhupada this order to come to the Western countries. And where would we be without this order and without Srila Prabhupada's wonderful efforts on our behalf? So I'm very happy to see these projects being developed, Prabhupada's birthplace and this project, one Ultadanga Junction.
And we want to continue to keep this momentum going for the TOVP and also for other heritage projects around the world. So we want to preserve this for the next generation, so that they know the history of ISKCON and they're in touch with Srila Prabhupada. And so these projects are very important. So I thank all the devotees in Calcutta, Dayaram Prabhu, Radharaman Prabhu, and everybody else who has helped with this, moving this ball forward to preserve the history of ISKCON. So important. So thank you very much, and thank you for allowing me to say a few words. And Dhanavats and Vanchakalpa to all the leaders and all the devotees. Hare Krishna. Ambarish Prabhu ki jai, His Holiness Loknath Swami Guru Maharaj ki jai. Am I audible to both of you, three of you? This is Ananga Mohan speaking. My obeisances to all of you. Am I audible? No, Bulsan. Yes? Okay. Thank you, Ambarish Prabhu, and thank you, Guru Maharaj, and thank you very much, His Holiness Srila Loknath Swami Guru Maharaj. It was such a great blessing to get your darshan and your blessings. And today we are also so blessed to have Ambarish Prabhu's live darshan on this auspicious occasion of 148th Vyas Puja celebration of Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur Prabhupada Mahashaya at the very place of Ultadanga Junction Road. And we are eagerly waiting to receive you here when you all come here and speak His glories here at this very spot. Thank you very much. We want to welcome His Holiness Sri Radhanath Swami Guru Maharaj, and we want to hear from you. It was all of your inspiration that whatever is happening here today. I know all of you are here and blessing all of us, because all of your love and care and affection and encouragement, these things are happening. Thank you so much for blessing all of us. May I request His Holiness Radhanath Swami Maharaj to bless us with his. Thank you very much for all of your blessings and kindness upon all of us. Calcutta Yatra and all Bengal devotees are so blessed today to hear from all of you. Thank you so much. Over to Srila Radhanath Swami Maharaj. Nama Om Vishnupadaya Krishna Prishtaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swami Iti Namine Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharine
Nirvishesha Shunyavadi Pasyatyadesh Nama Om Vishnupadaya Krishna Prishtaya Bhutale Srimate Bhakti Siddhanta Saraswati Iti Namine Srivarshamavi Devi Dayataya Kripabdaye Krishna Sambandha Vikyana Dayaye Prabhave Namaha Madhuryo Ujjvala Premadya Sri Rupanuga Bhaktida Sri Gaura Karuna Shakti Vigrahaya Namostete Namaste Gauravani Sri Murtaye Dinatharine Rupanuga Virudhapa Siddhanta Panta Harine Namo Gaura Kishoraya Sakshad Vairagya Murtaye Vipralambara Sambodhe Padambo Jayate Namaha Namo Bhakti Vinodaya Satchidananda Namane Gaura Shakti Swarupaya Rupanuga Varayate Gaura Virubhavamume Swam Nirdesta Sajjanapriya Vaishnava Sarvabhauma Sri Jagannatayate Namaha Vanshakalpa Tarubhyascha Kripa Sindhubhya Evacha Patithanam Bhavanibhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. I am very grateful for this opportunity to be with all of you on this very special occasion. We are celebrating the appearance day of Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Prabhupada. Srila Bhaktivinode Thakur, while he was living in Jagannath Puri, he was observing the supreme glory of the mission of Lord Sri Chaitanya Mahaprabhu and Nityananda Prabhu, and how the mercy of Lord Chaitanya was the most critical need for the entire world, and how little attention the world was paying to the mercy of Sri Chaitanya Mahaprabhu. And even in India, with the widespread propaganda of Mayavad, Smartism, Sahajiism, the mission of Lord Chaitanya Mahaprabhu was so much misunderstood. Bhaktivinode Thakur, he had such a profound universal vision of spreading this movement. It was the vision of Lord Chaitanya and Lord Nityananda, that in every town and every village throughout this world, the holy names of Krishna will be chanted. Harinam Sankirtan. And it was there in Puri that Bhaktivinode Thakur prayed to Sri Chaitanya Mahaprabhu, who was Radha Krishna. Please send one of your confidential, empowered associates to help with this mission. In the year of 1874, in the holy place of Puri, his prayer was fulfilled. On this day, when his son was born, he was named Bimala Prasad, and later Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Prabhupada.
born in Jagannath Puri, the place of Sri Chaitanya Mahaprabhu's residence, the place where Sri Chaitanya Mahaprabhu spent most of the last 24 years of his pastimes, and the place where Lord Chaitanya Mahaprabhu departed from this mortal world, Jagannath Puri. Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur took the mission and the message of Bhaktivinoda Thakur as his life and soul. And there is much that has been described by the very esteemed speakers who have already made their offerings today. But Srila Bhaktivinoda Thakur, in his closing instructions to Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Prabhupada, was to take the message of Lord Chaitanya to the whole world and to develop Mayapur Dham. These were two of his very, very special instructions. Sri Chaitanya Mahaprabhu was born in Mayapur, and he spent his last years in Puri. Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur was born in Puri and came to Mayapur to fulfill the mission of his father. There in Mayapur for many years, as has been described, he vowed to chant 1 billion names of Krishna and Sri Radha, and for many years he chanted day and night. His inspiration to develop Mayapur and to spread the message of Lord Chaitanya throughout the world, he came to Kolkata. This was in 1980. And at that time, there was only a few followers. They really didn't have much money. They didn't have hardly any influence. But they rented a building, the historic 1 Ultadanga Junction. And in 1918, when Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur Prabhupada moved into this building with a few of his followers, he named it the BHAKTIVINODE ASAN, the sitting place of Bhaktivinoda Thakur, the place where he would fulfill the vision of Thakur Bhaktivinoda, which was the pure vision of Lord Chaitanya and Lord Nityananda and the 6 Goswamis. While there, he developed preaching. In that little rented building, he established a printing press. He called it the Brihat Mridanga, the big Mridanga. He proclaimed that Sankirtan can be heard for a couple blocks around, and of course the vibration spreads throughout the universe of the chanting of the holy names of the devotees. But through publishing books, the glorification of the holy names and glories and teachings of the Lord can spread throughout the entire world. There at Ultadanga Junction Road was the printing press
there was a daily newspaper. There was weekly newspapers, monthly newspapers. There was regular Harinam Sankirtan, and there was so much preaching. Preaching to the educated, preaching to the villagers, to everyone. And as His Holiness Srila Bodhayan Maharaj has so beautifully explained, we're so grateful you're here, Maharaj, for this event. He explained how most of the primary leaders of Bhakti Siddhanta Saraswati Prabhupad's followers, they first met him and joined the mission at Ultadanga Junction. A couple years later, after 1918, Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur Prabhupada named it the Gaudiya Math. That building became the Gaudiya Math, and from then all the extensions and expansions of all the projects were also known as Gaudiya Math. It was from Ultadanga Junction Road that Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur Prabhupada not only established 64 mutts in India, but with his bold vision, he sent devotees to London, to Germany, to Burma. He had this vision that Lord Chaitanya's mission spread throughout the world. As has been explained by so many of our revered speakers, 1922 was the year Srila Prabhupada, our beloved A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada, first met his guru on the rooftop of this place. I am just seeing the photos and the videos that Radharaman Prabhu and Ananga Mohan Prabhu are sending around. It's so special. First we see the front of the building, then we enter the door, and we go up the steps to the rooftop. When we enter upon the rooftop on the left side was the residence of Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Prabhupada. He lived in that kutir on the rooftop for 12 years. And on the rooftop itself, he would have his public meetings and give lectures. As has been so beautifully described, on a historic day in 1922, 100 years ago from now, Srila Prabhupada was walking down that same lane, Ultadanga Junction Road, along with his friend Narendra Malik. Recently, I was listening to a recording of Srila Prabhupada. There are so many times when he describes his coming to this building and meeting his guru. Dozens and dozens and dozens, perhaps hundreds of times in recording, Srila Prabhupada remembers this. And how on that little lane, his friend pulled him to meet this great sadhu. And now we can go to Kolkata, and in a very special, meditative, and intimate way,
we could literally be following in Srila Prabhupada's footsteps. Walking down the lane of Ultadanga, entering into the entrance of the Bhaktivinode ASAN. And our devotees, they, with so much love, devotion, and sacrifice, our beloved Sundar Gopal Prabhu and Ananda Mohan Prabhu and others, Radharaman Prabhu, Dairam Prabhu, they did research to get original photos, whatever are existing, and descriptions, and various letters and histories of that place. And they even commissioned a special architectural builders who restore things to the standards that are identical from ancient times and years ago. They really left no stone unturned to try to make this offering to all the Vaishnavas throughout the world as far as possible a replica of what it was in 1922. So yes, today we can follow Srila Prabhupada's footsteps and walk through the entrance and look to the left and look to the right, to a little courtyard, and where the deities were installed in a small temple room, and the rooms where the sannyasis and brahmacharis were living with their Guru Maharaj. And Srila Prabhupada, along with his friends, were welcomed when they came in the door. And just as when we come, hopefully we will also be welcomed. And then Srila Prabhupada walked up those same steps that we will walk up and onto the rooftop. And there he saw Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur Prabhupada sitting, speaking Sri Chaitanya Mahaprabhu's life and teachings. They approached. Srila Prabhupada bowed down along with Narendra. And that is where the great prophecy of the words of Srila Saraswati Prabhupada entered into Srila Prabhupada's heart. You are an educated young man. Why don't you bring the message of Lord Chaitanya to the whole world in the English language? Those words entered so deeply into our beloved Srila Prabhupada's heart. And he had such a beautiful discussion that he would love to describe throughout Srila Prabhupada's transcendental pastimes of his life. He loved to describe this discussion with his Guru Maharaj. At this particular time, we are under the subjugation of British. Let us get independence. Then the rest of the world will take the message of India seriously.
And Dinabandhu Prabhu described so beautifully how Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur had such a sense of urgency. That political powers, nationalistic political arrangements throughout the history of the world, they're always changing. But the one eternal truth is that we are not these bodies. We are the eternal souls. We are all eternally servants, part and parcel of Krishna. Birth, old age, disease, and death are coming for everyone. The crucial need that is forever within this world is to awaken Krishna consciousness. The only real problem in this world is we have forgotten our Krishna consciousness. And the only real solution is awakening it. It must be done now. Srila Prabhupada would love to say that I was defeated by my Guru Maharaj. Srila Prabhupada shared with us, it was at that moment, 100 years ago, in 1922, on that rooftop at Ultadanga Junction Road, where so many of our devotees are assembled today, where Srila Prabhupada, he said, I accepted him as my spiritual master. At that moment. And he accepted that instruction as his life mission. At the time, Srila Prabhupada, he was 25 years old. He was recently married. He had a son. He was working for the Bosch laboratories. He had a job. Everything was filled with responsibilities. But he oriented his whole life to eventually fulfill that instruction. And it was there at Ultadanga Junction Road that Srila Prabhupada would made so many friends among his beloved God brothers. And over the years would preach with them. On several occasions he met his Guru Maharaj again at Radhakund, at Prayag, where he was initiated. And in Mumbai, he wrote his last letter to Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Prabhupada. How can I serve you? And just approximately 2 weeks before the departure of Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Prabhupada from this world, he wrote back to our Srila Prabhupada the same instruction that was given almost 15 years before on the rooftop of Ultadanga Junction Road. Take the message of Lord Chaitanya Mahaprabhu and spread it in English language all over the world. It's so special. This neighborhood of Kolkata, within just a few minutes, is Srila Prabhupada's birthplace.
which just this year has begun to develop as part of ISKCON. It's the place where Srila Prabhupada first met his Guru Maharaj and where he received the seed for his life mission at ISKCON. It's also the place where Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur, just a few minutes from Ultadanga at Bagh Bazaar, where Saraswati Thakur Prabhupada chose to depart from this world. And not far away is the place where Bhaktivinode Thakur did his bhajan and where he departed from this world. The heritage, the flow stream of mercy of these most beloved acharyas of our Guru Parampara are all in this little area of Kolkata. And also the first temple, let us say, it is from Calcutta that Srila Prabhupada boarded the Jaltut. From his own birthplace, from the place he received the instruction in Calcutta, he boarded that cargo ship for New York City, where he established ISKCON in 26th Avenue. And when Srila Prabhupada returned to India with a group of devotees, the first temple he established was on Albert Road in Kolkata. And he installed the deities of Sri Radha Govinda, the same names of the deities that he worshipped when he was a child in Kolkata. We are overwhelmed with gratitude. It was the causeless mercy, the prayers, the sacrifice of all of these great souls we are discussing today that is our only qualification. Whatever we have spiritually, whatever we may have done, whoever we are, whatever hopes and plans we have for the future, it is all completely dependent on the mercy of what we have received. Our beloved Srila Prabhupada, when he was in Vrindavan at Sri Radha Damodar Temple, preparing himself, planning himself to fulfill the order of his Guru, he was reading from Vishwanath Chakravarti Thakur's commentary of the Bhagavad Gita. The particular verse, Vyavashayat Makabhutir Eki, that one who is on this path is resolute in purpose and their aim is one. And in the commentary it is stated, this means one must make the order of the spiritual master his life and soul. That instruction Srila Prabhupada received on the rooftop of Ultadanga Junction Road, Srila Prabhupada made it his life and his soul. With no money,
with absolutely no support and no one to help him, 43 years later, after he received that instruction, he boarded that cargo ship to Chalatuta. It was impossible. It was inconceivable. And our beloved Srila Prabhupada, as our founder Acharya, teaching by his instruction, so many times, with his limitless humility and love and gratitude, our Srila Prabhupada would say that my only qualification is I'm trying to carry out the order of my spiritual master. At other times he would say, my only qualification is I'm simply repeating the words of my Guru Maharaj. Srila Prabhupada would sometimes with tears of love, he would say to his disciples, I see that you are all the representatives of my Guru Maharaj to help me carry out his mission. When we study Srila Prabhupada's recordings, the most regular lectures he would give were on the appearance days and disappearance days of Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur Prabhupada. How much he wanted to impress upon us his love and his surrender to his Guru Maharaj. And following in his footsteps, in our own little small ways, to our greatest capacity possible, to follow in his footsteps by making our beloved Srila Prabhupada's instructions and his mission our life and soul. When we study Bhaktivinoda Thakur's instruction to Bhakti Siddhanta Saraswati, spread the holy name, spread Lord Chaitanya's teachings to the whole world, and develop Mayapur. And Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur gave such emphasis to Srila Prabhupada to print and distribute books. Srila Prabhupada's instructions to all of us are identical. Amrish Prabhu was here. Srila Prabhupada gave him and every single one of us for all generations of ISKCON the responsibility to develop Mayapur with the vision of the Temple of the Vedic Planetarium. And it's happening. With the inspiration of Vaisheshika Prabhu, Gopal Krishna Goswami Maharaj, Jaipatak Swami Maharaj, so many other great Vaishnavas, Bhakti Charu Swami Maharaj, we so much wish could be here with us today. We know he's smiling upon us. Calcutta is his birthplace. And he put so much of his heart and soul. And he was so grateful, so happy, and so enlivened that Ultadanga Junction Road and Prabhupada's birthplace were being realized.
But through all of these great souls, book distribution is ever increasing. Temples, ashrams, devotees. There are so many projects. And human nature is the more things expand, the more a spiritual project is successful, empowered, and spreads, the more personal opinions will naturally arise. Srila Prabhupada pleaded with us because at Ultadanga Junction Road, everything was so united. And Srila Prabhupada would quote, and Lokanath Maharaj and others have cited how Srila Prabhupada so much imbibed from his Guru Maharaj how much he wanted the unity to be preserved for the strength of the movement. So it is very important for us that we have this historic place where the Gaudiya Mata began, where Srila Prabhupada's ISKCON movement, the seed, began, where the two most empowered, glorious descendants of the spiritual world, the two Prabhupads, first met. We owe our lives to this meeting. Whoever we are, whatever we've done, we should feel totally humbled and dependent on the mercy of our Srila Prabhupada and the instruction we received from Srila Bhakti Siddhanta Saraswati. And I'm hoping, whether it's virtually or in our meditations or whenever possible physically, to now visit what is for the first time accessible to us. One Ultadanga Junction Road, the BHAKTIVINODE, where we could sit on that rooftop and whatever our thoughts, whatever our opinions, whatever our plans, whatever our goals, whatever our struggles, we put it in the context of Srila Prabhupada's receiving his instruction, his life and soul from his Guru Maharaj. Srila Prabhupada lived to fulfill that instruction. Every decision he made in his life was for the purpose of fulfillment of that instruction. This is our legacy. This is the gift Srila Prabhupada has given us. This is our life and soul. To remember the simplicity, the purity in which that instruction was given and received. People talk about going back to our roots. If the roots of a tree are healthy, then the tree is healthy.
If the whole tree looks really nice, but the roots are not healthy, then the tree is not sustainable. Yes, our roots are in Mayapur, where Sri Chaitanya and Nityananda Prabhu established the Sankirtan. And our roots are in Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Prabhupad's establishing the Gaudiya Math to fulfill Bhaktivinoda Thakur's vision. And our roots are so much on the rooftop on Ultadanga Junction Road, where Srila Prabhupada was given his life's mission. And Srila Prabhupada, on one disappearance day of Bhakti Siddhanta Saraswati Prabhupada, he pleaded with every one of us. He said, I am old. I may leave at any moment physically. He thanked us and pleaded with us to carry on the mission of his Guru Maharaj. Today, this wonderful inauguration on the appearance day of Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur on the 100th anniversary of Prabhupada receiving instruction here. Let it be an opportunity for each and every one of us, individually and collectively as a movement, to refocus our priorities. To give pleasure to Srila Prabhupada in this way. Let us, on this day, worship this whole place by offering our deepest gratitude to what we have received, and by reciprocating, by expressing our love, by assisting Srila Prabhupada in carrying out the order of his Guru Maharaj, of spreading the holy names of Krishna. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. When Srila Prabhupada glorified his Guru Maharaj, Saraswati Prabhupada, absolute is sentient thou hast proved, impersonal calamity thou hast removed. By spreading the personal realization of Krishna as the Supreme Personality of Godhead, and by spreading the true essence of love of God through the chanting of the holy names. I am so deeply grateful to the devotees in Kolkata who have practically for a full year been on a marathon, 24 hours a day, to complete this project as an offering to Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Prabhupada on his appearance day today. Dairam Prabhu, Ananga Mohan Prabhu, Radha Raman Prabhu, Chaitanya Balaram Prabhu, Sundar Gopal Prabhu, Acharya Radha Prabhu, and so many more. Please forgive me, because it's hard to say any name knowing that we're not saying so many others, but you all know in your hearts these devotees have given their lives
because they believe so strongly. How this project with Ultadanga Junction could infuse and unite devotees of ISKCON, of the Gaudiya lineage, on what is really and truly sacred in our lives. Yasya prasada bhagavat prasada yasya prasada nagati. To please our beloved spiritual masters. Thank you to all the devotees in Kolkata. Thank you for all devotees throughout the world for giving your hearts and your lives to assist Srila Prabhupada in what is his life and soul. Thank you very much. Hare Krishna. Hare Krishna. His Holiness Srila Radhanath Swami Guru Maharaj ki. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Maharaj, thank you Hare so Hare. much for your Hare Krishna. kind So blessings on this we are occasion. really blessed to hear Actually, from we His are all Holiness waiting for you Radhanath to Swami come here in Maharaj. Calcutta. And profoundly, And he all glorified the Srila Bhakti devotees, Siddhanta Saraswati Thakur. Is they very just mood got, for preaching the know, mission of Sri more Chaitanya Mahaprabhu desire to meet you and now Srila Prabhupada. after your lecture. The significance of this place, And we could Maharaj, see that how it was deeply Maharaj your felt for encouragement this, and your and how blessing deeply Maharaj and your love he expressed his that gratitude to the devotees again and acted again. as He was naming the devotees immense who are boost, involved, and with their like a tireless contagious dedication and love sincerity, of they brought this dream Krishna into consciousness reality that today. boosted all of us. The So whole Calcutta now Yatra is thankful I to may you all, request His Grace Ananga Mohan Prabhu to and come, we are and eagerly waiting for we your all would physical like to hear presence from Ananga Mohan Prabhu, when everything goes okay and you his desire to come. dedication, mission We will behind be this so wonderful happy to project. receive you here And in Prabhu is also going to make some Prabhupad special birthplace announcements. and Ultadanga Junction Road. The Also, local we people have are eagerly waiting to special receive address you and as blessings well. and glorification Today, the by result His of Grace this Radhe program Shyam was so Prabhu, much, and many of your god brothers and god sisters are and here His with us. Holiness They are Bhakti all Prasad blessing all Vishnu of Swami us. Maharaj, Acharya So, from Maharaj, Chetla thank you Gaudiya very Math. much for your So may I request encouragement and blessings. our We will technical team be to requesting you let us that we have only hear 5 and watch minutes, one those video videos now. message, audio message of His Holiness Srila Jayapataka Swami Guru Maharaj, and after that, it will be a great honor for all of us if Your Holiness can sing Kirtan and we do the final arati of Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur Prabhupada Mahashay in the terrace. Ananga Mohan Prabhu, I just want to thank you, and I miss you so much. I so much wish and pray I could be there, but I wish and pray that I will be there soon. Especially, one of my great dreams is sitting on that rooftop, honoring the wonderful prasad that you cook. I believe many are the exact recipes of Sachi Mata and Raghava Pandit and Damayanti would cook for Sri Chaitanya Mahaprabhu. In the honor of His Holiness Tamal Krishna Goswami Maharaj, we can be together. I'm wishing in my talk I should have spoken about him somehow. I planned to, but it just I beg forgiveness. But so much of that project is due to the mercy and blessings of Tamal Krishna Goswami Maharaj.
And actually, in my last talk with him, it was his desire that an educational institution be established in Calcutta. And after his graduation from Cambridge, he planned to actually base himself in Calcutta to be with all of you. And that's another very, very, very special, intimate feature of Calcutta. I wish I would have spoken during my talk. Somehow I'm spaced out. But thank you very much. As far as the kirtan, I sincerely feel that somebody there should lead the kirtan, because they could be in sync with the cartels in Mridanga, and it will be much better. And I'll attend, but it will be better if somebody who's there on the rooftop leads the kirtan. Yes, Maharaj. As you feel, and we will follow your instruction. And thank you so much, Maharaj, for your, what can I say? We are missing very much His Holiness Bhakti Swami Maharaj. He was very much behind us, as instructing and loving and encouraging for Ultadanga Junction Road. And by seeing all of you and your blessings, we are so much sheltered, and we are eagerly waiting for your physical presence. And thank you so much, Maharaj. We will also follow. We will ask some devotees who are here. Thank you so much, Maharaj. Thank you so much, Maharaj. His Holiness Srila Swami Guru Maharaj ki jai. And now we will be playing the audio message of His Holiness Srila Jayapataka Swami Guru Maharaj. I am speaking from Chennai, and I just like to express, and I just like to express my appreciation was for this Ultadanga Road project. We know that we know that this place is very important because our founder Acharya met Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur here for the first time. Although he was in the Gandhi's movement, Bhakti Siddhanta Thakur told him to preach Lord Chaitanya's message in the foreign countries, especially in those countries that they speak English. And this way,
In this way, Srila Bhakti Siddhanta Thakur, he gave the life mission to Srila Bhakti Vedanta Swami Prabhupada. In this place also, Bhakti Siddhanta Thakur had manifested the Vishwa Vaishnava Raj Sabha. The universal Vishwa Vaishnava in Lord Chaitanya. He is the Vishwa Vaishnava Raja. He re-established that following the 6 Goswamis. So this place has got many important aspects. And you heard from Hare Prabhu and others. I just like to thank the ISKCON Kolkata team, ISKCON Kolkata team, headed by Dayaram Das, for their work to get this place and preserve it. Yours in service, Jayapataka Swami. His Holiness Jayapataka Swami Maharaj ki jai. So we will be having the Kirtan, and as His Holiness Jayapataka Swami Maharaj has ordered us, so thank all our elders, DDCs, our spiritual masters, Vaishnavas and Vaishnavis for coming and making this festival a big celebration. Now we will be doing the Maharati of Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur Prabhupada Mahashaya. And thank you all for your wonderful support for doing this project so beautifully. There are a little bit programs are left, means some little 90% projects is done. There are certain other things are done and we need to finish it. Hopefully by the blessings of Vaishnavas, we will be finishing it very quickly. We personally thank all the devotees who have helped, all the centers, all Goshala team, and Motijhil team, and Guru Sadai team. They all came together for helping us, and they did a wonderful service for all of us for this divine project. We want to thank all Prabhupada disciples and all our spiritual uncles and spiritual aunties who came and blessed us. We want to thank ISKCON Juhu, ISKCON Chopati, ISKCON Shrimayapur Dham. By supporting this project, we want to thank all the media team. We want to thank all those devotees who have done so much service for all of us for making this divine project a big success. And we want all of your help for future as well. It was a phase 1 and phase 2. We are thinking that within this year we want to complete. We want to also thank our temple management team, COM. We want to thank the CDC, the Congregation Development Committee members,
All of them have helped all of us and they are always supporting. We want to thank Patita Pavan Prabhu also for arranging wonderful services and Vaishnav Sevas. We also want to thank all our elders who came and inspired all of us for making this festival so beautiful. And we really want all of you to come and take blessing of this place. Let us all try our level best to serve the mission of Srila Prabhupada. Thank you so much for all of your support and blessings. Now we will be doing the kirtan. Everybody can come and we can all have our love and affection and respect and reverence to Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur Prabhupada Mahasaya. Hare Krishna. 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 हाँ हरि बोल हरि बोल हरे कृष्ण श्री गुरु चरण पर श्री गुरु चरण पे गए ना अपने ये लगता है कि हाँ दिए श्री गुरु चरण पद्मा केवल भक्ति सत्मा श्री गुरु चरण पद्मा
केवल भक्ति सद्मा बंदमोई सावधान माते बंदमोई सावधान माते बंदमोई सावधान माते बंदमोई सावधान माते যাহার প্রসাদে ভাই এ ভবতরিয়া যায় हर प्रसादे भाई हे भवतरिया কৃষ্ণ প্রাপ্তি হয় যাহা হইতে कृष्ण प्राप्ति হয় যাহা হইতে কৃষ্ণ প্রাপ্তি হয় যাহা হইতে कृष्ण प्राप्ति হয় যাহা হইতে গুরু মুখ পদ্ম রাখিয়া চিত্তে করিয়া ঐক্য আর না করিহ মনে আশা আর না করিহ মনে আশা শ্রী গুরু চরণে অতি এসে উত্তম গতি যে প্রসাদে পুরে সর্ব আশা যে প্রসাদে পুরে সর্ব আশা পুরে সর্ব আশা চক্ষুদান দিল যে জন্মে জন্মে প্রভু সেই চক্ষুদান দিল প্রভু চক্ষুদান দিল যে জন্মে জন্মে প্রভু সেই চক্ষুদান দিল যে জন্মে জন্মে প্রভু দিব্যজ্ঞান হৃদয় প্রকাশিত প্রকাশিত দিব্যজ্ঞান হৃদয় প্রকাশিত দিব্যজ্ঞান হৃদয় প্রেম ভক্তি যাহা হইতে অবিদ্যা বিনাশ যাতে হইতে যাতে প্রেম ভক্তি যাহা হইতে অবিদ্যা বিনাশ যাতে বুধগায় যাহার চরিত বেদগায় যাহার চরিত বেদগায় যাহার চরিত বেদগায় যাহার চরিত শিবরু কোন সিদ্ধ ধর্মজনর বন্ধু করুণ সিন্ধু ধর্মজনর বন্ধু করুণ সিন্ধু ধর্মজনর বন্ধু গুরু করুণ সিন্ধু ধর্মজনর বন্ধু লোকনাথ লোকের জীবন শিলা প্রভুপাদ পতিত পাবন মহাপ্রভু কর দয়া
দেহ মোরে পদ ছায়া প্রভু কর দয়া দেহ মোরে পদ ছায়া প্রভু কর দয়া দেহ মোরে পদ ছায়া প্রভু কর দয়া দেহ মোরে পদ ছায়া এলে যায় দোষ প্রভু না Srila Prabhupada Patita Pavana Prabhupada Jai Prabhupada Jai Prabhupada Jai Jai Prabhupada Jai Jai Prabhupada Prabhupada Jai Prabhupada Namo Vishnu Padaya Krishna Prasthaya Bhutale Srimate Bhakti Siddhanta Saraswati Namine Hello Krishna Prasthaya Bhutale Prabhupada Bhakti Vedanta Swamiti Namine Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschapya Deshatarine Namaste Saraswati Everyone chant loudly Prabhupada Nirvishesha Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Srivasadi Deva Bhakta Vrinda Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Srivasadi Gaura Bhakta Vrinda Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Srivasadi Gaura Bhakta Vrinda Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Sadhu Gaura Bhakta Vrinda Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Srivasadi Bhakta Vrinda Chaitanya Prabhu Nityananda Gadadhara Srivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna Everyone chant and dance Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna
Krishna. Kirtan, Krishna Krishna Hare Hare. Hare Rama Hare Rama, Rama Rama Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare Hare. Hare Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare Hare. Hare Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare Hare. Hare Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna Krishna Hare Hare. Hare Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare Hare. Hare Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare Hare. Hare Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare Hare. Hare Ram 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 Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare Hare. Hare Ram Ram Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare Hare. Hare Ram Ram Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare Hare. Hare Ram Ram Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare Hare. Hare Ram Ram Hare Hare. Krishna Krishna Hare Hare. Hare Ram Ram Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare Hare. Hare Ram Ram Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare Hare. Hare Ram Ram Hare Hare. Hare Krishna Krishna Hare Hare. Hare Ram Ram Hare Hare. Hare Krishna Krishna Hare Hare. Hare Ram Hare Haraya Namah Krishna Yadavaya Namaha. Yadavaya Madhavaya Keshavaya Namaha. Namah Krishna Yadavaya Namaha. Madhavaya Keshavaya Namaha. Hari Haraya Namah Krishna Yadavaya Namaha. Yadavaya Madhavaya Keshavaya Namaha. Haraya Namah Krishna Yadavaya Namaha. Yadavaya Madhavaya Keshavaya Namaha. Gopal Govinda Ram Shri Madhusudan Giridhari Gopinath Madhamaha. Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Bol Hari Bol. Jai Jai Prabhupada, Prabhupada, Jai Prabhupada. Gopalaనంద Hari Hari Bol. Bhakti Siddhant Saraswati Thakur Goswami Maharaj Srila Prabhupada की समवेत गौर भक्तवृंद की His Divine Grace Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Goswami Maharaj Avirbhav Tithi Mahamahotsav की जय. One Ultadanga Junction Road Mahatirtha की जय. समवेत गौर भक्तवृंद की जय. Srila Prabhupada की जय.
Srila Premanande. Thank you very much for all of your help and coming here. Hare Krishna. So we want to हम हृदय से धन्यवाद देना चाहते हैं जितने भी भक्त लोग इधर आए हैं आप सबको। और हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि 15 मार्च से इस जगह को हम सबके लिए दर्शन करने के लिए आप लोग आ पाए उसका कोशिश कर रहे हैं। और हम चाहते हैं कि आप लोग भारी संख्या में इधर आए, लेकिन पहले से बता के आए क्योंकि जगह ताकि हम लोग आपका सेवा अच्छा से कर पाए। मैं हमारे जितने भी जीबीसीज हैं, हिज होलीनेस श्रील जयपताका स्वामी गुरु महाराज, हिज होलीनेस राधानाथ स्वामी गुरु महाराज, हिज होलीनेस भक्ति पुरुषोत्तम स्वामी महाराज, उन सबको हार्दिक रूप से धन्यवाद देना चाहते हैं उनके आशीर्वाद के लिए, उनकी कृपा के लिए। हम धन्यवाद देना चाहते हैं जितने भी प्रभुपाद के शिष्य एवं शिष्य महोदय गण इधर पधारे हैं उन सबको, अलग अलग क्षेत्र से आए हुए सारे भक्तों को भी हम धन्यवाद देना चाहते हैं। আমরা সবাইকে ধন্যবাদ দিতে চাই আমাদের ইসকন কলকাতা যাত্রার তরফ থেকে, কলকাতা মন্দিরের তরফ থেকে। এবং তৎসঙ্গে আমরা বিভিন্ন ভক্ত যারা মিডিয়া, মায়াপুর টিভি, দ্বিজরাজ প্রভু সাউন্ডের জন্য, অ্যানাউন্সমেন্টের জন্য, আমাদের পদ্মমুখ নিমাই প্রভু ওনাকে আমরা ধন্যবাদ দিতে চাই। তার সঙ্গে আমরা আচার্যতন প্রভুর পুরো টিমকে ধন্যবাদ দিতে চাই, যে আচার্যতন প্রভুর গোশালার পুরো টিমের সব ভক্তরা, they helped us a lot and this is a family program, so we want to thank them. We want to thank Vallabh Chaitanya Prabhu and his team of Motijil devotees who have helped us a wonderful experience for those who have taken prasad in the afternoon time, also who are taking prasad now. We want to thank also Srila Prabhupada birthplace devotees. We are going to meet there tomorrow. Also, we want to thank Guru Sadai team headed by Patita Pavan Prabhu. And on behalf of His Grace Dayaram Prabhu, our temple president, we want to thank each and every one of you who have come here. Many devotees have come from Dhanbad, Vijayawada, Haldia, then Vrindavan, Delhi, Mumbai, and so many other places. We want to thank them. You had a nice experience here. So let us all thank all of them, whoever has done a little bit also for the service of Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur. Thank you very much, and please take prasad and please adjust yourself a bit because time, space is a little constant, but we are very happy that it has been inaugurated in a very wonderful day. And if कहीं पर भी हम ऑर्गेनाइजर्स की तरफ से कोई भूल चूक हो गया है तो आप लोग माफ कीजिएगा। We seek your forgiveness in this big program. Sometimes small mistakes happens, big mistakes happens also. So we want to ask forgiveness from all of you, behalf of Calcutta Temple, Calcutta Yatra. हम आप सबसे क्षमा मांगते हैं अगर कहीं अनजाने में और जानने में हमसे आपसे आपके चरणों में अपराध हुआ है तो माफ कीजिएगा। And yes, we should thank also the neighbors because there were a lot of sound because of the construction. আমরা ওনাদেরকেও ধন্যবাদ দিতে চাই এবং ওনাদের অনেক সৌভাগ্য যে ভগবান এবং ভগবানের ভক্ত এখন ওনাদের প্রতিবেশী হয়ে গেছেন। হরে কৃষ্ণ। আবার তো আমরা এখন বৈষ্ণবদের চরণে সবাই মিলে প্রণাম করব এবং সবার কাছ থেকে আশীর্বাদ যাচনা করব। বাঞ্ছা কল্পতরুভ্যশ্চ কৃপা সিন্ধুভ্যেব চ পতিতানাং পাবনেভ্যো বৈষ্ণবেভ্যো নমো নমঃ। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की, वैष्णव ठाकुर की, श्रील प्रभुपाद की, श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद महाशय की, गो प्रमानंदे। Just one request that please be little attentive and careful that it took lot of energy to make this place.
So help this place to stay at ease as it is, and we should not harm it. You know, many ways of harming in India. Hare Krishna. So it is a spiritual place, and anybody wants to talk to me, many of you have wanted to talk to me in regard of support this project, they are most welcome. I am here only, you can come and meet me and I can tell you how you can serve. Go Pramanande. Thank you very much. Someone told you the story, you wouldn't believe it. He's starting an effort and it turns into an international movement. I want to begin one revolution against materialistic civilization so that the whole world may be happy. He said that he would like to go to America. I said, are you crazy? Old man, you are going to die. Suddenly this new force from the east was coming in. People began to look towards India. There was a sense in us that the ancients knew something. If I see this person, this soul, struggling just like I'm struggling in my body, then all of a sudden we're family. And I have a reason to love you. That's deep. Our mission is to see everyone become happy. It gave some sort of backbone to my life. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama. A 70-year-old devotee of Krishna went to America in a cargo ship in 1965, and after an enormous struggle, he established an institution with a handful of young Americans. With him, he started this International Society for Krishna Consciousness. Within the short span of 11 years, Srila Prabhupada not only spread this movement practically through all the countries of the world, but he established
108 temples in all the major cities of the world. And this is how we can see that in order to fulfill his prediction, Sri Chaitanya Mahaprabhu reserved the credit to one of his most intimate devotee, and that is His Divine Grace, A.C. Bhaktivedanta Swami. Holy name you gave for meditation. Your guidance was solid fortification. Easy to understand, clear presentation. Srila Prabhupada, Messiah of millennium. Srila Prabhupada, Messiah of millennium. We are not the body, we are eternal soul. Krishna is supreme Lord, our heart should be whole. You taught this lovely science in your books and Srila Prabhupada, Messiah of millennium. Srila Prabhupada, Messiah of millennium. You give to the belly the sanctified food. Sandesh kachoris were simply wonderful. As ISKCON bullets, you gave gulab jam. Srila Prabhupada, Messiah of millennium. Srila Prabhupada, Messiah of millennium. We wallow sorrows with uncontrolled mind. Your infinite forgiveness with heart so kind. Saving from the darkness the very mankind. Srila Prabhupada, Messiah of millennium. Srila Prabhupada, Messiah of millennium. Your message, you were so fearless. Hippies and the world were living life so hopeless. As a solution, you give Krishna consciousness. Srila Prabhupada, Messiah of millennium. Srila Prabhupada, Messiah of millennium. Drowning in the ocean of propensities to sin, addicted to the pleasures connected to the skin. Your mercy in the battle was bound to win. Srila Prabhupada, Messiah of millennium. Srila Prabhupada, Messiah of millennium.
just realize preaching is a sense. Quantity is the force to sustain and advance. Utility is the principle, makes so much sense. Srila Prabhupada, Messiah of Millennium. Srila Prabhupada, Messiah of Millennium. Yuge Shri Krishna Chaitanya Mahaprabhu and Lord Nityananda Supadrupa Merciful Vrindavan Puri and Sri Dhamayapur Srila Prabhupada, Messiah of Millennium. Srila Prabhupada, Messiah of Millennium. You distributed mercy to everyone. Karta, Mridanga, and harmonium. Destroying Kali Yuga, pandemonium. Srila Prabhupada, Messiah of Millennium. Srila Prabhupada, Messiah of Millennium. Thank you very much from the core of our hearts. Thank you very much, zillions of times. Thank you very much, Srila Prabhupada, Messiah of Millennium. 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 Messiah of Millennium. Messiah of Millennium. Messiah of Millennium. God.
Bhagavatam, there are 12 cantos. In the 10th canto, the appearance of Krishna and his activities are mentioned in the 10th canto. And before Lord Krishna's activities and life is mentioned, there are 9 cantos. So why? Dasame dasamam laksham asitasraya vigraham. Now, to understand Krishna, we have to understand what is this creation, how this creation is going on, what are the activities, what are spiritual knowledge, what is philosophy, what is renunciation, what is liberation. All these things we have to learn very nicely. After learning this perfectly, then you can understand Krishna. Jaya Prabhupada, 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 Jaya Prabhupada. दीजिए सद्बुद्धि करने को वैष्णव सेवा मार्ग दिया जो भक्ति का धन्य हुई मानवता जय प्रभुपाद 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 जय आप चले पाश्चात्य देश फैलाने कृष्ण चेतना भ्रमण किया दुनिया का दी सबको प्रेरणा ऐसी तपस्या ऐसा वैराग्य देखा ना कभी ना ही सुना अपनी परवाह ना करते हुए गुरु की आज्ञा को ही चुना जय प्रभुपाद 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 जय देके हमें
भगवत गीता यथारूप का ज्ञान हे गुरुदेव किया हम पे बहुत बड़ा एहसान। भक्ति पथ लगता था जो मुश्किल आपकी कृपा से हुआ आसान। ढूंढने पर भी ना मिलते हैं ऐसे गुरु को मेरा प्रणाम। जय प्रभुपाद 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 जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। जय प्रभुपाद जय श्रीला प्रभुपाद जय प्रभुपाद जय श्रीला प्रभुपाद
जय प्रभुपाद जय श्रीला प्रभुपाद जय प्रभुपाद जय श्रीला प्रभुपाद जगत गुरु जय श्रीला प्रभुपाद जगत गुरु जय श्रीला प्रभुपाद जय प्रभुपाद 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 जय श्रीला प्रभुपाद ज्ञान की गंगा को बहाया तुमने कृष्णा की भक्ति को जगाया तुमने ज्ञान की गंगा को बहाया तुमने कृष्णा की भक्ति को जगाया तुमने आपकी महिमा को करे सब यार आपकी महिमा को करे सब यार जय प्रभुपाद जय श्रीला प्रभुपाद 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 वचन गुरु के निभाने के लिए उठा लिया बीड़ा तुमने जाने के लिए वचन गुरु के निभाने के लिए उठा लिया बीड़ा तुमने जाने के लिए बांट दिया तुमने कृष्णा नाम का प्रसाद बांट दिया तुमने कृष्णा नाम का प्रसाद जय प्रभुपाद जय श्रीला प्रभुपाद जय प्रभुपाद जय श्रीला You founded the Hare Krishna movement some 7 years ago in 1967, did you not? Yes. In a capsule, what is the movement? Movement is to awaken God consciousness of the human being. The human being is distinguished from the animals, that the animals cannot understand what is God. Mm-hmm. And if the human being also does not understand what is God, then he is animal. I see. And so your movement is to bring about an understanding of God among human beings. Yes. And Hare Krishna means what? Hare Krishna means addressing the energy of God. Hare means the energy of God, and Krishna means God. Mm-hmm. Okay, you were here yesterday and to attend your annual festival that was held here in Golden Gate Park, and we were there too. And in fact, here it is. A few thousand people came out to hear it. How many people are now disciples of the Krishna consciousness movement?
dedicated life, about 10,000. About 10,000 dedicated in the ones. Western world. Your Grace, is there any significance at all in the shaved head? Why are heads shaved? We keep ourselves very clean, that's all. Oh, it's just a cleanliness thing? Yes. Is there any significance in the color of the robes? At least at the present moment, people think that by keeping long hair, it becomes very beautiful. I see. Yes. So we are against that. Just as simple as that. Is there any significance in the yellow robes? Yellow robe is the dress, those who are dedicated. It could very well have been a blue robe. It's just something that was arrived at. This saffron. Your Grace, why do you feel that so many people are pulling away from the traditional religions in this country, such as Christianity and so forth, and going for the trying to understand the Eastern religions? We hear a lot of swamis and gurus and other type of yogi and so forth. Why do you feel that people are pulling away from the traditional Christian standards here? But we see that the Christian churches, especially I've seen in London, mostly closed. People are not interested, or the Christian leaders, they cannot make them interested. Why? Did Christianity fail the people, which is why they're turning to other things? Or? I think so. You say that Hare Krishna consciousness pretty much takes the absolute truths from the Bible, the Quran, the Torah, and the Vedic. Yeah, everywhere. Everywhere. Religion means to understand God. I understand, but do you feel that in getting truths from various places like the Bible and the Quran and so forth, don't you run into conflicts at all or contradictions in those particular philosophies? No, I don't find any conflict because the ultimate goal is God. So you have to understand God and try to love Him. So you can go through any religious process. If the goal is attained, that you understand what is goal, and you try to love Him, then your life is perfect. Why do we see so many of your followers chanting almost all the time? Chanting means to keep association with God always. So you have to audibly chant Hare Krishna? Yes. This is transcendental vibration. Just like a radio message, if you keep contact with the radio message, then you know everything what is going on outside. Similarly, this transcendental sound, Hare Krishna, if you chant, then you keep connection with God directly. Thank you very much, Your Divine Grace. It's been our privilege to talk with you and to meet you. Thank you. And hope that we can see you again when you return. Hare Krishna. No personal qualification, but I simply tried to satisfy my need. My Guru Maharaj asked me that if you get some money to print books, therefore I am stressing on this point. Where is book? Where is book? Where is book? So kindly help me. This is my request. It is simply awake. This spiritual consciousness, Krishna consciousness, is already there in everybody. Otherwise, how these European, American, other foreign country boys and girls they are taking? It is already there. Simply it has to be awake by this transcendental vibration. The transcendental vibration, just like you are chanting, this is what vibration.
And these groups are bigger than this is when they chant Hare Krishna mantra, a few words, people can hear there is Hare Krishna. But my Guru Maharaj used to say that this is Brihat Mridanga, Mridanga, that drum you sing. That is small Mridanga. If I beat on this drum, maybe a few words people can hear from few words. But this is, the groups are distributed. It can go from country to country, from continent to continent. Actually, this will happen. So our only appeal is that all good sailors, all publishers, they come forward and cooperate with us and distribute the transcendental literature. It is unique form. They'll find something sublime and will be very good. We have no means to advertise very much. But our advertisement is a Sankirtan movement. We go from city to city, street to street, to invoke the spiritual consciousness of man. There is already there.